wins this game so that we will know who is going to be qualifying for the final. Let's go towards Muzammil, who is out there with the two shot over, has that been taken? Goodness me, it's Usman who has taken absolute stunner. बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर मौजूद है अनवर अली और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कैच किया और बोल्ड कर दिया है यहाँ पर सोहेल खान ने. Apesh taken, what a start this is. Khwaja Naf is showing his class all over again. Big shot attempted by Asa Shafiq, and this time the ball has clearly landed outside the ground. What a start this is. Chance of a run out. It is a run out. This time it's the two stumps that have been uprooted. Thrashed on the offside. That should clearly go out of the ground. Yes, it does. He goes for the three in a row. That's going to be the hat trick of the maximums. Well, you just witnessed the highlights, the performance of both these semi-finalists. AO Hospitals and Umar Associates are going to be up against each other in the second semi-final, but before that, it all depends on what happens during the toss. We have got Muzammil out there with both the captains, and let's take you to the ground to see which team is going to be winning the toss. It's time for toss for second semi-final of Maple Leaf SG Patti 8 Corporate T20 Cup powered by Parkview City. I have two captains alongside with me, Umar Associates, Asa Shafiq, and AO Hospitals, Khalid Latif. We have alongside with us match referee Iftikhar Ahmed, and Khalid have the toss, have the coin. Heads is a call. It's tails. So Khalid has won the toss. Khalid, क्या करेंगे इस pitch पर? हम bowling करेंगे पहले. कोई खास वजह पिच को देखते हुए? असल में जिस तरह मॉइस्चर है और जिस तरह ऑस गिर रही है तो उसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे. गेंद गीली होगी सेकंड टाइम तो हम कोशिश करेंगे कि उसका फायदा उठाएं. कोई चेंजेस आपकी साइड में? हमारी टीम में सेम टीम में बस आमिर बरोही को लेकर आए हैं सलमान की जगह. विश यू बेस्ट ऑफ लक. असद, आपसे बात करेंगे. क्या आप भी बॉलिंग करते हैं इस पिच पर? नहीं, हमारा बैटिंग का प्लान था. तो बैटिंग मिल गई है, तो क्या टोटल सेट करने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, टोटल इस विकेट के हिसाब से और जिस तरह से ओस गिर रहा है ग्राउंड में और जो डायमेंशन है ग्राउंड की, हम कोशिश करेंगे कि अराउंड 150-160 करें, जो कि बड़ा अच्छा टोटल होगा डिफेंड करने के लिए. तो कोई चेंजेस करेंगे अपनी साइड में? नहीं, हमारी सेम टीम है जो पिछले मैच में खेली थी. चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक. सो AO Hospitals have won the toss and they have decided to bowl first. Thank you so much, Muzammil. As you saw on your TV screens, it was AO Hospitals captain Khalid Latif who won the toss, and he has decided to bowl first. Both the on-field umpires are making their way out there at the center. We saw first in the first semi-final, a target of 168 proved to be enough. And Ishal Associates couldn't chase that down. Imran Javed and senior Khalid Mahmood are going to be the on-field umpires officiating this second semi-final. And you can see AO Hospitals fielders are already making their way out there at the center. Amir Brohi is playing tonight. He started off this tournament wonderfully well, picking up a 4-for. His captain will be expecting him to pick up wickets early on. On the other hand, Umar Associates, who have been the unbeaten side in this tournament from Group A, won their first 3 games, will be depending on Khwaja Mohammad Nafi and their opening partner Ahmad Alam to provide them with a good start. Khwaja Mohammad Nafi has been the standout performer for the batting side throughout this tournament, and he'll be looking to live up to the expectations. I've been joined with Danish and he's alongside me in the commentary box. Welcome back, Danish. Thank you so much, Zishan Khalid. Here are both the squads: Ahmad Alam, Khwaja Nafi, Khurram Manzoor, Asad Shafiq, Danish Aziz, Azam Khan, Arish Ali Khan, Usman Tariq, Ashid Wazir, Sohail Khan and Anwar Ali make up Umar Associates 11. We talk about AO Hospitals, Khalid Latif, the skipper, Hanan Achak, Zakir Malik,
Mohammad Akhtar, Suhail Khan, the wicket-keeper, Mohammad Asad, Amir Birohi, who is playing tonight, Khuzaima bin Tanveer, left-arm spinner Afnan Khan, Arif Kumar and Lal Kumar. So on paper, AO Hospitals also is a pretty decent side, but they are up against Umar Associates, who have got so many star players in their playing 11. Dishan, you mentioned early on that 167 proved to be enough. It was more than enough due to Tareen Academy's discipline, both on the field and with the ball. We saw some exceptional performances. Junaid Awan managed to take a hat-trick. Ahmad Alam would be starting the proceedings for Umar Associates, who will be facing. And his partner at the other end, Khwaja Mohammad Nafi, how well he has performed so far. 2 half centuries, and he just missed out in the previous game. Got a good start, just couldn't carry on, but tonight, it's his opportunity. It's a big stage, and he'll be looking to make his presence felt. To all the former cricketers, must be glued to their TV screens. Amir Birohi, on the other hand, will take the new ball for AO Hospitals. Khalid Mahmood, the senior on-field umpire, says it's play. So we are all set for the first ball in this second semi-final. Amir Birohi up against Ahmad Alam. Already some shape here for the fast bowler. Ball just moving away from the right-hander after pitching. Amir Birohi has done this successfully throughout the tournament, pitching the ball right outside the off stump and moving it away from the batter, inviting him to play a cover drive, and hoping to get an error out of him. Ahmad Alam has looked really good, but hasn't been able to capitalize on the starts that he got. It's an opportunity for him as well to showcase his talent. Playing it away from his body, guiding it past that fielder and back for the point, running the first one hard. Mohammad Akhtar down there at third man, doing the finishing job. So the first one's already on the board for Umar Associates. Decent start this from Amir Birohi. He has taken a fielder at deep third man and a fielder at deep fine leg. Getting into the semi-final, Omar Associates are definitely the favourites. So were Tareen Academy. So both the teams which are being considered underdogs decided to bowl first. Once again playing it past that fielder at back for a point. It just took one delivery for Khwaja Mohammad Nafi to get up the mark with. Yes, Khalid Latif was specifically mentioning about the dew factor. He thought that chasing will be easy, since it becomes a little difficult for the bowlers to grip the ball in the second innings. At this time of the night, both innings will have similar conditions to play in. So there's an activity happening there from Parkview City. This tournament is powered by Parkview. Outside edge it is! What a start this on Amir Birohi. A wonderful delivery to get rid of Ahmad Alam. This is exactly the start Khalid Latif was looking for, and Amir Birohi has just picked up the huge wicket in his very first over. That was a proper ripper! Pitched right on the middle stump, leaving Ahmad Alam. That would have troubled any batter in the world. What a beautiful delivery that was. Well, the umpires are asking Ahmad Alam to stay because they might check the front foot. That was, you were right, Danish, that was a peach of a ball. Just pitching and swinging ever so late. And it's a pretty legitimate delivery. What a start he has provided yet again, Amir Birohi. He's a specialist in picking up wickets in the very first over, and he has done exactly that. Ahmad Alam had absolutely no answer to that ball, walking back after scoring just 1 run tonight. It's 2 for 1. Successful start to this bowling spell for Amir Birohi, answering the call of his captain, taking a valuable wicket early on. A similar start to the second semi-final. If you compare it to the first one, Tareen Academy also lost a wicket early on. Yeah, we were a little concerned about the middle order of Tareen Academy, but they lived up to the reputation. Waqar scoring a brilliant half century. Khurram Manzoor out there much earlier than he anticipated. Coming into bat at number 3, facing Amir Birohi now. Ishan Waqar showed so much maturity in the first match.
Tareen Academy kept losing wickets from one end. Waqar stayed there. Talking about Ahmad Alam, his left foot just got stuck. It was an open stance. I think he was looking to work it away on the onside, but got beaten by the movement. A wonderful delivery once again. On the other hand, Khurram Manzoor just showing his class, just showing his experience. It was a very similar delivery that got rid of Ahmad Alam, but Khurram Manzoor just letting that ball go straight to the wicket keeper. As a young batter, you tend to think a bit too much. You get double-minded when the ball is being delivered. Khurram Manzoor has seen it all. I'm sure he must have faced so many pacers, quality pacers in international cricket. Khurram Manzoor playing on the onside. Single taken to get off the mark with, but a very good start this has been for Omar. Omar got a little too greedy there. Wanted to start from the leg stump and wanted to get that shape. That didn't happen. After one, it's 3 for 1. Second semi-final. Tareen Academy final. Well, talking about Tareen Academy, this has been a complete package from them. We saw last night Nabi Gul getting a century, Amir Azmat scoring the fastest half century, and tonight Junaid Awan picking up a hat-trick. We were in discussion with Ali Tareen, and he very clearly mentioned that we don't have a bench. All of our players are valuable players, and they can play at any time in any game, and that's how it should be. There should be no replacements. Yeah, even the batters who didn't get the opportunity to bat for Tareen Academy, but they surely did the job during the fielding. We saw some excellent fielding effort from them, some very good catch being taken. Khuzaima bin Tanveer, meanwhile, has been given the ball. He's going to bowl the second over from the squash court end. And he has been really good as well for AO Hospitals. Ishan, what Tareen Academy proved today is they don't need to be leading from the front. They can even play well under pressure. They were put in a lot of pressure today by Ishal Associates. They still managed to pull through. Khuzaima has been exceptional for AO Hospitals. Such a talent. Playing it fine straight to Khalid Latif at first slip. That was a risky shot. It was too close to his body. The ball just pitched and slightly moved in to the right-hander. Families have already started getting in. Fill this wonderful stadium to witness the second semi-final. Kudos to Khalid Latif for having himself in the slip region. It's all about applying the right pressure, looking for wickets early on. Some young fans as well. Knocked him over! Inside edge! Dropped it on Khurram Manzoor, and what a start this is turning out to be. Both the new ball bowlers have now picked up a wicket each, and it's the experienced Khurram Manzoor who will have to walk back. How beautifully did Khuzaima bowl that one, just pitching outside off, bringing it in this time round. Khurram Manzoor did not have the room to slash at that ball. All he could do was inside edge it onto the stumps. Game this, Khurram Manzoor also walking back after just scoring one. It's 3 for 2. This is an interesting scenario for Khwaja Nafe, because we've seen him be explosive, we've seen him take charge. Now, what does he do in a situation like this? Does he play his natural game, having lost 2 wickets from the other end? His team has just scored 3 runs. Or does he look to stay there? Does he look to show responsibility and maturity and play all the way through? That's what I would want from him today. Yeah, very well said, Danish. Will he go out of the box? Will he play against his natural game, or will he continue with his scoring shots? Asad Shafiq, meanwhile, the captain of Omar Associates, out at number 4. Khuzaima bin Tanveer might have came wider of the crease there and brought the ball back in. There you see. And it was too close to cut there for Khurram Manzoor. Got an inside edge and the ball rolling onto his stumps. Good ball.
Some serious pace and bounce here for Khuzaima. Asad Shafiq straight away looking at the pitch. How easily could he have nicked that one? He went for it. This time Khuzaima just taking it out away from Asad Shafiq. I couldn't have asked for a better batting partner than Asad Shafiq. Speaking of the partnership there with Nafi. Yeah, right man for the right job. Asad Shafiq will be guiding Khwaja Mohammad Nafi all the way along. Hitting it with a much straighter bat. Asad Shafiq hitting it straight to the bowler. This is an opportunity for Khwaja Mohammad Nafi to learn. He has seen 2 wickets going down at the other end. Usually they have got up to a very good start in this tournament, Umar Associates, but it's a different story altogether. Wickets down, it's a semi-final, pressure cooker game. It is a make or break situation now for Khwaja Mohammad Nafi. Will he give his wicket away or will he stand out? On the other hand, I'm loving this energy from AO Hospitals. They're so chirpy right now. Driving it on the up, finding the gap on the offside. Afnan Khan is after it. He does a good job, but Asad Shafiq gets off the mark with a couple. Speaking of AO Hospital's body language, Khalid Latif is driving his lads. And of course, 2 wickets early on have definitely pumped them up. Brilliant effort there by Afnan. Good covering as well. It's a pretty similar start to what we saw in the first semi-final. Even Tareen Academy lost 2 wickets early, but then there was a partnership which brought them back. And they need a partnership now, Omar Associates. And once again, that ball was tailing in. It moved in the air and off the pitch as well. And Asad Shafiq was looking for that. Another expensive drive outside the off stump. A third ball to end the over with. A successful over comes to an end. After 2, it's 5 for 2. Mr. Nadeem Umar, even though he has seen it all, been through every experience one can, he is still under pressure. Another individual who absolutely loves this game and believes in promoting youngsters. And you can see that in this Umar Associates squad. Amir Barohi continuing with his second over. Right down the leg side. Glanced fine. That's going to go all the way for 4. A little offline this time for Amir Barohi. Yes, you were right. He was getting a little greedy. Might have been looking to swing the ball away after pitching out length stump. The ball just held its line and Khwaja Mohammad Nafi too good for that. He was trying to bring it in with his arm, kind of deviated as far as the line is concerned, but he did get the movement towards the very end. That's what got the connection for Nafi. It's a good thing that he got an easy ball to hit a boundary on Khwaja Mohammad Nafi. That will calm his nerves down. Both these bases getting a lot of swing. We saw that last delivery from Khuzaima. It was very Waqar Yunus-ish. Once again, it's going to be a wide down the leg side. Well, fast bowlers have bowled really well tonight. We saw Arshad Iqbal bowling really well for Ishal Associates. He picked up 3 wickets. He was the pick of the bowlers for Umar Akmal's side. Unfortunately, the batters couldn't live up to their expectations. 3 big names going without troubling the scorers, that too in a semi-final. It always creates pressure on the other batters. Good ball and nicely played. One thing is for sure, Khwaja Nafi will take his time. He knows Umar Associates cannot afford to lose another wicket here. And Nafi can afford to do that right now because he is equally explosive against the spinners. So when you know you have your A game on against spinners, you can take your time. You can play off these pacers who are bowling really well right now, getting a lot of movement as well. Just do not give away your wicket. Charging down the track. Just couldn't time it, hitting it straight to it off. But he needs to be a little cautious here, Khwaja Nafi. He cannot gift his wicket away.
Something that we saw so much from Vishal Associates batters. Instantly there, Asad Shafiq approaching Khwaja Nafi and just having a word with the youngster, calming him down. Nothing to worry about. Just stay there, just play your game. That's the best possible thing, to have your captain at the other end. So much experience. Guiding it towards third man, again running the first one hard. But Akhtar just keeping it down to a single. This is beautiful bowling by Amir Bro. He bowled the first three deliveries which were shaping out away from Khwaja Nafi. This one was brought in sort of similar to the delivery that got Khurram Manzoor. So they're mixing it up brilliantly here. Well, they know they have got a good start. They cannot afford to slip it away. Once again a good ball, a sharp run. And Amir just couldn't get down to gather that ball. Amir Bro bowling at a good pace as well. It's rushing Asad Shafiq as well. Although he is someone who sees the ball very early. Yeah, one thing to like about Asad Shafiq is that he plays the ball so late. He lets the ball do whatever it wants to do, whichever direction the ball wants to sink, and then he gets his bat down. Once again a good comeback this from Amir after being struck for a boundary in the very first ball. The dugout looks pretty happy so far of AO Hospitals. Good ball, nicely negotiated. A dot ball to end the over with. After 3, it's 12 for 2. This is what these teams are playing for. The trophy for the champion and the runner-up. And not just the trophy, Danish, the cash prize for the winning team. But of course. And not just the team, even the players, the individual performers are going to be rewarded after the end of the final tomorrow night. It's going to be a hard decision to decide who is going to be the player of the tournament. We have seen some outstanding performances. Yep, we've seen some special ones. Talk about that innings yesterday from Amir Azmat, 50 of 14 deliveries. Nabi Gul scoring the first run of the tournament. Playing it late, playing it past the fielder at third man. Lal Kumar is going to tidy up the job. A couple taken by the captain, Asad Shafiq. Yeah, we haven't talked about Shehzad, the opener of 13 Academy. He has been getting runs throughout the tournament, and he has been bowling really well as well. He looks a young, bright prospect. Even Khwaja Nafi has quite a few runs to his name, scoring a couple of 50s and one score of 30 odd. He's been really good. Just look at those eyes. He's focusing on every ball there, Asad Shafiq. Well, he was surprised by that shorter delivery there by Khuzaima. It was short. He was looking to pull it away on the onside. The ball just hitting the bottom part of the bat. Took his eyes away towards the end. Had no idea where it was going. Khuzaima looks so impressive once again. Putting pressure on Asad Shafiq there. Pushing him back. He has a tendency of playing his strokes on the front foot. It's a pretty unusual situation for Asad Shafiq as well, because previously he has been coming into bat at number 5 or number 6 during the middle stages of the innings, but tonight he's come on very early than he anticipated, and it's the batting power play. Will he be able to utilize it? Once again a fuller delivery, a big appeal, but I don't think there was any bat involved. The bat might have hit the turf when it was close to the ball. Anybody can. It's Asad Shafiq. He has so much experience, having played for Pakistan in all formats, and he's done it all at every position you can think of. Let's not forget Azam Khan has had a pretty cold tournament so far.
he would be looking to electrify the proceedings today. The majority of the crowd have definitely come to watch him bat. Pulled away on the onside. Finds the gap. Finds the boundary as a Shafiq. But the fielder was there at square leg and he dived all over it. Just couldn't stop that ball. A foot closer and that would have been curtains for Asad Shafiq. But he got a good connection there. Managed to time it pretty decently. It fell just short of him. Got a bad bounce, couldn't stop it either. Once again, Khuzaimah trying that shorter pitch delivery. This time the ball doesn't bounce as much as he wanted it to. And Asad Shafiq just timing it well enough to earn himself a boundary. Slower one. What a ball that was from Khuzaimah. To deceive a batter of the quality of Asad Shafiq, there has to be some sort of delivery this. This is a confidence crusher. I mean, if you can bowl a ripper like that, it was a slow one, it gripped, got an extra bounce there. Khurram Manzoor looks dejected, sets high standards for himself, wants to score in every match. Yeah, he was slowly getting into his groove for Manzoor in this tournament. He missed out in the first game, got a good 40-odd runs in the second. That's how he lost his wicket. Just too close to cut. Getting an inside edge and the ball just hitting his off stump. Thrashing it on the offside. Blazed away towards cover. Another boundary for Asad Shafiq. A boundary to end the over with. 4 done. 22 for 2. Special stuff from Asad Shafiq there. I mean, you were just beaten all out on the previous delivery. The next one is pitched up and you thrash it through cover for a 4. Well, he knows his strength. He's going to go after everything outside the off stump at that length, especially with the fielding restrictions on. Pretty even-steven start this for both these sides. AO Hospitals have managed to pick up 2 wickets, and on the other hand, Omar Associates scoring at 5.5 runs an over. That's how he collected a boundary in the last ball of the previous over. Afnan Khan tried his level best. Look at how tall he is. Still the ball went past him. Amir Birohi is going to continue. He has been given one more over in this power play to utilize that movement to pick up another wicket if he can. Onkimova! Look at that sea movement, look at that celebration. Khwaja Mohammad Nafi unfortunately misses out. And AO Hospitals are all over Omar Associates so far. Losing the plot once again, Khwaja Mohammad Nafi. He saw the ball pitched up and he just couldn't help himself. He wanted to throw everything at it. The ball stayed a touch low, went under him and straight onto the stumps. This is brilliant bowling from Amir Birohi. Well, Khwaja Nafi missing out, scoring 6 runs tonight. It's 22 for 3. Omar Associates now in a spot of bother. However, look who's coming to join Asad Shafiq. Is none other than Danish Aziz. He was inducted into the team for the last match. Did really well with the bat, scored a 50. He would need another similar innings for his team today. Well, now they need experience. And what better batter than Danish Aziz coming into bat at number 5. But what a I start. agree with you there. That's how Nafi lost his wicket. Once again, just getting carried away. It was a straighter one. He was looking to blast that straight down the ground without moving his feet much. This is where he will learn.
These are the opportunities that will give them a chance of how to perform in the bigger stage. As I said, Zishan, he just couldn't help himself. He saw the ball pitched up and he just went for it, not realizing what the situation needed. All right, so can he bring the ball back in? Nicely driven in the very first ball. Zishan, do we need to stop appreciating these players? Because we are proving to be a proper curse. Well, they can afford a failure or two. They have been outstanding throughout the tournament, but that's what you need to understand. One good delivery can get you out, so you need to give value for your wicket. Shorter in length, pulled away. It's going to carry on no man's land. Zakir Malik was there at mid-on. The ball just bounced over his head. A quicker man there would have had a better chance. Zakir Malik isn't the quickest of them all. That was an error from Danish Aziz. Didn't get the connection. Had the idea right, it was short. He could have gone for it. Well, you can easily see the amount of pace with which Amir Barohi is bowling, because the ball hit the higher part of the bat there of Danish Aziz. Amir Barohi, on the other hand, will prefer bowling to the left-hander because he can bring the ball back into him. Once again hitting it on the legs, running the first one hard. Will he come back for the second one? Asad Shafiq wanted it, but Danish Aziz, rightly so, sending his partner back. Surely they do not want a run out at this stage. That would be suicidal. In fact, if Omar Associates lose another wicket here, they are going to be in serious trouble. They're already halfway there. But the crowd won't mind that, because if they lose another, Azam Khan will be out there to bat. Neither would AO Hospitals. Getting one of these two is going to be a big thing. Slightly wider outside the off stump. But it was a good decision from Khalid Latif to give an extra over to Amir Barohi in this batting power play, and he has answered the call of the captain by picking up that wicket of Khwaja Nafi. Amir Barohi is still getting some movement off the track and in the air as well. This is good stuff by Amir Barohi, bowling so well. I think he's the only bowler, Amir Barohi, who has the best seam position while he is delivering the ball. That seam is so upright, and that is so important when you are looking to swing the ball in the air. Driving it on the offside once again, couldn't find the gap. A successful over comes to an end from Amir. After 5, it's 24 for 3. The top order failing tonight for Umar Associates. Ahmad Alam was the first to go, got a magnificent of a ball from Amir Barohi. Khurram was the second batter to be dismissed, and he chopped onto the stumps, and we saw a straighter one being missed by Khwaja Mohammad Nafi. But the captain is out there, and Danish Aziz, the experienced Danish Aziz, has now joined him. And even Muzammil Asif has now joined me in the commentary box. Thank you so much, Zishan. And we are seeing Omar Associates in serious trouble here in batting power play. And Asad Shafiq, as you mentioned, Danish Aziz is experienced. So Asad Shafiq brings more experience than him. So he needs to take some responsibility here and score some handy runs for his team. Well, Asad Shafiq has done that in the first 2 games. He was unbeaten during the run chases. But it's a different story all over again. We are batting first in a knockout game in a semi-final. 1 over still remaining in the batting power play. We are now witnessing a bowling change. A leg spinner has been introduced. Starts off with a short delivery. Just couldn't thread the gap on the offside there, Asad. Crowd is filling in the stadium. They are watching international stars playing in front of their eyes.
और यहां पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की असद शफीक ने और फील्डर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है यहां पर बॉल पकड़ने के लिए। अच्छा थ्रो था यहां पर, 2 रन हासिल किए असद शफीक ने। जी हाँ, अब तक की दोनों ही गेंदें काफी पीछे गिराई हैं यहाँ पे। स्पिनर ने पहली गेंद को असद शफीक को ऑफ साइड पे खेलना चाह रहे थे, लेकिन गैप निकालने में नाकाम रहे। इस दफा उसी तरह की गेंद को मिड विकेट के ऊपर खेला और अफनान खान को काफी ग्राउंड कवर करना पड़ा और इसी तरह 2 रन हासिल किए। और यहाँ पर रूम बनाया, कट किया थर्ड मैन रीजन पे, शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर मौजूद थे यहाँ पर। एक रन हासिल किया यहाँ पर असद शफीक ने। बहुत आला यार, माशाल्लाह गाइस, माशाल्लाह यार, शाबाश। माय पार्डन, यहाँ कोई रन नहीं हुआ। एक बार फिर रूम बना के ऑफ साइड पे खेलना चाहते थे, लेकिन गैप तलाश करने में नाकाम रहे। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि बैटिंग पावर प्ले का आखिरी ओवर है तो बाउंड्री हासिल करें, लेकिन बदकिस्मत रहे हैं कि बॉल टाइम तो बेहतर की है, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथ में ही जा रही है। और यहाँ पर अपील करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर आउटसाइड लेग ये बॉल जा रहा था। और जहां आपने बात की जीशान के रन स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप देखें रिप्ले, आउटसाइड लेग बॉल जा रहा था, इसको फाइन लेग की जानिब खेलना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर मोहतात रहना पड़ेगा असद शफीक को बहुत ज्यादा। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, ऑफ साइड पे खेलने की कोशिश, डाइव लगा के यहाँ रोकना चाहे थे और काफी हद तक रोका भी, लेकिन सिंगल लेने में यहाँ पे कामयाब हुए हैं असद शफीक। तो सिर्फ 3 ही रन हासिल कर सके इस ओवर में वलीद के। 6 ओवर से इख्तिताम पे 27 पे 3 उमर एसोसिएट्स। और जीशान, उमर एसोसिएट्स की इस वक्त जो सिचुएशन है वो वैसी ही है। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान टीम भी इसी सिचुएशन से निकलकर मैच जीती है। लाहौर में पहला T20 आया न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वही सिचुएशन यहाँ पर उमर एसोसिएट्स की है। जल्दी विकेट्स गिर गए हैं और यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले भी एंड हो गया है। तो अब साइम अयूब और फखर जमान जैसा कोई नॉक खेलना पड़ेगा असद शफीक और दानिश अजीज को। जी हाँ, सही फरमाया। काफी अच्छी कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान ने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। हारिस रऊफ ने गालिबन 4 विकेट्स हासिल की और सिर्फ 94 रन पे ही ढेर कर दिया कीवीज को। बॉलिंग में की गई एक और तब्दीली, हनान अचकजई को लेकर आए हैं अब कप्तान खालिद लतीफ। और ये काफी इंपॉर्टेंट मरहला है इस सेमीफाइनल का, क्योंकि दोनों ही बैटर स्पिन को काफी अच्छा खेलते हैं और क्योंकि अब गैप्स ज्यादा होंगे, क्योंकि फील्डर्स बाउंड्री पे ज्यादा मौजूद हैं, तो कोशिश करेंगे कि स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल्स हासिल करें, पार्टनरशिप डेवलप करें और पार्टनरशिप की ही जरूरत है इस वक्त उमर एसोसिएट को। और सीधे बल्ले से खेला है कवर रीजन की जानिब। ये बॉल बॉलिंग एंड की कॉल है और अच्छे भाग कर आए, बॉल को कलेक्ट किया और गालिबन दानिश ने असद को रोका वहां पर। और यहाँ पर इन शायकीन क्रिकेट को जो VIP बॉक्स में मौजूद है उनको साइन बैट मिला है यहाँ पर। और ये साइन बैट जो है एक मेमोरी होती है क्रिकेटर की, इंटरनेशनल क्रिकेटर की। जब साइन वाला बैट मिले तो आप उसको अपने घर पर सजा कर रख सकते हैं और वो याद होती है आपकी उस क्रिकेटर से रिलेटेड जिसका साइन होता है। जी हाँ, इतनी अच्छी फैसिलिटी में आके इतना शानदार मैच एंजॉय करना ही एक अचीवमेंट है और उसके बाद एक साइन बैट भी आपको मिल जाए तो इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ पर दानिश ने इससे कबल भी उमर एसोसिएट्स के लिए अपने पहले मैच में गालिबन हाफ सेंचुरी की थी। इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेल रहे थे बांग्लादेश से आने के बाद। ढाका प्रीमियर लीग में भी इन्होंने मैचेस खेले और उसके बाद इन्होंने उमर एसोसिएट्स को ज्वाइन किया था। इस दफा फिर पिछले कदम पे जाके ऑफ साइड पे खेलना चाह रहे थे, लेकिन बॉल को इतना बाउंस नहीं मिला और हनान अचकजई पलक झपकते ही बॉल की तरफ लपके और 1 रन यहाँ रोका। और यहाँ स्क्रीन पे आपको बिग मैन आजम खान नजर आ रहे हैं और अब इंतजार है इनका। इस दफा पुल करने में कामयाब हुए हैं डीप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद जाकिर मलिक, जो कि विकेट कीपर एंड पे थ्रो करके सिर्फ 1 ही रन हासिल करने देंगे यहाँ पे दानिश अजीज को।
अगर हम दोनों ही बैटर्स की बात करें तो काफी थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेट होने के लिए, लेकिन उनके दिमाग में होगा कि यहाँ पे एक अच्छा टारगेट लगाना होगा, क्योंकि ऑपोजिशन में जाकिर मलिक, सुहेल खान और खालिद लतीफ जैसे बैटर्स मौजूद हैं। बिल्कुल, अगर खालिद लतीफ से शुरू करें तो खालिद लतीफ इतनी पोटेंशियल रखते हैं कि वो सिंगल हैंडेडली किसी भी दिन अपनी टीम को मैच जितवा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने काफी मैचेस जीते। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा आजम खान की। ज़ीशान, इस ये देखें साइन बैट सब बच्चों को यहाँ पर मिले, और यकीनी तौर पे बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगी जब ये बड़े होंगे और इस बैट को देखेंगे अपने घर पे और देखेंगे कि किस खिलाड़ी का इस पर साइन है, तो यकीनी तौर पे उस खिलाड़ी के लिए भी बड़े एजाज की बात होगी कि शायकीन क्रिकेट के घरों में हाउस होल्ड जिसे कहते हैं वो नाम बन गए हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन है। जी हाँ, यही खूबसूरती है इस मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट की, के ना सिर्फ मैचेस देखने को मिल रहे हैं बट आपके पास मौका होता है इंटरनेशनल क्रिकेटर से इंटरैक्ट करने का। इस दफा रिवर्स स्वीप खेलने में कामयाब हुए हैं असद शफीक, काफी फाइन गया है और यहाँ पे एक और बाउंड्री हासिल करेंगे। बड़ी चालाकी से स्विच किया असद शफीक ने यहाँ पर। कीपर मुसलसल बॉलर कुछ गाइड कर रहे थे, अपनी जबान में कुछ कह रहे थे, लेकिन असद शफीक ने उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया और बड़ी चालाकी से स्विच किया और रिवर्स स्वीप के सूरत में यहाँ पर चौका हासिल किया असद शफीक ने। और ये मच नीडेड बाउंड्री है उमर एसोसिएट्स के लिए। काफी लेट मूवमेंट देखने को मिली थी असद शफीक की। मूवमेंट बैटर्स पूरी स्विच हिट की तरफ जाते हैं, लेकिन काफी अच्छा यहाँ पे शॉट खेला असद शफीक ने। वेल बॉल यार, वेरी वेल बॉल यार अनान, बहुत आला। इसी तरह सेंसिबल बैटिंग का भी मुजाहिरा कर रहे हैं। चौका हासिल करने के बाद एक सिंगल लिया, 7 रन हासिल किए इस ओवर के यहाँ हन्नान के 7 ओवर के इख्तिताम पे। 34 पे 3 उमर एसोसिएट्स। और यहाँ पर ज़ीशान, मैं जैसे कि बात कर रहा था कि इस सिचुएशन में जब आजम खान जैसा बैट्समैन आपके डगआउट में मौजूद हो तो काफी प्रेशर होता है। और इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर एक और विकेट गिरती है तो यकीनी तौर पर मैनेजमेंट आजम खान को बैटिंग ऑर्डर में और ज्यादा डिमोट करेगी, ताकि उनको लास्ट के वो जो 5-6 ओवर्स हैं वो मिले और वो वहां पर अपनी काबिलियत दिखाकर ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर कर सके टीम के लिए। ये अगर पावर हिटिंग की बात करें तो उनके पास अनवर अली जैसे बैटर भी मौजूद हैं, उन पे भी रिलाई किया जा सकता है इनिंग्स के आखिरी लम्हात में। लेकिन दोनों ही बैटर्स कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक लंबी पार्टनरशिप लगाएं। एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत भी है उमर एसोसिएट्स को। हमने पहले सेमीफाइनल में भी देखा कि जल्दी विकेट्स गंवाने के बाद पार्टनरशिप बनाने में कामयाब हुए थे जब नबी गोल और वकार बैटिंग कर रहे थे। शोएब ने भी काफी अच्छा साथ निभाया था और हमने ये भी देखा कि 167 का हदफ नहीं हासिल कर सके थे इशाल एसोसिएट्स। वलीद अपने स्पेल का दूसरा ओवर जारी रखेंगे। इस दफा फिर ड्राइव करने में कामयाब हुए हैं। लॉन्ग ऑफ के फील्डर मौजूद हैं और हनान अचकज़ई गालिबन बॉलिंग एंड पे थ्रो करके सिर्फ एक ही रन यहाँ हासिल करने देंगे। और ये उमर एसोसिएट्स के ओनर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी मैच को अपनी टीम के एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर मजीद वीआईपी गेस्ट भी मौजूद हैं जो कि इस मैच से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेमीफाइनल जो है वीकेंड पर है, मतलब कल अगर छुट्टी ऑफिस की अमूमन होती है। वेरी वेल बॉल यार वलीद, वेरी वेल बॉल यार, बहुत आला यार वलीदा। जी हाँ, सही फरमाया। और कल चूंकि फाइनल खेला जाएगा और हफ्ते की रात होगी तो यकीनन ग्राउंड तो कच्चा-कच तमाशाइयों से भरा ही होगा और काफी वीआईपी गेस्ट भी देखने को मिलेंगे। अरे भाई बस और यहाँ पर अपील, बॉलर इंटरेस्टेड थे, विकेट कीपर ने उनका साथ दिया लेकिन अंपायर बिल्कुल इंटरेस्टेड नजर नहीं आया क्योंकि बाज़ाहिर ये गेंद जो है लेग स्टंप से बाहर थी। यहाँ पढ़ने के बाद थोड़ा अंदर आया और यकीनी तौर पे लेग स्टंप से बाहर ही जाता। सुहेल खान ने कोशिश की थी अपील करने की लेकिन विड्रॉ कर ली क्योंकि उनको अंदाजा था कि फैसला उनके हक में नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हम दानिश अजीज की बात करें तो सिर्फ सिंगल्स पे ही इन्हिसार कर रहे हैं और यही जरूरत भी है उमर एसोसिएट्स को।
और ये जो छोटा सा बेबी है यहाँ पर, क्यूट सा बेबी है, ये भी मैच देखने के लिए आया हुआ है। और जब ये बड़ा होगा, तो मैं कह रहा था कि जब ये बेबी बड़ा होगा और ये वीडियो कभी देखेगा सोशल मीडिया पे, तो इसको पता लगेगा, उसके पेरेंट्स इसको बताएंगे कि ये मुइन खान एकेडमी में सेमीफाइनल मैच देख रहा था। उमूमन नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े होके अपने आप को पहचानते नहीं हैं, लेकिन वालिदैन यकीनन बताएंगे कि हम सेमीफाइनल देखने मौजूद थे डीएचए स्पोर्ट्स क्लब में। एक डॉट बॉल के साथ ओवर का अख्ताम हुआ। सिर्फ 5 ही रन यहाँ पे हासिल किए उमर एसोसिएट्स के बैटर्स ने। 8 ओवर्स के अख्ताम पे 39 पे 3। और यहाँ पर शायकीन क्रिकेट का जोश देख सकते हैं आप, और जोश हो भी क्यों ना, कैमरे में जो नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर कैमरामैन बल्कि ड्रोन इनकी तरफ है और इनको पता लग गया है, जिसकी वजह से ये हाथ भी हिला रहे हैं, खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। अब हमें ये तो नहीं पता कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, बट आई एम श्योर कि क्रिकेट की सपोर्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। जी हाँ, दोनों ही टीम्स में बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, तो क्रिकेट इज द रियल विनर और क्रिकेट को ही यहाँ सपोर्ट करने आए हैं। और अब बॉलिंग क्रीज पे आए हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर लाल कुमार। दानिश अजीज इनफैक्ट बॉल की हालत से नाखुश। दोनों ही ऑन फील्ड अंपायर जरूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे बॉल की कंडीशंस को। जावेद कदीर भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट में नुमाइंदगी करने वाले 99 खिलाड़ी। कुछ दिन पहले हमारे साथ महमूद हामिद भी मौजूद थे। He was the 100th ODI cap holder for Pakistan, played his first international against Sri Lanka at Sharjah back in 1997. Meanwhile, there might be a delay because the umpires might have asked for a change in the ball. मुश्किलात का सामना है यहाँ पे उमर एसोसिएट्स को। 39 रन पे ही 3 विकेट्स गंवाई हैं। 8 ओवर्स का खेल हो चुका है। और यहाँ पर गेंद चेंज किया जा रहा है। आई थिंक ड्यू की वजह से बॉल बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा था, जिसकी वजह से शायद रिक्वेस्ट की गई है कि बॉल को चेंज किया जाए। तो यहाँ पर बॉल को अंपायर ने चेंज किया है और लाल कुमार जो है वो इस वक्त बॉल थामे हमें नजर आ रहे हैं। और खालिद लतीफ यहाँ पर बॉल चेंज हुई है तो उसको देखने के लिए आए हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था इस टूर्नामेंट में जीशान कि उमर अकमल ने गालिबन शिकायत की थी अंपायर से कि ये इस वक्त गेम के आपने बॉल चेंज की है। जी हाँ, इशाल एसोसिएट्स का सामना था उमर एसोसिएट्स से और गालिबन 12वें ओवर के बाद अंपायर ने एक नई बॉल थमा दी थी। तो उमर अकमल इसी बात की शिकायत करते हुए नजर आए थे और ये वीडियो काफी वायरल भी हुई थी सोशल मीडिया पे। लाल कुमार जिनके पास काफी तजुर्बा है इन हालात में बॉलिंग करने का, कोशिश करेंगे कि इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब हों और दोनों में से किसी भी बैटर को आउट करें तो काफी बड़ी विकेट होगी एओ हॉस्पिटल्स के लिए। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद दायरे के बाहर। दानिश का बल्ला अब तक खामोश है और यहाँ पर चालाकी से मिड विकेट पे सिंगल के लिए पंच किया। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि दानिश का बल्ला यहाँ पर बड़ा खामोश नजर आ रहा है, तो क्या लगता है कि ये तूफान से पहले की खामोशी है जिस तरीके की इनिंग उन्होंने प्रीवियस मैच में खेली है? ये एओ हॉस्पिटल से कप्तान तो यही उम्मीद करेंगे कि बैट दोनों ही बैटर का बैट खामोश ही रहे, लेकिन यहाँ पे जरूरत है किसी एक बैटर को कि वो चार्ज लें और बर्क रफ्तारी से रन बनाए।
असद शफीक जो कि कदमों का इस्तेमाल करने आगे बढ़े थे, लेकिन पिच ऑफ द बॉल पे आ नहीं सके और सिर्फ एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेल सके। थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे होंगे असद शफीक, क्योंकि स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो 26 गेंदों पे सिर्फ 26 ही रन बनाए। और आज कल हम देखते हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर स्ट्राइक रेट की बहुत बात करते हैं T20 फॉर्मेट में। और यहाँ पर कैच का कॉल है, लेकिन बहुत ही नाकिस फील्डिंग यहाँ पर एओ हॉस्पिटल्स के फील्डर से। ये यकीनी तौर पे रोका जा सकता था ये बॉल। जी हाँ, शॉट सीधा उनकी तरफ ही आया था। डीप मिड विकेट पे मौजूद थे, लेकिन काफी ऑकवर्ड पोजीशन में चले गए थे बॉल को रोकने के लिए। शायद डबल माइंड थे कि कैच की तरफ जाएं या बाउंड्री रोकें। अगर आगे की तरफ डाइव लगाते तो कैच भी कर सकते थे हुजैमा बिन तनवीर। शायद मिक्स्ड थॉट्स में थे। एक वक्त उनको लग रहा था कि शायद कैच पकड़ लूंगा, फिर उन्होंने कहा बॉल रोक लूंगा, लेकिन दोनों ना हो पाया। फिर कदमों का इस्तेमाल किया और आहिस्ती के साथ ऑन साइड पे खेल के तेजी से रन मुकम्मल किया यहाँ पे असद शफीक ने। जी हाँ, इस मोमेंट पे अगर अच्छा कैच ले लें या अच्छा रन आउट कर लें तो मजीद हौसले बुलंद हो जाएंगे यहाँ पे हॉस्पिटल्स के। और जैसे ही इनको नजर आया कि ये लोग स्क्रीन पर आ रहे हैं तो फौरन से इनके चेहरों पर जो है वो मुस्कुराहट बिखर गई। और यही मजा होता है कि जब आप टीवी पर आते हैं, ग्राउंड में लोग आते भी इसीलिए कि हम टीवी पर आए। कदमों का इस्तेमाल किया और स्टंप हो जाएंगे यहाँ पे दानिश अजीज। सुहेल खान जिन्होंने कोई गलती नहीं की, यहाँ पे दानिश अजीज को चलता किया। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो तूफान की मैं बात कर रहा था वो शायद आज उमर एसोसिएट्स के लिए ना हो, बल्कि एओ हॉस्पिटल्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पर दानिश को कोई क्लू नजर नहीं आया। वो डाउन द ट्रैक आए, लंबा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन बड़ी ही बॉल जो है बहुत ज्यादा स्पिन हुआ और इसके बाद दानिश अजीज जो है वो 5 रन बना के आउट हुए हैं यहाँ पर। और उमर एसोसिएट्स अब 4 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 9 ओवर्स। और यहाँ पर DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी का डगआउट, एओ हॉस्पिटल्स का डगआउट यकीनी तौर पे बहुत खुशाइंद होगा। और ये देखें नन्हा सा फैन यहाँ पर एंजॉय कर रहा है और यहाँ पर जो है वो एंजॉय कर रहा है इस मैच को। और यहाँ पर बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन है जीशान, ये सोहेल खान हैज कम टू बैट। और आप हल्का ना ले, हो सकता है कि सोहेल खान यहाँ पर फायर पावर दिखाएं इस रात। यहाँ धुआंधार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लेट ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं सोहेल खान। आज 6ठे नंबर पे इनको भेजा गया है और आजम खान की विकेट बचा रहे हैं लगता है उमर एसोसिएट्स। ये वो आउट होने का मंजर, कदमों का इस्तेमाल किया था और बॉल इतना बाउंस नहीं की, लेकिन सोहेल खान ने भी कोई गलती नहीं की। उमूमन हम देखते हैं कि विकेट कीपर को इतना नजर नहीं आता जब बैटर आगे कदमों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या खूबसूरती से बॉल कलेक्ट करके स्टंप किया है दानिश अजीज को। और हमने देखा कि असद शफीक ने यहाँ से इशारा किया था और गालिबन वो इशारा यही था कि सोहेल खान को वो बुला रहे थे। ये बड़ा सरप्राइजिंग है एंड ही हैज चेंज्ड हिज हेयर स्टाइल। लेट्स सी कि उनके बैटिंग में भी कोई स्टाइल चेंज होता है या नहीं होता है। हेयर स्टाइल तो उनका काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। उमर हमने टेस्ट मैचेस में देखा है नाइट वॉचमैन को भेजा जाता है जब 89वें या 90वें ओवर में विकेट गिरती है तो, लेकिन यहाँ पे सोहेल खान काफी खुश होंगे क्योंकि आज उनको बैटिंग अपॉर्चुनिटी मिली है और इसी के साथ साथ बॉलिंग में भी तब्दीली की गई है। अफनान खान को लेकर आए हैं कप्तान। पिछले कदम पे जाके कट खेलना चाह रहे थे, खालिद लतीफ खुद मौजूद थे बैकवर्ड ऑफ पॉइंट पे। अब चलते हैं साइड लाइन पे जहां मौजूद है हिना दीदार। यस, उमर एसोसिएट्स एंड एओ हॉस्पिटल्स के दरमियान मैच तो जारी है, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं अवैस खान, मोइन खान एकेडमी के डायरेक्टर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा इस टूर्नामेंट को सो फार सेमीफाइनल मैच चल रहा है, सेकंड सेमीफाइनल, किस तरह चल रहा है आपके लिए? भाई बहुत जबरदस्त मैच जा रहा है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि रन अभी इतने नहीं हुए पहले इनिंग में, बट वी आर होपिंग कि जरा थोड़ा और एक्साइटिंग हो जाएगा मैच बाय द सेकंड हाफ इंशाल्लाह।
ठीक है जी, तो अवेश जरा बताइएगा मोइन खान एकेडमी के बारे में, क्रिकेट के अलावा मजीद और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं? सो बेसिकली हमारा मेन एक्टिविटी तो स्पोर्ट्स एकेडमी चलती है यहाँ पे बच्चों की, विच हैज लाइक अबाउट 300 to 400 किड्स. तो उनकी एकेडमी होती है. उसके अलावा भी हमारे पास स्पोर्ट्स हैं, टेबल टेनिस है, स्क्वॉश है, यहाँ पे स्नूकर है, हमारा अपना जिम्नेजियम है, जिम है बहुत अच्छा, स्टेट ऑफ द आर्ट माशाल्लाह. तो ये सब एक्टिविटीज और इट्स अ ग्रोइंग क्लब. तो अब इंशाल्लाह फ्यूचर में और एक्टिविटीज हम ऐड करने का प्लान कर रहे हैं. ऑफ कोर्स बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी आपकी एकेडमी की जानिब से लिए जाते हैं, और रियल फ्लैग्स के बारे में जरा बताइए, कौन सी इनिशिएटिव है किक बॉक्सिंग के रिलेटेड, क्या डिटेल्स बताएंगे आप हमें? तो ये एक इनिशिएटिव है, दिस इज अ वेंचर दैट मी एंड माय वाइफ मरियम हैव स्टार्टेड. तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग किक बॉक्सिंग स्टार्ट किया है, जिम्नास्टिक्स स्टार्ट किया बच्चों के लिए, और इसके अलावा इसमें एक वेट लॉस और स्ट्रेंथ गेनिंग प्रोग्राम भी है. तो अभी इस पे हम लोग काम कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन अकेडमी फॉर जिम्नास्टिक्स एंड किक बॉक्सिंग फॉर किड्स ऑल्सो. तो अभी ये बिल्कुल नया वेंचर है, हमने 1 महीना पहले स्टार्ट किया है और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है. बहुत टैलेंटेड बच्चे भी आ रहे हैं हमारे पास, हु हैव ऑलरेडी लाइक स्टार्टेड ट्रेनिंग हियर और हु आर डूइंग रियली वेल माशाल्लाह. ऑलराइट, थैंक यू सो मच अवेश खान, डायरेक्टर मोइन खान एकेडमी हमारे साथ मौजूद हैं और अपने नए इनिशिएटिव के बारे में बता रहे थे. किक बॉक्सिंग के रिलेटेड रियल फ्लेक्स के नाम से एक और इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस होने वाला है. वेल, बैक टू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू है ना. और यहाँ पर सिंगल हुआ है. और जहां तक बात करें जीशान मोइन खान एकेडमी की, तो ऑब्वियसली जब आपके पास एक क्रिकेटर, एक वेल नोन क्रिकेटर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हो, तो फिर आपके जो आने वाली जनरेशन होती है उसको काफी मोटिवेशन मिलती है जब यहाँ पर बच्चे आते होंगे और मोइन खान से मिलते होंगे अपने स्पोर्ट्स के दौरान. जी हाँ, मोइन खान पाकिस्तान क्रिकेट का काफी बड़ा नाम. सन 2000 में इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने एशिया कप भी जीता था बांग्लादेश में, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी है. काफी मैचेस जितवाए मोइन खान ने, खासतौर पर 99 के वर्ल्ड कप में इनकी काफी अच्छी धुआंधार बैटिंग भी हमने देखी थी, जो कि इंग्लैंड में खेला गया था. और उनकी परफॉर्मेंस की नजर पाकिस्तान ने फाइनल भी क्वालिफाई किया था. स्ट्रेट बैट से खेले सोहेल खान, लेकिन अच्छी फील्डिंग एफर्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर की तरफ से. दबाव बरकरार रखा हुआ है यहाँ पे एओ हॉस्पिटल्स ने, आसानी से रन्स बिल्कुल नहीं लेने दे रहे. यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है बॉल को सुखाने में भी, क्योंकि ड्यू इतना पड़ रहा है. हम जब नीचे भी मौजूद है तो वहां पर फील हो रहा है बाकायदा. तो यहाँ पर अपने ओवर की आखिरी गेंद करेंगे अफनान, और यहाँ पर स्लैश किया है इस बॉल को, और यहाँ पर मिस फील्ड हुई है और सोहेल खान को इसका फायदा हुआ है. 2 रन्स यहाँ पर हासिल किए हैं सोहेल खान ने. तो 10 ओवर्स मुकम्मल हुए. उमर एसोसिएट्स 53 पर 4. And the viewers who have just joined us, let me tell you that this is the second semi-final between Omar Associates and AO Hospitals. If you missed the first semi-final, so let me tell you that Tareen Academy won that first semi-final by 70 runs. It was a one-sided contest, and Ali Khan Tareen has qualified for final. और ये देखें बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं. छोटी छोटी बच्चियां थी और अपनी खुशी का इजहार वो डांस की सूरत में कर रही थी. एक दफा मिसफील्ड हुई है यहाँ पे अख्तर की जानिब से, जो कि थर्ड मैन पे मौजूद थे, और इसी तरह एक और बाउंड्री हासिल करेंगे यहाँ पे असद शफीक. इसी तरह के शॉट्स की यहाँ पे जरूरत भी है उमर एसोसिएट्स को. बिल्कुल. और जीशान यहाँ पर आप स्ट्रैटेजी देखें कि असद ने सोहेल को बुलाया है ताकि अगर सोहेल की विकेट यहाँ पर चली भी जाए तो वो ज्यादा उनको इतना गम नहीं होगा, इसीलिए वो आजम को थोड़ा सा रोक रहे हैं. और ये शॉट देखें, कट किया बहुत खूबसूरती के साथ, और यहाँ पर 4 रन हासिल किए. और अगर इसी तरीके से मोमेंटम को क्रिएट करते गए तो यहाँ पर अच्छा स्कोर सेट करने में कामयाब होंगे उमर एसोसिएट्स. Parkview City being the powering partners of this 8th corporate T20 Cup. Their dugout, their stall is there. Hitting it straight towards long off, picking up yet another single. Now Asad Shafiq. That's what happens when you lose your top order very early. It becomes difficult for the middle order.
to keep up with the scoring rate, because 11th over is in progress and they are still scoring under 6 runs and over, Omar Associates, something that we haven't seen from them throughout this tournament. Once again played on the offside, finding the gap. This time it's Sohail Khan. Akhtar is after the ball and he wins the race. He stops the ball, but they will collect 3 runs. You said right, he wins the race, but I'll add something that the ball also supported him, because due to slow outfield, the ball stopped there just inches before the boundary. You look at him, he played it at the point region, backward point fielder, in fact short third man fielder, went after it and the ball slowed down just inches before the boundary, and he cleverly just pushed the ball back inside the boundary and here saved a crucial run, just a crucial run. जी हाँ, यहाँ पे हमने देखा अख्तर शॉर्ट थर्ड मैन की जानिब से भाग के गए थे और अगर कोई एक्स्ट्रा फील्डर उनके पीछे साथ साथ जाता तो सिर्फ 2 ही रन होते, क्योंकि अख्तर ने बॉल को पहले बाउंड्री से पहले ढकेला और फिर वापस आके भी खुद ही थ्रो की. और यहाँ पर डाउन द ट्रैक आए और सीधे बल्ले से यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की जाने भी इस बॉल को गाइड किया. यहाँ पर 1 रन और बहुत ज्यादा सेंसिबल इनिंग खेल रहे हैं यहाँ पर असद जीशान, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ स्कोर बोर्ड पे उनकी नजरें होंगी और वो चाह रहे होंगे कि सिंगल डबल्स और अगर एक आध बाउंड्री जैसे इस ओवर में आ गई है वो अगर मिल जाए तो यहाँ पर अच्छा टारगेट सेट किया जा सकता है. Exactly, slowly and steadily now he is also improving his strike rate as a Shafiq, because at one stage he was scoring at 100 runs per 100 balls when he was 26 of 26, now has managed to score 41 of 34. He'll be expecting Sohail Khan to provide some support at the other end as well. Once again hitting it on the offside. This time there were 2 fielders standing there at back for a point. Yet Sohail Khan manages to pick up a single. और यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी लाल कुमार की भी कि जहाँ पर उन्होंने फील्ड ली हुई है वो उसी एरिया में बॉल कर रहे हैं. और यहाँ पर देखें खालिद लतीफ मौजूद थे, कप्तान एओ हॉस्पिटल्स के, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और बॉलर की कामयाबी यही है कि जहाँ फील्ड ली हुई है वहीं पर अगर वो गेंद करें तो कामयाबी मिलती है. Opening the face of the bat, just couldn't beat that fielder at short third man. But a decent over this for Omar Associates. 11 done, 64 for 4. और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्टेड स्कोर उमर एसोसिएट्स का करंट रन रेट उनका 5.82 है. उस हिसाब से अगर चलते रहे तो 116 रन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर यकीनी तौर पे जिस तरीके से शफीक खेल रहे हैं तो ये रेस अब जब करेंगे तो अगर 12 रन पर ओवर बने तो यहाँ पर उमर एसोसिएट्स 172 रन बना सकती है. कंडीशंस इतनी आसान नहीं है बैटिंग की, तो कोशिश करेंगे कि कम से कम 140-150 तक तो पहुंचे, क्योंकि इनके पास इतनी बॉलिंग अटैक में इतनी स्ट्रेंथ है कि इस टोटल को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकें. लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट आजम खान इज देयर. अगर उनका बल्ला चलता है तो वी कैन आल्सो सी समथिंग अराउंड 200 एज वेल. That's too far away, I think. Once again hitting it fine. Ahmed Barohi. In fact, it's Lal Kumar standing there at short fine leg, just keeping it down to a single. As we talk about Azam Khan, it looked too far away, but as we saw him firepowering in PSL, he played and won matches for Islamabad United single-handedly, so he can do that disaster here. और यहाँ पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन एज हुआ और शॉर्ट फाइन लेग की जानिब ये बॉल गई और यहाँ पर 1 रन हासिल हुआ. Yeah, talking about Azam Khan's innings during PSL, well, he batted really well, but those were different conditions. It was Pindi, and the pitch was very much in the favor of the batting side, because we saw even 240 being chased down twice. कदमों का इस्तेमाल किया है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जानिब खेले हैं यहाँ पे असद शफीक और एक खूबसूरत बाउंड्री हासिल करेंगे. यही इनकी स्ट्रेंथ है, यही इनका जोन है, और जब कदमों का इस्तेमाल करते हैं और ये शॉट खेलते हैं तो यकीनी बाउंड्री हासिल करते हैं. जी हाँ, बिल्कुल ये इनसाइड आउट शॉट खेला इन्होंने और कमाल का ये शॉट ओवर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री और यहाँ पर चौका हासिल किया है. एक्स्ट्रा कवर का जो फील्डर था शॉट एक्स्ट्रा कवर का उसके ऊपर से ये गेंद गया और बाउंड्री की सूरत में कदमों का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन किया. बॉल पर नजरें जमाए बैठे थे और
बखूबी अंदाज से बॉल को कनेक्ट किया और यहाँ पर कामयाबी से चौका हासिल किया। यहाँ इसी बाउंड्री के साथ अब सिर्फ 3 रन की दूरी पे है अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने से। और यहाँ जीशान दाद देनी पड़ेगी असद शफीक को वाकई के जहां बाउंड्री लेते हैं उसके अगली बॉल पे फौरन से सिंगल लेते हैं ताकि स्ट्राइक रोटेशन भी होती रहे, प्रेशर भी बिल्ड होता रहे सामने वाली टीम पर और रन्स भी बनते रहे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त उमर एसोसिएट्स के लिए। जी हाँ, और यही सीखने का मौका है जो यंगस्टर्स डगआउट में मौजूद हैं या जो यंगस्टर्स अपनी टीवी स्क्रीन पे जियो सुपर पे मैच देख रहे हैं। यही तजुर्बा है और इसी तजुर्बे से आपने सीखना है। और दूसरी जानिब सोहेल खान भी बहुत ज्यादा मुहतात तरीके से खेल रहे हैं, विच इज अ गुड साइन कि जब आपका कैप्टन आपको सपोर्ट कर रहा हो और वो दूसरे एंड से बाउंड्री भी लगा रहा हो, रन्स भी ले रहा हो, तो यहाँ पर बहुत आसानी हो जाती है जब इस तरीके का कोई बैट्समैन प्रमोट होकर आता है बैटिंग में। जी हाँ, एओ हॉस्पिटल इस उम्मीद से थे कि सोहेल खान आए हैं, बड़ी हिट लगा के जल्दी आउट हो जाएंगे, लेकिन काफी समझदारी से बैटिंग कर रहे हैं सोहेल खान, भरपूर साथ दे रहे हैं अपने कप्तान का। स्वीप शॉट खेलने में कामयाब हुए हैं लेकिन बॉल सीधा जाएगी वलीद के हाथ में जो कि डीप स्क्वायर लेग पे थे मौजूद। एक और रन का यहाँ पे इजाफा उमर एसोसिएट्स के स्कोर में 12 ओवर से इख्तिताम पे 73 पे 4। और ये आप जिम्नेजियम एंड से मोइन खान क्रिकेट एकेडमी का व्यू देख रहे हैं ड्रोन शॉट की मदद से। और यहाँ पर अगर बैटिंग कार्ड पर नजर डालें तो टॉप 3 बैटर्स अम्माद, नाफे, खुर्रम, मायूस कुन कारकर्दगी रही उनकी, लेकिन असद शफीक ने जिस तरीके से कैपिटलाइज किया अपॉर्चुनिटी को, 49 रन अब तक स्कोर कर चुके हैं और सिर्फ 1 रन दूर है अपनी निस्फ सेंचुरी से। और यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी असद शफीक को, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर तहम्मुल का इजहार किया, बड़े आराम से खेला और साथ लेकर चल रहे हैं इस वक्त सोहेल खान को। हालांकि हमने देखा है कि जीशान जब इस तरीके का बैटर जब ऊपर आता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो हर बॉल को हिट करे, लेकिन यहाँ पर हमने सोहेल को भी एक दफा भी नहीं देखा कि वो कोई रिस्क लेने के मूड में है। जी हाँ, क्लियर मैसेज के साथ भेजा गया था उनको कि आपने रिस्क नहीं लेना है और कप्तान का साथ निभाना है। और क्योंकि अब रन्स तेजी के साथ आ रहे थे तो एओ हॉस्पिटल से कप्तान खालिद लतीफ ने की है एक बॉलिंग पे एक और तब्दीली, खुजैमा बिन तनवीर को वापस लेके आए हैं। खुजैमा जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में खुर्रम मंजूर की विकेट हासिल की थी। अभी 2 ओवर्स बाकी हैं इनके स्पेल के, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 1 से 2 और कामयाबी दिलवाएं अपनी टीम को। और यहाँ पर फाइन लेग की जानिब खेला है असद शफीक ने और शानदार सेंचुरी, हाफ सेंचुरी जो है यहाँ पर असद शफीक ने मुकम्मल की है। और यकीनी तौर पे दाद बनती है और यहाँ पर शायद सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त 3 की पोजीशन है, विच इज अ वेरी गुड जेस्चर जीशान। जी हाँ बिल्कुल, उनको पता है कि अभी इनिंग्स खत्म नहीं हुई है, मजीद तकरीबन 8 ओवर्स का खेल बाकी है। सिर्फ 40 बॉलों खेल के 50 रन मुकम्मल किए असद शफीक ने, 6 बाउंड्रीज भी लगाई अपनी इनिंग्स में। पिक किया है लेग साइड पे, कैप में निकालने में कामयाब है सोहेल खान और बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। पेस का यहां इस्तेमाल किया सोहेल खान ने एंड व्हाट अ यूज ऑफ हिज रिस्ट, यहां पर फ्लिक किया और क्या कमाल का फ्लिक किया यहाँ पर। ये देखें सोहेल खान ने शानदार शॉट खेला है यहाँ पर, एक बाउंस और बाउंड्री रोप के उस पार जाके गिरी गेंद। और ये शॉट इतना अच्छा है कि रिप्ले में ये मजीद जो है निखर कर सामने आ रहा है जिस तरीके का शॉट यहाँ पर सोहेल खान ने लगाया है। और साथ साथ अगर जीशान बात करें खुजैमा की तो इनके हवाले से मैं बताता चलूं कि ये एनसीए में पिछले टेन्योर में पीसीबी के मोहम्मद जाहिद की निगरानी में रहे 3 महीने तक। इस दफा ऑफ कटर कराने गए थे और सोहेल खान जांच नहीं सके, काफी जल्दी बल्ला घुमा बैठे थे यहाँ सोहेल खान। सोहेल खान की अगर हम बात करें, फास्ट बॉलर हैं और हम देखते हैं फास्ट बॉलर की कलाइयों में काफी दम होता है, काफी स्ट्रॉन्ग आर्म होते हैं। तो अगर आप इनको पेस देंगे और ऑफलाइन बॉल करेंगे तो चौके और छक्के भी खा सकते हैं। और खुजैमा बिन तनवी को यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बुरी बॉल ना कराए सोहेल खान के खिलाफ।
और यहाँ पर फाइन लेग की जानिब खेला है इस शॉट को। थोड़ा सा फाइन लेग के फील्डर को इस बॉल पर आने के लिए मेहनत करनी पड़ी, लेकिन एक ही रन शामिल होगा। और अगर खुजैमा की मैं मजीद बात करूं तो ये बड़ा एक अच्छा ऑलराउंड क्रिकेटर है। और जो मैं बात कर रहा था कि मोहम्मद जाहिद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, उनकी जेर निगरानी ये एनसीए में, ये देखें असद की 50। और यहाँ पर असद ने बड़े खूबसूरती से ग्राउंड के चारों ओर खेला और ये रिवर्स स्वीप जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा था। 2 दफा इन्होंने अटेम्प्ट किया और सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया। ये कट था, मिसफील्ड हुआ और यहाँ पर 4 रन हासिल किए और ये फाइन लेग पे चौका लगा के 50 मुकम्मल की। यहाँ अगर हम शफीक की इनिंग्स की बात करें तो 6 बाउंड्रीज लगाई। इससे वाज़ेह होता है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स को भी इन्होंने काफी अहमियत दी है, काफी फोकियत दी है और ज्यादातर रन इन्होंने सिंगल और डबल्स के ही जरिए बनाए हैं। हालांकि T20 फॉर्मेट है, अमूमन तमाशाई इस उम्मीद से होते हैं कि हमें बाउंड्रीज देखने को मिले, छक्के ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले, लेकिन असद शफीक अपना भरपूर तजुर्बा यहाँ पे दिखाते हुए और स्लोअर डिलीवरी थी लेकिन उसको पहले ही रीड कर लिया और थर्ड मैन की जानिब इसको खेल दिया असद शफीक ने। और यहाँ पर 1 रन हासिल किया है, जिसके बाद उमर एसोसिएट्स का स्कोर जा पहुंचा है 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 13 ओवर्स। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लिया है असद शफीक और सोहेल खान ने और अंपायर उनको गालिबन हिदायत कर रहे हैं कि जल्दी किया जाए और टाइम बचाया जाए इस मैच का। जी हाँ, डगआउट से रिजर्व प्लेयर आए थे और उमूमन वैसे तो पेयर ऑफ ग्लव्स के साथ आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोई मैसेज भी आया होता है डगआउट की तरफ से और यकीनन मैसेज होगा कि किसी एक एंड से यहाँ पे थोड़ी सी जल्दबाजी दिखानी पड़ेगी अब उमर एसोसिएट्स के बैटर्स को, क्योंकि आजम खान और अनवर अली जैसे बैटर मौजूद हैं और इसी सिचुएशन के लिए वो जाने भी जाते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स आए और अपनी धुआंधार बैटिंग दिखा के एक अच्छा टोटल खड़ा करने में कामयाब हो। तो उनकी तरफ से मैसेज यही होगा कि अगर बड़ी हिट लगाते हुए एक विकेट का नुकसान भी उठाना पड़ता है तो पीछे बैटर मौजूद हैं। और यहाँ पर कॉल है कि बॉलिंग एंड आउट हो गया, यहाँ पर तेज थ्रो करना पड़ेगा और लेकिन यहाँ पर क्या मिस कर दी बॉल। अगर ये बॉल पकड़ लेते तो शायद यहाँ पर चांस लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी असद शफीक को कि वो बहुत तेजी से यहाँ पर भागते हुए जिसका प्रेशर भी बिल्ड हुआ बॉलर पर। जी हाँ, जाकिर मलिक थे डीप मिड की पोजीशन पर और अच्छी थ्रो की थी, लेकिन फील्डर यहाँ पे थ्रो नहीं पकड़ पाए, वरना यहाँ पे एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ता उमर एसोसिएट्स को। एक और फैमिली वीआईपी बॉक्स में यहाँ पे मैच से लुत्फानंदोज होते हुए पिछले कदम पे गए, थोड़ी सी जगह बनाई, ऑफ साइड पे खेल के कामयाब हुए, एक और सिंगल हासिल किया असद शफीक ने। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बड़ी हिट्स की तरफ जाएंगे सोहेल खान, क्योंकि उनको पता है कि अनवर अली और आजम खान मौजूद है, बैट किए हुए तैयार हैं। देखिए अब थोड़े चांस लेने पड़ेंगे स्पेशली सोहेल खान को, और यहां पर लिया है जिस चांस की बात कर रहा था मैं, लेकिन यहां पर सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया बॉल और फील्डर जहां पर खड़ा होता उसी रेंज में बॉल गया। यहाँ काफी पीछे गिरा हुआ था ये गेम और पुल करना चाहते थे, सही से कनेक्शन नहीं मिला। अफनान खान मौजूद थे डीप स्क्वायर लेग पे और पकड़ के सिर्फ एक ही रन लेने का मौका दिया यहाँ सोहेल खान को। अब तक फील्डिंग की बात की जाए तो काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया है एओ हॉस्पिटल्स के फील्डर्स ने। नॉक्ड हिम ओवर। इस दफा स्वीप खेलना चाहते थे असद शफीक, ऑफ स्टंप के काफी बाहर चले गए थे और अपना स्टंप्स को एक्सपोज किया और वलीद ने मौका तलाश किया यहाँ पे असद शफीक को चलता करने के लिए।
देखिए यहाँ पर इस चीज की जरूरत नहीं थी। जब आप सीधा खेल रहे थे, बॉल सीधा था, रूम बनाने की जरूरत नहीं थी, आप इसको स्ट्रेट खेल सकते थे। और यहाँ पर ज्यादा चांस मेरे ख्याल से सोहेल खान की तरफ से लिया जा सकता था। असद शफीक को वहां पर अभी ठहरने की जरूरत थी, इनकी टीम को इनकी जरूरत थी यहाँ पर, लेकिन 54 रन बना के यहाँ पर पेविलियन की जानिब रवा दवा है। और उमर एसोसिएट्स की टीम अब 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर जीशान जो हमारे ग्राउंड कमेंटेटर हैं उनकी तरफ से तो ऐलान हो गया है, तो अब हम भी अपने नाजरीन को बता देते हैं कि आजम खान इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं कि वो ग्राउंड में जा रहे हैं। और यकीनी तौर पे यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं उनमें से आधे से ज्यादा आई एम श्योर कि वो आजम खान की बैटिंग देखने के लिए आए हैं। और अब फाइनली उनको वो देखने को मिलेगी, तो आई एम श्योर कि वो भी यही सोच के ग्राउंड में आ रहे हैं। जी हाँ, ये है खान का मैदान और तमाशाइयों की आवाज और तमाशाइयों की गूंज से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आप बैटिंग करने आए हैं आजम खान। काफी उम्मीदें होंगी ना सिर्फ इनके टीम को बट फैंस को भी कि आज कुछ चौके और छक्कों की बारिश देखने को मिले। पहला मैच नहीं खेल सके थे, बाकी 2 मैचेस में इतना परफॉर्म नहीं कर सके आजम खान, लेकिन आज एक मौका है और स्टेज सेट है। ये ऐसा शफी के आउट होने का मंजर, विकेट कीपर के ऊपर से निकालना चाह रहे थे लेकिन तीनों ही स्टंप्स यहाँ पे एक्सपोज किए और नवीद ने इसका भरपूर फायदा उठाया। आप देख सकते हैं अपने स्टंप कैंप पे सोहेल खान भी काफी नाराज थे इस विकेट के लिए। और सीधे बल्ले से बॉल को चेक किया है फिल वक्त। और आजम खान इस वक्त वो बल्लेबाज हैं कि जो उमर एसोसिएट्स को इस सिचुएशन से अच्छी बेहतर सिचुएशन में ले जा सकते हैं। काफी करीबी मामला हो सकता था, अंदरूनी किनारा लिया और खुशकिस्मत रहे यहाँ पे आजम खान के बॉल जाके विकेट्स को नहीं लगी और एक बेहतरीन ओवर वलीद की तरफ से। और ये आप देखें कि थोड़ी सी बचत हो गई यहाँ पर। अगर ये बॉल बैट से कनेक्ट ना होता तो शायद यहाँ पर एलबीडब्ल्यू भी हो सकता था, इनफैक्ट बोल्ड भी हो सकते थे जिस तेजी से बॉल ने स्किट किया। और यहाँ पर कुछ और नन्हे शायकीन यहाँ पर बल्ला थामे, जिस पर साइन हमने कुछ देर पहले बताया। और देखे कितने खुश हैं यहाँ पर जैसे ही उनको पता लगा कि वो टीवी स्क्रीन पे हैं। और यकीनन अगर इनके घर वाले इनके साथ नहीं है तो वो घर पे बैठ के इनको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लाल कुमार को एक बार फिर लेकर आए हैं बॉलिंग मार्क पे, अपना तीसरा ओवर करेंगे। इस दफा ऑफ साइड पे खेले हैं सोहेल खान और सिर्फ एक ही रन लेंगे। पिछले ओवर में हमें ऐसा लग रहा था कि सोहेल खान थोड़ा चार्ज करेंगे, उन्होंने अटेम्प्ट भी की थी, लेकिन क्योंकि असद शफीक अब पवेलियन में वापस लौट चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि सोहेल खान यहाँ पे बड़ी हिट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि आजम खान मौजूद है अगले एंड पे और आजम खान से उम्मीदें होंगी कि वो कुछ बेहतरी लेकर आए स्कोरिंग रेट के लिए। और ये जो स्क्रीन पे जो शख्स आप व्हाइट शर्ट में देख रहे हैं ये भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स और उमर एसोसिएट्स का पार्ट है, वीडियो एनालिस्ट हैं गालबन ये, और इस टीम का पार्ट हैं और पीएसएल में भी हम इन्हें देखते हैं प्लेयर्स के साथ। और यहाँ पर कट किया है आजम खान ने अपना बल्ला खोला है और साथ साथ अपना खाता भी खोला है यहाँ पर एक कट शॉट के साथ पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट रीजन पे। और यहाँ पर 4 रन समेटे आजम खान ने। यहाँ पीछे गिरा था गेंद और इसको कट किया खूबसूरती से। खालिद लतीफ ने भरपूर कोशिश की थी डाइव लगा के बॉल रोकने के लिए, लेकिन काफी अच्छा कनेक्शन मिला यहाँ आजम खान को। और अख्तर काफी देर तक बॉल के पीछे गए लेकिन आखिरकार उन्होंने हार मान ही ली। And at this stage, AO Hospital needs to trap Azam Khan. सीधे बल्ले के साथ खेले हैं और रन लेने में नाकाम रहे यहाँ पे आजम खान। हालांकि अगर फुर्ती दिखाते तो एक सिंगल हासिल किया जा सकता था, क्योंकि काफी टाइम लिया था शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने बॉल को पकड़ के थ्रो करने से।
एक दफा फिर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेले, इस दफा हमने मिसफील्ड देखने को मिली और बासानी एक रन हासिल करने में कामयाब होंगे यहाँ पे आजम खान। इस वक्त मुझे कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन किया है अजहर हमीद, जो कि टूर्नामेंट के डायरेक्टर हैं। वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स सर। थैंक यू वेरी मच। मैच जो है वो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, 90 for 5 एंड दिस इज द 15th ओवर। कदमों का इस्तेमाल किया, लेग साइड पे खेले हैं, फाइन निकालने में कामयाब हुए हैं फाइन लेग के फील्डर से। वलीद है वहां पे मौजूद और 2 रन हासिल करेंगे यहाँ पे सुहेल खान। काफी मुश्किलात यहाँ पेश आ रही हैं अगर हम बैटिंग से बात करें। असद शफीक जिन्होंने थोड़ा टाइम लिया था, 9 सेंचुरी मुकम्मल की, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सके। एक स्वीप शॉट लगाना गए और अपनी विकेट गवा बैठे। जी जीशान, बिल्कुल, और बड़ा सेटबैक था उमर एसोसिएट्स के लिए, लेकिन इस वक्त 2 अटैकिंग बैट्समैन हैं और अगर ये विकेट पे ठहर गए तो मेरे ख्याल में जो है वो शॉर्टफॉल जो रन्स का है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस वक्त सोहेल ने जो है वो मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन का इजाफा, 93 for 5 15 ओवर के इख्तिताम पर। Talking about the batting performance of Omar Associates, the top order couldn't live up to the expectations tonight, but the captain came to the rescue, scoring another half century. Danish Aziz even just scored 5 runs tonight, but Sohail and Azam are still out there. Anwar Ali is yet to come as well. We can expect some fireworks from him as well, if required. Omar Associates will be banking on Azam Khan. जी ज़िशान, बिल्कुल, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर ये दोनों बैट्समैन अगले 2 ओवर्स तक स्टे कर गए तो खासा रन्स में इजाफा होगा। Credit should be given to Khalid Latif as well, the captain of AO Hospitals. He is making those regular bowling changes. We saw Khuzaima bin Tanveer bowling from this end previously, and now it's Waleed who has been brought back. कैप्टनसी के साथ साथ फील्ड प्लेसमेंट और जो फील्डिंग है एओ क्लिनिक की, दैट्स आउटस्टैंडिंग। This time it was Azam Khan who was looking to go big over leg side, just hitting it all along the carpet towards deep square leg. Yeah, fielding plays an important role. Usually we see youngsters talking about just batting or bowling, but it's the fielding effort that can also win you games. A good run out, a good catch, or saving 15 or 20 runs in the outfield can turn out to be the deciding factor in a high voltage encounter. A pickup shot on the leg side. It's into the gap, but the ball goes straight to Akhtar, who is standing there at long gone. Absolutely, Zishan. कैप्टनसी भी बहुत अच्छी की है खालिद लतीफ ने, फील्ड प्लेसमेंट्स और जो फील्डिंग फील्डर्स ने की है वो भी आउटस्टैंडिंग रही है। सो दिस हैज बीन अ कंप्लीट पैकेज फ्रॉम एओ क्लिनिक एंड दैट्स व्हाई वी सी के 16th ओवर में 96 for 5 हैं इस वक्त उमर एसोसिएट्स। अगर हम एक बार फिर देखें तो बॉल की कंडीशन से दोनों ही अंपायर मुतमईन नहीं थे और यहाँ पे शायद बॉल में फिर तब्दीली की जाएगी। Zishan, आउटफील्ड खासी डैम्प है बिकॉज ऑफ ड्यू एंड सिंस आपकी क्लाउडलेस स्काई है और आपकी सरफेस कूलिंग जो है बहुत ज्यादा, इसलिए ड्यू फॉर्मेशन जो है वो जल्दी हो जाती है और इस वक्त इन दिस पॉइंट इन टाइम खासी जो है ड्यू पड़ चुकी है और डैम्प है, जिसकी वजह से बॉल जितना ज्यादा ग्राउंड के ऊपर स्किड करेगा उतना ज्यादा जो है वो डैमेज होगा और रिजल्टेंटली आप देख रहे हैं पहले मैच में भी बॉल चेंज हुआ था और अभी भी जो है वो आउट ऑफ शेप हो गया गेम। जी हाँ सर, अगर हम इस मैच की बात की जाए तो ये दूसरी दफा बॉल में तब्दीली की गई है। जब दानिश अजीज भी मौजूद थे वो भी काफी नाखुश थे। तो आई थिंक गिवन द कंडीशंस बिल्कुल ये मसला तो रहेगा और बैट्समैन इसलिए नाखुश होते हैं कि जब बॉलर को एक डी शेप बॉल चेंज होके कदरे नया बॉल उनको मिल जाता है तो उससे उनकी ग्रिप जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, रिजल्टेंटली बैट्समैन जो है वो डिसएडवांटेज पे चला जाता है। कि हाँ, और अब इस नई बॉल का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे वलीद।
इस दफा फ्लैट मारे हैं। और बिल्कुल जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे, बॉलर्स बैक ड्राइव तो नहीं किया, लेकिन बॉलर ने कोशिश भी की। बड़ा फिरोशियस शॉट था और सिर्फ एक रन बन सका। यहाँ भरपूर कुव्वत वाला शॉट था और वलीद का हाथ जरूर लग गया था, और जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लो हो गई थी गेंद, वरना शायद चौका भी यहाँ हासिल कर सकते थे आजम खान। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और बॉलर्स जो उन्होंने बैक ड्राइव किया वो इतना स्पीड से उन्होंने शॉट खेला था कि रिफ्लेक्स एक्शन में भी वो कैच तो दूर की बात, लेकिन कम से कम इतना अच्छा किया कि उन्होंने कम से कम 2 रन जो हैं वो रोक लिया। दफा अच्छी गेंद, बाहरी किनारा लिया, बॉल एक बार फिर जाएगी लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में। अच्छी स्ट्रेटजी है इस वक्त उमर एसोसिएट्स के बैट्समैन की कि वो गेम को डीप लेके जा रहे हैं। डीप से मुराद है कि मेरे ख्याल में 18th ओवर तक शायद सिंगल या डबल से ही वो गुजारा होगा, और मेरे ख्याल में लास्ट 2 ओवर्स में शायद आपको जो है वो फिर जो है याहू शॉट्स की बैटिंग जो है आपको नजर आए। यहाँ टॉस के दौरान भी असद शफीक की हमने गुफ्तगू सुनी थी, और वो यही कह रहे थे कि 140-150 तक कोशिश करेंगे लेके जाएं। एक दफा बड़ी हिट लगाई आजम खान ने, और तमाशाइयों के लिए एक बहुत ही बुलंद उबाला छक्का। गालिबन ये बॉल तो गई है स्टेडियम से बाहर। जी ज़ीशान, ही इज लिविंग अप टू हिज रेपुटेशन। आजम खान वैसे भी मोइन खान अकेडमी की प्रोडक्ट हैं और इस ग्राउंड को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और पिचेस को भी। और ये बॉल जो उनके जोन में आई, और उसके बाद ही डिडंट नीड एनी सेकंड इन्विटेशन, और ये जो उन्होंने शॉट खेला है वो जो पवेलियन है उसकी मेरे ख्याल में टॉप रो के ऊपर जाके गिरा है। बहुत ही लंबा छक्का ये मारा आजम। यहाँ सर आपने सही फरमाया, छत पे जाके ये बॉल लगी है। जैसा आपने पहले भी फरमाया, ये है खान का मैदान, तो आजम खान तो यहाँ के एक एक कंडीशन, एक एक डायमेंशन से जरूर वाकिफ होंगे। लेकिन उसके साथ ट्रेजेडी ये है कि उनको फिर बॉल चेंज करनी पड़ गई, क्योंकि बॉल बाहर चली गई और अब वो फिर एक बॉल चेंज होगी और वो दोबारा बैट्समैन को जो है ये लगेगा। लेकिन कम से कम दिस वाज अ गुड चेंज फॉर द बैट्समैन, क्योंकि नए बॉल के साथ उन्होंने एक जबरदस्त छक्का लगाया और स्कोर बढ़ता हुआ 104 रन, 5 खिलाड़ी आउट, 16 ओवर्स के इख्तिताम पर। This is what the crowd has come to see. Azam Khan hitting those towering sixes. And he's not done yet. He knows it's a semi-final. It's a pressure cooker game. He'll be looking to live up to his expectations tonight. We are witnessing another change in the bowling attack. It's the pacer Khuzaima bin Tanveer who has now been introduced to bowl his final over of the night. And talking about Khuzaima, he has bowled really well. Especially if you look at the opposition, they've got star batters in their lineup, but he managed to pick up that big wicket of Khurram Manzoor. Absolutely, Zishan. And another thing which is going good for the bowler is that they've just had a change of ball, so वो बॉल को ग्रिप अच्छी तरीके से करेंगे. Starts off with a slower one. It's a good change up, because we all know that Sohail Khan is not a regular batter. Because if you can change the pace, you can bowl with your varieties, you can always trouble a batter like Sohail Khan. सोहेल वेट करेंगे जीशान शॉर्ट बॉल को, क्योंकि उनका जो स्टॉक शॉट है वो मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान उस जगह पे वो लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं. सो वेट करेंगे कि अगर खुजैमा जरा चूके और शॉर्ट डिलीवरी मिल गई तो फिर उसके बाद लंबा शॉट देखेंगे आप. Just as you mentioned, he has picked up on the leg side and he has gone a half a dozen. Your prediction was absolutely spot on. जी जीशान, क्योंकि सोहेल के लिए ये इट्स ब्रेड एंड बटर शॉट और बस वो वेट कर रहे थे और उनके जोन में आया और आपने देखा कि लेग स्टंप. सो आइडियली अगर खुजैमा सोहेल को बॉल कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि मिडल भी नहीं बल्कि ऑफ स्टंप, और इवन अगर वाइड बॉल भी होता है तो ऑफ स्टंप पे रखें. वहां पे जो है सोहेल को कुछ परेशानी होगी, वरना अगर मिडल लेग स्टंप पे रखा तो यू कैन एक्सपेक्ट ह्यूज हिट्स. काफी खुशकिस्मत रहे यहाँ पे हमारे कैमरामैन के बॉल जाके उनके सर पे नहीं गिरी. एक बार फिर बड़ी हिट लगाने गए. इस बार बॉल गई है विकेट कीपर के ऊपर से
और एक और छक्का हासिल करने में कामयाब हुए हैं सोहेल खान। जी बिल्कुल, टॉप एज बॉल एक बार फिर शॉर्ट था। इस बार कनेक्शन जो है मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान तो नहीं गया, लेकिन इतना जोर से उन्होंने ये शॉट खेला, टॉप एज लगा और बॉल एक दफा फिर 6 रन के लिए बाहर। सो बैक टू बैक सिक्सेस फ्रॉम सोहेल, और मेरे ख्याल में ये खुजैमा के लिए थोड़ा सा मसला है, और खालिद लतीफ भी उनके पास गए और उनको कुछ समझाया। तो देखें अपनी लाइन जो है वो ठीक करते हैं कि नहीं, क्योंकि मिडिल और लेग स्टंप के ऊपर तो सोहेल जो है वो बिल्कुल इनको बख्शेंगे नहीं। जी हाँ, जब तक ऑफ कटर अटेम्प्ट कर रहे थे तब तक तो ठीक था, क्योंकि यहाँ पे जितना भी तेज करने की कोशिश करेंगे तो बैट से उतनी ही तेज बॉल जाएगी। इस दफा फुल टॉस को लॉन्ग ऑन की जानिब खेले हैं, लेकिन क्या शानदार इनिंग्स खेली है यहाँ पे सोहेल खान ने भी, क्योंकि इनको थोड़ा प्रमोट किया था आज। आजम खान और अनवर अली से ऊपर भेजा गया था, एक वक्त में काफी अच्छा साथ निभाया था कप्तान का, और अब अपनी फुल रेंज ऑफ शॉट्स भी दिखा रहे हैं। टैक्टिकली आई थिंक बहुत ही अच्छा मूव था कि सोहेल खान को उन्होंने आगे भेजा और आजम खान को होल्ड बैक किया, और सोहेल ने असद शफीक के साथ अच्छी पार्टनरशिप में रन्स बनाए, और 21 बॉलों में 35 रन, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। और अब आजम खान के पास एक ब्लैंक चेक है कि वो आकर लंबी हिट्स लगा के जो है वो स्कोर में खातिर खा इजाफा करें। इस वक्त 17वें ओवर में 117 for 5, and I personally feel कि anything above 130 on this wicket would be a challenging total. थोड़ा सा गैम्बल लिया है यहाँ पे खालिद लतीफ ने, क्योंकि थर्ड मैन आउट फाइन लेग को दायरे के अंदर बुला लिया है। इस दफा फिर एक स्लो बॉल, आजम खान जो कि एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन लैक ऑफ पेस से बीट हुए यहाँ पे। जी, इंटेलिजेंट चेंज ऑफ पेस, और खुजैमा ने जो है अपनी लाइन भी ठीक की और स्लो बॉल किया, और आजम खान तैयार नहीं थे, पहले शॉट खेल गए, और इस ओवर में वैसे ऑलरेडी जो टारगेट था वो तो अचीव कर लिया है। 13 रन बन चुके हैं और अभी एक गेंद जो है बाकी। जी हाँ सर, आपने सही फरमाया, 130 से ऊपर भी स्कोर यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलात पैदा कर देगा एओ हॉस्पिटल्स के लिए। इस दफा फुल टॉस बना के लेग साइड पे खेले हैं, बॉल जाएगी सीधा स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथ में। लाल कुमार मौजूद और एक ही रन ले सकेंगे यहाँ पे आजम खान। तो 17 वर्ष के इख्तिताम पे 118 पे 5 उमर एसोसिएट्स। जी, और खासी अच्छी पोजीशन होगी इस वक्त उमर एसोसिएट्स की, कंसिडरिंग के उन्होंने शुरू में ऊपर पहले उनके 4 विकेट्स गिर गए थे, और इस वक्त जो स्कोर है वो मेरे ख्याल में एक चैलेंजिंग टोटल जो है वो कर सकते हैं। अभी भी 3 ओवर्स बाकी हैं, और अगर 3 ओवर्स में अनदर 30-35 रन अगर ऐड हो जाएं तो 150 रन तो मेरे हिसाब से इट शुड बी नॉट जस्ट अ चैलेंजिंग टोटल बल्कि विनिंग स्कोर होगा मेरे हिसाब से। तो जी हाँ, 3 ओवर्स का खेल बाकी है, और अगर यहाँ से रन बॉल भी जाए तो 140 आराम से हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आजम खान मौजूद हैं और जिस तरह की बैटिंग सोहेल खान कर रहे हैं तो कोशिश तो यही होगी कि 150 के ऊपर लेके जाएं, और बहुत ही फाइटिंग टोटल होगा। तो आसान नहीं होगा यहाँ पे एओ हॉस्पिटल्स के लिए, और वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे विकेट्स लें, ताकि विकेट से आपको पता है कि नए बैटर्स पे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है बैटिंग करना, और स्कोरिंग रेट भी कम की जाती है। जी, नए बॉलर हन्नान आए हैं और उनके लिए एक मैसेज होगा कि वो ओवर पिच गेंद ना करें, जरा खींच के करें अपनी लेंथ। इस दफा बाहरी किनारा लिया और विकेट लेने में कामयाब हुए हैं हन्नान। तो एक अच्छा फैसला यहाँ पे खालिद लतीफ का, हन्नान अचकजाई को लेकर आए थे और अपने दूसरे स्पेल की पहली गेंद पे आजम खान की बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। आप नोट करें जीशान, उन्होंने ये बॉल जो है लेंथ शॉट की थी और वाइड ऑफ स्टंप पे की थी, और जिसका हमने पहले ही जो है एक खदशा था कि शायद इस तरह की अगर बॉल आए तो आजम के लिए प्रॉब्लम होगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। कॉट बिहाइंड और सिर्फ 14 रन बना सके, सो एक बड़ा अनटाइमली डिसमिसल इस वक्त उमर एसोसिएट्स का। हाँ सर, ऐसा लग रहा है कि खालिद लतीफ और उनके बॉलर्स आपकी सारे टिप्स, सारी एडवाइस वहां सुन रहे हैं, और जैसा आपने प्रेडिक्ट किया बिल्कुल उसी चैनल में, उसी जोन में बॉल गिराई और एक कामयाबी समेटी, एक खास कामयाबी समेटी। जी, और रिप्लेसमेंट इतनी बुरी नहीं है क्योंकि अनवर अली इस वक्त आए हैं, और जो मैच सिचुएशन है उसमें लास्ट 3 ओवर्स, और जिस तरह आपने कहा था कि अगर रना बॉल भी करें तो 138, 139 जो है वैसे भी स्कोर कर लेंगे। सो मेरे ख्याल में अभी भी
जो फायर पावर है वो बैटिंग की है। और अनवर अली उनके पास टाइम तो नहीं है सेट होने का, लेकिन ये भी आपको पता है कि लेग स्टंप के ऊपर अगर लाइन के ऊपर बॉल करेंगे तो अनवर अली जो है वो भी बहुत लंबे शॉट्स मारते हैं। ये आजम खान के आउट होने का मंजर, बॉल थोड़ा सा खिंचा हुआ किया था, काफी बाउंस भी नहीं मिला और एक अच्छा कैच यहाँ सोहेल खान की तरफ से। अनवर अली 8वें नंबर पे आज बैटिंग करने आए हैं उमर एसोसिएट्स के लिए और अपनी पहले ही गेंद पे खाता खोलेंगे एक सिंगल के साथ। जी डीप मिड ऑफ के ऊपर खेल के आसानी से एक रन बनाया। और अब सोहेल खान, मैं समझता हूँ कि सोहेल खान को थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी क्योंकि अभी भी तकरीबन 2.5 ओवर्स रहते हैं। सो उनको हनान को पहले देखभाल के इस बॉल को देखना होगा, उसके बाद फिर वो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। यहाँ काफी समझदारी से बैटिंग की है सोहेल खान ने और अभी मजीद गुंजाइश है कि कुछ और रन्स बना सकें और एक अच्छा टोटल खड़ा करने में कामयाब हुए अपनी टीम के लिए। जी अभी तक बड़ी सेंसिबल बैटिंग की है और पहला बॉल उन्होंने बड़ा सोच विचार के साथ देखभाल के खेला। तो बड़ी हिट लगाने गए लेग साइड पे, बॉल गई है गैप में और बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ब्यूटीफुल शॉट और लेग स्टंप पे गेंद था और जैसा हम डिस्कस कर रहे थे जीशान कि उनके जोन में बॉल था और उन्हें बल्ला घुमाया और इतने जोर से घुमाया कि कोई चांस नहीं था। डीप मिड विकेट के फील्डर ने कोशिश तो जरूर की लेकिन बॉल की रफ्तार बहुत तेज थी और ये शानदार चौका सोहेल खान की तरफ से। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फास्ट बॉलर हैं तो एग्रेशन होती है, कलाइयों में बहुत जान होती है, तो अगर मिस हिट भी करते हैं तो अमूमन बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है, लेकिन यहाँ गैप काफी अच्छा तलाश किया था सोहेल ने। एब्सोल्युटली 123 फॉर 6। 18th ओवर जो है इस वक्त जारी है, बॉल बाउंड्री के बाहर गया था तो इसलिए गीला हो गया और इस वक्त बॉलर जो है उसको सुखाते हुए इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया है, हवा में खेले हैं, फील्डर है मौजूद और कैच गिरा बैठे। एक आसान सा कैच था वलीद के लिए लेकिन थोड़ा कैजुअल आ गए थे यहाँ पे वलीद। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो फील्डर थे वो भी बहुत कैजुअल थे और बल्कि बैट्समैन तो रिजाइन कर चुके थे कि शायद ये कैच बड़ी आसानी से हो जाएगा क्योंकि काफी देर हवा में रहा और वलीद को बहुत टाइम मिला और वो आके उन्होंने एडजस्ट किया, बॉल के नीचे आया लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैच ड्रॉप हो गया। काफी महंगा साबित हो सकता है ये। अब तक जिस तरह की बैटिंग की है सोहेल खान ने, अगर मजीद 2 ओवर्स तक रुक गए तो काफी डैमेजिंग साबित हो सकता है ये हॉस्पिटल्स के लिए। एक कामयाब ओवर इख्तिताम पजीर हुआ, 18 ओवर्स इख्तिताम पे 124 पे 6 उमर एसोसिएट्स। स्कोर इस वक्त 124 तक तो पहुंच गया है जीशान और अगले 2 ओवर्स में अगर 15 से 20 रन और ऐड हो जाएं तो ये अच्छा टारगेट साबित होगा क्योंकि जिस तरह से कंडीशंस हैं और स्पेशली पिच जो टर्न भी ले रही है तो मेरे अपना ख्याल है कि जो उमर स्पोर्ट्स का इनका बॉलिंग अटैक है वो खासा मजबूत है। फास्ट बॉलर्स भी स्पेशली इनके पास जो स्पिनर है मिस्ट्री स्पिनर उस्मान, वो जो है बड़े हैंडी होंगे इस विकेट के ऊपर। अगर हम उमर एसोसिएट्स की बैटिंग की बात करें तो हमें डॉट बॉल्स भी ज्यादा देखने को मिली हैं और सिंगल्स पे काफी इन्हिसार किया है वो इसलिए क्योंकि असद शफीक काफी हद तक इनिंग्स में क्रीज पे मौजूद थे और हमने देखा कि उन्होंने 6 बाउंड्रीज लगाई और रनिंग बिटवीन द विकेट्स को काफी फोकियत दी और सोहेल खान को भी इसी तरह मैसेज देते गए कि रन्स लेते रहने हैं, स्ट्राइक रोटेट करनी है। आमिर बरोही अब अपने स्पेल का आखिरी ओवर जारी रखने के लिए बॉलिंग मार्क पे आए हैं और काफी अच्छी यॉर्कर्स करने के लिए माने जाते हैं। जी अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने अब तक और 12 रन दे के 2 विकेट्स हासिल किए हैं। सफा यॉर्कर करना चाह रहे थे सोहेल खान ने, स्क्वीज किया, बॉल गई सीधा शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के हाथ में। काफी बर्क रफ्तारी से यहाँ बॉलिंग करते हैं आमिर, तो काफी नुकसानदेह भी हो सकता है अगर आप थर्ड मैन के फील्डर दायरे के अंदर बुला लें। जी जीशान, लेकिन इस वक्त 19वां ओवर स्टार्ट हुआ है और आई थिंक अनवर अली अब अपने शॉट्स जरूर खेलेंगे और आमिर को चाहिए कि वो अपनी अगेन जो लेंथ है वो जरा
शॉर्ट करके और ऑफ स्टंप पे बॉल करें, क्योंकि अगर मिडिल लेग स्टंप पे की तो फिर बड़ा शॉट लगने की जो है उम्मीद कर सकते। स्लैप किया है लॉन्ग ऑफ के फील्डर के जाने, पहला रन तेजी के साथ निकले लेकिन दूसरा रन लेने का कोई मौका नहीं। अच्छी गेंद थी आमिर की और एओ क्लिनिक ने मेरे ख्याल में अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया हुआ है और अनवर अली को ऑफ स्टंप पे शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, यानी थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और वो ड्राइवेबल नहीं थी। रिजल्टेंटली जो है वो अनवर अली डीप मिड ऑफ पे सिर्फ एक रन के लिए खेल पाए। जी हाँ, अनवर अली और सोहेल खान दोनों के लिए ही लेग साइड पे डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि ऑफ स्टंप के बाहर ही बॉल पिच करें। एक और बड़ी हिट लगाई है यहाँ पे सोहेल खान ने, बॉल जाएगी अफनान खान के हाथ में जो कि मौजूद है डीप मिड विकेट पे और एक ही रन मिल पाएगा। जी लकी रहे आमिर के सोहेल का कनेक्शन जरा तगड़ा नहीं लगा, वरना अदरवाइज ये बॉल भी बाउंड्री से बाहर होता। सिर्फ एक रन हासिल कर सके। स्कोर इस वक्त 127 रन, 6 खिलाड़ी आउट और 19वें ओवर का खेल जारी है इस वक्त। जी हाँ, 9 गेंदों का खेल बाकी रह गया है इस सेकंड सेमीफाइनल की पहली इनिंग्स में। कोशिश करेंगे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बाउंड्रीज मिले। इस दफा फ्लैट खेले हैं, शानदार टाइमिंग, अनवर अली की चौका हासिल करेंगे। जी ओवर पिच डिलीवरी थी और जिसका हमें खदशा था और ही डिडंट नीड अ सेकंड इन्विटेशन, उसको ड्राइव किया, बॉलर्स बैक ड्राइव, बहुत ही खूबसूरत शॉट और इतना पावरफुल शॉट था कि मिड ऑफ या डीप मिड ऑन के फील्डर के लिए बिल्कुल चांस नहीं था। दोनों को बाइसेक्ट किया और पलक झपकते गेंद जो है बाउंड्री लाइन क्रॉस करके एक शानदार चौका। यहाँ लेंथ भी परफेक्ट थी, लाइन भी परफेक्ट थी अनवर अली के लिए बड़ी हिट लगाने की और वो बिल्कुल भी नहीं चूके। ऑफ कटर कराए थे, लेग साइड पे खेले हैं अनवर अली। थोड़ी वेरिएशंस यहाँ दिखानी होंगी आमिर को। जी उन्होंने इस वक्त स्लो डिलीवरी की थी और रिजल्टेंटली जो है वो अनवर अली सिर्फ एक रन हासिल कर सके और ये ओवर थ्रो हुआ। मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं थी कि वो विकेट्स के ऊपर जो है वो बॉल फेंकते, लेकिन रिजल्टेंटली एक रन और हासिल हुआ उमर एसोसिएट्स को 133 फॉर 6। सोहेल खान के पास थ्रो आई थी और उन्होंने बॉलिंग एंड पे थ्रो करके रन आउट करने की कोशिश की थी और इसी कोशिश राहेगा गई क्योंकि एक और रन यहां हासिल किया। फुल टॉस, स्ट्रेट खेले हैं, लॉन्ग ऑन, कैच लेने में कामयाब हुए हैं। एक शानदार कैच यहां खुजैमा बिन तनवीर की जानिब से और इसी तरह अनवर अली को अब पवेलियन में वापस जाना होगा। जी अनवर अली एक ऊंचा शॉट खेलते हुए आउट हुए। 133 रन पे ये 7वीं विकेट गिर गई है और अभी भी 19वें ओवर की एक गेंद बाकी है। मेरे ख्याल में एक अच्छा चैलेंजिंग टोटल तो हो गया। ये देखना होगा कि आखिरी जो एक ओवर या 7 डिलीवरीज हैं उसमें कितने रन बना पाते हैं उमर एसोसिएट्स। मैं खुद नोइंग द पिच, नोइंग द ग्राउंड, ये समझता हूं कि ऑलरेडी ये चैलेंजिंग टारगेट है और एनीथिंग अबव 140 वुड बी मोर लेस अ विनिंग स्कोर। जी हाँ, अगर हम उमर एसोसिएट्स की इनिंग्स की बात करें तो 10 ओवर्स में सिर्फ 53 ही रन बना सके थे और अगर अब हम उनके स्कोर की बात करें तो काफी अच्छा कमबैक है, काफी अच्छी फाइट बैक दिखाई है। और आज हमने देखा फिर से कप्तान असद शफीक ने फ्रंट से लीड किया, निफ सेंचुरी मुकम्मल करी, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी उमर एसोसिएट्स को, जिसकी बदौलत काफी अच्छे मुस्तहकम पोजीशन पे मौजूद है। अभी भी 6 बॉलों का गेंद खेल बाकी रह गया है। आरिश अली खान आए हैं आने वाले बैटर। जी आखिरी गेंद पे अनवर अली आउट हुए थे। 19 ओवर के इख्तिताम पे इस वक्त स्कोर 133 रन, 7 खिलाड़ी आउट, आखिरी ओवर है और बैट्समैन जो फेस कर रहे हैं सोहेल खान। देखते हैं कि उमर एसोसिएट्स कितना इजाफा कर पाते हैं इन 6 बाकी मानदा गेंदों पर। हनान अचकजई इनिंग्स का आखिरी ओवर कराएंगे। एक दफा फिर अंदरूनी किनारा लिया और डॉट बॉल। जिशान आपने देखा कि शॉर्ट ऑफ लेंथ यानी अपनी जो लेंथ है उसको शॉर्ट किया हुआ है। रिजल्टेंटली वो जोन में ओवर पिच बॉल नहीं कर रहे, सोहेल को चांस नहीं दे रहे एक बड़ी हिट लगाने के लिए। इस बार डीप मिड विकेट खेले हैं, कैप निकालने में कामयाब हुए हैं सोहेल खान और 2 रन हासिल करेंगे।
काफी मुश्किल हो जाता है स्पिनर्स के लिए, एक तो इनिंग्स का आखिरी ओवर कराना और ऊपर से सोहेल खान जैसे बैटर मौजूद, और मुश्किल भी हो रहा है यहाँ पे बॉल को ग्रिप करना। एब्सोल्युटली 2 रन हासिल किए सोहेल ने, 135 रन, 7 खिलाड़ी आउट। इस दफा फुल टॉस को ऑफ साइड की जानिब खेले हैं, कवर के ऊपर जाके बॉल लैंड की और 2 रन का मजीद इजाफा। ये रन काफी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं एओ हॉस्पिटल्स के। जी, दीज आर बोनस रन, और मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सोहेल के लिए कि इस फुल टॉस को जो है वो कन्वर्ट करते चौके या छक्के में, लेकिन टाइम नहीं कर सके बॉल को। सोहेल खान जो कि काफी वक्त गुजार चुके हैं क्रीज पे, अब भी अगर आप देखें तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स की भी अगर हम बात करें तो काफी तारीफ करनी पड़ेगी सोहेल खान की। यूजुअली फास्ट बॉलर है, काफी स्टैमिना होता है। जी बिल्कुल, और कंडीशंस खासी एनर्जी सैपिंग है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए बैट्समैन जो हैं वो प्रिस्पायर भी बहुत करते हैं। जफा स्ट्रेट खेले हैं, लॉन्ग ऑन के फील्डर है मौजूद, लेकिन एक ठप्पा खाने के बाद बॉल जाएगी अख्तर के हाथ में। कोशिश तो यहाँ भरपूर कर रहे हैं सोहेल खान के बाउंड्री हासिल करें, लेकिन वो लेंथ नहीं मिल रही है इनको, काफी खिंची हुई गेंद कर रहे हैं हनान। जी थोड़ा सा चांस तो उन्होंने क्रिएट किया था, लेकिन अगेन अच्छी इंटेलिजेंट बॉलिंग करते हुए और सिर्फ 1 रन का इजाफा। स्कोर जो है वो बढ़ता हुआ 140 के करीब, और जीशान जो हम अंदाजा लगा रहे थे कि ये एक अच्छा टोटल जो है वो उमर एसोसिएट बनाने में कामयाब हो गए। आरिश अली जो कि अपनी पहली ही गेंद का सामना कर रहे थे, बीट हुए आउटसाइड द ऑफ स्टंप। बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ हनान अचकज़ई की जानिब से, सिर्फ 5 ही रन दिए हैं और कोशिश करेंगे कि एक और डॉट बॉल या विकेट के साथ इख्तिताम करें। कदमों का इस्तेमाल किया, अंदरूनी किनारा लिया, काफी फाइन गई है। लाल कुमार है मौजूद, शॉर्ट फाइन लेग पे, रन आउट होने का खतरा, और जी हाँ इसी तरह आरिश अली अपनी विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन 1 रन का इजाफा हो जाएगा इनिंग्स की आखिरी गेंद पे। जी बहुत ही जबरदस्त हन्नान ने आखिरी ओवर किया, और उन्होंने बैट्समैन को ज्यादा चांस नहीं दिया कि वो लंबे और बड़े शॉट्स मारें, और उमर एसोसिएट्स की इनिंग जो है 139 रन 7 खिलाड़ी आउट पे इख्तिताम पजीर हुई। अच्छा टोटल है, चैलेंजिंग टोटल है, और अब ये देखना होगा कि एओ क्लिनिक के बैट्समैन किस तरह से अपनी बैटिंग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो अपनी विकेट्स मेंटेन करेंगे तो अपने लिए चांस क्रिएट करेंगे इस टोटल को चेज करने में। सो आई पर्सनली फील कि इनिशियल जो 10 ओवर्स हैं उसमें उनको अपने रन बॉल भी अगर करते रहें तो बहुत सिक्योर होंगे, और इनको बड़ा सोच विचार करके बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि विकेट इतना इजी नहीं खेल रही। इट्स अ डिफिकल्ट पिच टू बैट। सो मेरे ख्याल में अगर आप शुरू में अपनी विकेट्स प्रिजर्व करेंगे जीशान, तो यू वुड बी इन विद अ चांस। जी सर, जो बातें आपने अभी कही, खालिद लतीफ भी अभी अपनी टीम को यही मैसेज दे रहे होंगे कि इतना आसान नहीं होगा। हालांकि 140 रन का ही हदफ है, लेकिन कंडीशंस काफी चैलेंजिंग है, काफी डिमांडिंग है, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छा स्टार्ट तो मैच में वापस लेके आ सकता है। अमाद आलम ने इस तरह पहले ओवर में अपनी विकेट गंवाई, और खुर्रम मंजूर भी आज कुछ खातिर ख्वाह रन नहीं बना सके। अमाद आलम जिनके पास एक मौका था, लेकिन एक अक्रॉस द लाइन शॉट खेलने गए और आमिर ब्रोही की गेंद पे बोल्ड हुए। उसके बाद आए कप्तान असद शफीक, और क्या अच्छी इनिंग्स खेली इन्होंने। 54 रन की इनिंग्स खेली, कप्तान थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। दानिश अजीज कदमों का इस्तेमाल किए, स्टंप हुए। असद शफीक थोड़ा सा क्लेवरली स्वीप खेलना चाह रहे थे, और सोहेल खान जिनको थोड़ा प्रमोट किया था आज, काफी अच्छी बैटिंग की। आजम खान सिर्फ 14 रन बना के आउट है हनान अचकज़ई की गेंद पे। सोहेल खान, अनवर अली भी आके कुछ झलकियां दिखाएंगे कितनी एग्रेशन है उनमें। एक फुल टॉस को फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलना चाह रहे थे, लेकिन कैच आउट हुए खुजैमा के हाथों। और इसी तरह इनिंग्स की आखिरी गेंद पे आशिर अली जो कि 2 रन देना चाह रहे थे, लेकिन दूसरे रन के लिए वापसी में आते हुए रन आउट हुए। एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस, सिर्फ 139 रन तक ही महदूद रखा उमर एसोसिएट्स को। चलेंगे इस वक्त साइडलाइंस में, जहां पे मौजूद है मुजम्मिल। सेकंड सेमीफाइनल में उमर एसोसिएट्स के लिए मसीहा का किरदार अदा किया उनके कप्तान असद शफीक ने। 54 रन की शानदार इनिंग खेली। असद मुश्किल था, 3 विकेट्स डाउन थे, कैसा प्रेशर था पिच पर? जी ऑब्वियसली जिस तरह आपने बोला 3 आउट हो गए थे, तो किसी भी टीम के अगर सर्किल में फर्स्ट 3 ओवर 3-4 ओवर में 3 आउट हो जाए तो प्रेशर बिल्ड हो जाता है, क्योंकि फिर आपके जो है ओपनर्स जो है स्ट्राइकर्स होते हैं, तो वो आप जो है उसका एडवांटेज खो देते हैं।
लेकिन वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि वहाँ पे पार्टनरशिप लगी है, एक मेरी दानिश की फिर मेरी सोहेल की, तो 140 मेरा ख्याल है इस विकेट पे रिस्पेक्टेबल टोटल है और हमारी बॉलिंग जिस तरह है हम इसको डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक सरप्राइजिंग मूव देखा, सोहेल खान को ऊपर प्रमोट किया बैटिंग में, तो खुद ये डिसीजन लिया या मैनेजमेंट का था? नहीं, ये मैनेजमेंट का, क्योंकि मैं तो बैटिंग कर रहा था, लेकिन सोहेल पहले भी बहुत दफ़ा इस तरह हो चुका है कि उसको प्रमोट किया क्योंकि अच्छी बैटिंग करता है। वी ऑल नो, क्योंकि हम उसके साथ ही खेलते हैं सिंध में, और हमें पता है उसकी एबिलिटी का कि वो बड़ी हिटें भी मार सकता है और जब टीम को ज़रूरत हो तो सिंगल्स भी कर सकता है। मैनेजमेंट का आप पे बड़ा भरोसा है और यंगस्टर जो डगआउट में बैठेंगे यकीनी तौर पे उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला होगा आपके इस नॉक से। देखिए, आई होप कि जो है वो, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जब भी खेलूं टीम के लिए खेलूं। आज टीम को रिक्वायरमेंट थी कि मैं वहाँ पे खड़ा रहूं, थोड़ी बड़ी जो है वो मैच को लंबा लेके जाऊं, थोड़ी बड़ी इनिंग खेलूं, तो यही कोशिश कर रहा था क्योंकि हमारे ऊपर से आउट हो गए थे। तो मेरा यही माइंड में था कि अगर हमारे पास नीचे आजम और अनवर, सोहेल इस तरह के बैट्समैन थे कि अगर हम लोग डीप लेके जाएंगे आखिर में तो हिटें लगेंगी और हम लोग अराउंड 150 कर सकते हैं। तो वही हुआ, 10 रन मुझे लगता है शॉर्ट है, लेकिन स्टिल वी गॉट इनफ रन्स। आपने कहा 10 रन शॉर्ट है, 140 बोर्ड पर है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी क्योंकि अगला फाइनल खेलना है? देखें, कोशिश हम यही होगी हमारी कि हम अटैकिंग खेलें, क्योंकि हम विकेट्स के लिए जाएंगे। विकेट्स अगर हमें मिलेंगी तो ही हम गेम में रहेंगे, क्योंकि जो है 2020 में एक पार्टनरशिप जो है आपको बहुत हर्ट करती है, तो कोशिश करेंगे कि रेगुलर इंटरवल से विकेट लेते रहें। चलिए, विश यू गुड लक। उमर एसोसिएट्स के कप्तान डिफेंड करने जा रहे हैं। बैक टू कमेंट्री बॉक्स। Thank you so much, Mujammal. He was having discussion with the captain of Omar Associates, who played a brilliant knock tonight, 54 of 45, and he was supported really well by Sohail Khan as well. Remember, he was promoted up the order ahead of Azam Khan and Anwar Ali, and what an innings he played, 47 of just 30 deliveries. Talking about the bowling effort, Amir being impressive yet again, picking up 3 wickets for 21 runs and a wicket apiece to Huzaima, Waleed, Hanan and Lal Kumar. It was surprising to see that Afnan Khan just bowled 2 overs in the innings, but it's all over now. Omar Associates finishing on 139 means AO Hospitals will be needing 140 runs in their allotted 20 overs to book their place in the final of this Maple Leaf HD Putty 8 Corporate T20 Cup powered by Parkview City. We'll take a short commercial break, and after that we'll be right back with the run chase. Outside edge it is! What a start this on Ahmed Mirohi, a wonderful delivery. Knocked him over! Cover, another boundary for us at Shafiq. Knocked him over! का सवाल किया और स्टंप हो जाएंगे यहाँ पे दानिश अजीज। मुश्ताक अहमद ने 144 वनडे मैचेस की 142 इनिंग्स में 33.29 की औसत से 161 विकेटें हासिल की, जिसमें 3 बार इनिंग्स में 4 विकेट और 1 बार मैच में 5 विकेटें हासिल करने का एजाज शामिल है। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्कव्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे जीत के जियो। 1974 का दौरा इंग्लैंड, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम का मैदान, पहला एक रोजा मैच। इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। मुकर्रर करदा 50 ओवर्स में इंग्लैंड के 4 विकेटों के नुकसान पर 244 रन, डेविड लॉयड की 116 रन की शानदार इनिंग। पाकिस्तान की जानिब से सरफराज नवाज, आसिफ इकबाल और इंतखाब आलम की एक विकेट। 244 रन का हदफ पाकिस्तान ने 42.5 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।
ओपनर माजिद खान की शानदार सेंचुरी, इंग्लैंड की जानिब से बॉब विलिस और पीटर लीवर की एक विकेट, पाकिस्तान की मैच में 7 विकेटों से फतह। वनडे क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान की ये पहली फतह थी। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे, जीत के जियो। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे, जीत के जियो। मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस है, आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा, कि इस प्राइड को जो डैमेज करे उसको दोबारा ये प्राइड नहीं मिलनी चाहिए। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। प्रेशर कितना था आपके ऊपर जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई और आपने रिपोर्ट देखी होगी, तो आप पे फोन तो आए होंगे आपके पास कि ना करें जनरल साहब? कभी नहीं। जनरल साहब कभी नहीं। आपको कोई पसंदीदा प्लेयर था? कभी नहीं। यार बड़ा अफसोस हुआ। आप कभी नहीं। हमने पास्ट में कोई एग्जाम्पल सेट की ही नहीं है। जो मैं बात हमेशा से करता रहा हूँ कि हमने पास्ट में पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, हमने कोई एग्जाम्पल ही सेट नहीं की, तो ये चीजें होती रहेंगी। दिल कितनी बार टूटा अब तो मैंने शायद वो काउंट करना मुश्किल होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब अनाउंस हुआ और नाम नहीं है था तो फिर तो जाहिर बात है हर बंदा डिसअपॉइंट होता है, चाहे मैं हो कोई भी हो। जब वो उम्मीद रखता है और वो पूरा नहीं होता तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे, जीत के जियो। 1982 में श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान, नेशनल स्टेडियम कराची, पहला एक रोजा मैच। पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। श्रीलंकन टीम के मुकर्रर करदा 40 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 171 रन। कप्तान बंदूला वारनापुरा 77 रन के साथ नुमाया स्कोरर। पाकिस्तान की जानिब से ताहिर नक्काश, इकबाल कासिम और जलालुद्दीन की एक विकेट। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 29.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। मोहसिन हसन खान की 85 रन की शानदार इनिंग्स। श्रीलंका के रवि रत्नायके की 1 विकेट। पाकिस्तान ने
ये मैच 8 विकेटों से जीत लिया। ये नेशनल स्टेडियम कराची में एक रोजा मैचों की तारीख में पाकिस्तान की पहली फतह थी। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एल्टीपट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे, जीत के जियो। 1982 में श्रीलंका का दौरा है पाकिस्तान, नेशनल स्टेडियम कराची, पहला एक रोजा मैच। पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। श्रीलंकन टीम के मुकर्रर करदा 40 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 171 रन। कप्तान बंदूला वारनापुरा 77 रन के साथ नुमाया स्कोरर। पाकिस्तान की जानिब से ताहिर नक्काश, इकबाल कासिम और जलालुद्दीन की एक विकेट। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 29.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। मोहसिन हसन खान की 85 रन की शानदार इनिंग्स। श्रीलंका के रवि रत्नायके की 1 विकेट। पाकिस्तान ने ये मैच 8 विकेटों से जीत लिया। ये नेशनल स्टेडियम कराची में एक रोजा मैचों की तारीख में पाकिस्तान की पहली फतह थी। Welcome back once again to DHS Sports Club Moin Khan Academy, where it's game on. It's the second semi-final of the day being played between Omar Associates and AO Hospitals. Omar Associates were invited to bat first, and they placed a target of 140 runs for AO Hospitals. They would have to play out of their skins to chase this down, because Omar Associates have a very, very good bowling attack comprising of bowlers like Sohail Khan, Usman Tariq and Arshad Wazir. Well, I expect this to be a cracker of a game. I expect this game to stretch down till the last over, because 140 runs, yes, they've got a very good bowling attack. Arshad Wazir, Anwar Ali, Sohail Khan, Arish Ali himself. But on the other hand, they have got very good batters as well. Sohail Khan, Zakir Malik, Khalid Latif, the captain himself, Akhtar, who has been in very good touch. And the target, if you look at it, it's not a big one, just 140 runs. They just need to score at 7 runs and over. But after looking at the conditions in the first innings, I don't think it's going to be easy for AO Hospital to chase it down. None of the Omar Associates batters found it easy to score on this pitch. The Pacers were getting a lot of seam and swing. So you can expect Sohail Khan to get some as well. He seemed a little tired when he was batting. He was promoted up the order, played a more than decent knock. Well, yeah, he was promoted up the order, and usually we expected him to hit away a few boundaries, but even he was finding it difficult, and he ran very well between the wickets, so obviously he'll be finding it difficult. Sohail Khan is going to be opening the batting yet again for AO Hospitals. And if we talk about his partner at the other end, Zakir Malik, well, he's a very dynamic batter, Zakir Malik. So far he has not been able to showcase what he's capable of, but as we have mentioned it before, tonight is the opportunity. Exactly, Zishan. There is so much potential in this AO Hospitals batting lineup, but they haven't gotten going. They've settled in, but given away their wickets. Sohail Khan will be starting the proceedings for Omar Associates here. Sohail Khan, on the other hand, after doing the bulk of the job with the bat, he was the second highest scorer, scoring 47 runs tonight, and he stayed not out. Now he'll be looking to pick up few wickets early on in this run chase. He managed to snatch a couple of wickets here. He will be the top candidate for the man of the match. Only Asad Shafiq did better than him. Yeah, and we saw some movement for Amir Brohi with the new ball in the first innings, so some encouraging signs already for Sohail Khan. He will definitely be looking to move the ball away from the right-hander Sohail Khan, and he has taken a fielder at first slip as well. We are all set for the ball one in this run chase of second semi-final. Outside edge, it has gone fine, and that's going to go for 4.
Just we mentioned that Suhail Khan will be looking to move that ball away from the right-hander. He did that. But unluckily, the fielder at third man was inside. Suhail Khan bowling to Suhail Khan. Okay then. Another slip maybe? For sure. I won't even mind a fielder at gully position. I mean, if you don't have one of the slip for Suhail Khan, who would you have it for? Yeah, true that. Still no changes in the field though. So you see, a very open onside field. There is a fielder at deep square leg and no fielder at fine. Good ball. Much better. Much closer to the stumps and then moving away from the right-hander. Surely Asad Shafiq would be thinking of another slip here. The first slip has gone a little wider and third man has been brought in a little finer. Well, a fun fact between these two Suhail Khans, both these players, Suhail Khan Senior and Suhail Khan Junior, were part of a same squad in that recently concluded Ramadan night tournament. So obviously they must have faced each other so many times in the nets. Once again playing it away from his body. Past that fielder at third man. The fielder at deep back with a point. Anwar Ali cuts that one off. But another couple. Suhail Khan always wanted two there. When he reached the non-striker end, you could hear him say, Rasha, Rasha, Rasha. Well, I am alien to any other language apart from Urdu and English, Danish. Rasha, Rasha, Rasha means chalo, chalo, chalo. Maybe it's a code language, so that others cannot understand. Suhail Khan and Anwar Ali definitely can. Six runs already on the board. This time the ball came back in. It has gone fine, and that's going to go for yet another boundaries. Leg by signal by the on-field umpire, but they all count. So much movement there for Suhail Khan. He's not at all happy with himself. Just drifting down leg. The idea was right. He wanted to bring back one in. Suhail Khan read the movement brilliantly there. As you mentioned, they played in the same squad. So he knows all the tricks that Suhail Khan has up his short sleeves. Yeah, the idea was right to bring the ball back in, but the length wasn't that good. It was slightly shorter and the ball was drifting onto the pads. He still hasn't taken any fielder at fine leg. Good ball, wrapped on the pads. But the umpire is unmoved. Too much movement there for Suhail Khan. Probably that saved Suhail. It hit his back leg, but I think it was a little too high and maybe drifting down the leg side. It did not hit him that high. Suhail playing mind games with the umpire there. Well, the umpires won't risk any doughty decision, especially after the way we saw Omar Akmal being judged out. That's in the past now. 10 already off the over. Good ball! How close was that ball to the off stump? Suhail Khan completely beaten. All ends up there. Look at the movement. He had already given up. He thought the ball might crash onto his stumps. Excellent take by Azam Khan behind the stumps as well. Proper peach there from Suhail Khan. After one, it's 10 without loss. Now this is going to be very interesting. We all know Arshad Wazir is very quick. Can he control the movement here? There has been swing throughout the day today. All the pacers have managed to swing the ball quite a lot. Arshad Wazir left arm fast. Inside edge. Both these batters are living dangerously so far.
Is it AO Hospital's day today? Clearly seems like. Got his bat down very late, and that would have easily chopped onto his leg stump. Oh my goodness, it doesn't get closer than that. Zakir Malik had no idea whatsoever what to do with that. So far, Arshad Wazir has been on top of his game in this tournament. What should we expect from Zakir Malik? Once again, a loose shot outside the off stump. Arshad Wazir is appealing for something. That ball was miles away from the bat. There was a sound, probably gloves brushing against each other. Zakir Malik needs to calm down a bit, but this is how he plays. He plays his shots, goes for runs. He just swung too hard at that. Zakir Malik. He has been getting starts in this tournament, Zakir Malik, but he has not been able to continue. Will it be his night tonight? Can AO Hospitals manage an upset here? Opening the face of the bat, running it down towards third man, getting off the mark with that single. A little cautious after that rush of blood. Zakir Malik getting off the mark. Selection. PHA Sports Club मोइन खान अकेडमी यहाँ हमारी वेटरन्स बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह. यही वजह है कि हम. Well, he has taken a fielder at deep square leg and a fielder at third man. I won't be surprised if he might attempt a bouncer, asking the batter to go for that hook shot. Fuller in length, again going for that big booming drive outside the off stump. Sohail Khan, he'll have to be a little careful here. The ball is nipping. There is some movement here. Took his front leg too much out of the leg stump, and he was looking to crash it on the offside. Arshad Wazir is not getting the same movement Sohail Khan was. I think the difference is the action. Arshad Wazir has got a high arm action, whereas Sohail Khan has got that slingy action. Sliced it. Chance for mid-off. And taken by Asad Shafiq, the skipper. Asad Shafiq will take those in his sleep as well. He's got safe hands. The first one for Arshad. We were mentioning it before, they need to bat sensibly here. You had already got few runs in the first 2 overs. Did he need to go for that shot, Sohail? We have been mentioning it before that Arshad Wazir has got pace. Just timed the ball well. Goes back after scoring just 6 tonight. Sohail Khan, it's 11 for 1. As we were talking earlier, Zishan, having potential is one thing, but executing and having the right frame of mind is another. You've got to think about staying on the crease. Asad Shafiq showed so much maturity today, the way he stayed on the wicket, played classical cricketing shots, and he was pretty good with his striking rate as well. Hanan Achakzai coming into bat. Yeah, Sohail Khan was behind the stumps throughout the innings, so he must have had a clear idea how the pitch is going to behave. And he saw Asad Shafiq, the way he batted, the way he took his time, the way he stayed there at the crease. It was nothing short in the end. He was looking to hit it over extra cover, just slicing it in the end, and Asad Shafiq finishing the job. So once again, a good start from Arshad Wazir, getting a wicket in his very first over. Pick up shot on the legs. Oh, Ramadan. How's that for confidence? It's not going to go past the boundary ropes. And they're coming back for the third run. Chance for an out? No. That is brilliant running between the wickets from Hanan and Zakir. Pushing all the way through. That was some confidence by Hanan. This guy is serious talent. Bowls 4 for his team. Comes into bat at number 3. Plays a shot like that. What else can you ask for?
Yeah, he has been promoted up the order tonight. Khalid Latif is still out in the dugout. Asad Shafiq running after the ball, and Anana Chakzai completing 2 runs there. The over was ended with a couple. After 2, it's 13 for 1. Sohail Khan's first over is still playing in my mind. What can he do here? Once again, the ball tailing into the right-hander. Too much movement for Zakir Malik inside the crease, though. I don't think he needs to do that. Just stay still at the crease. Sohail Khan is moving the ball both ways here. Just play the ball on its merit. There you see, moving away from the line of off stump and then getting into an awkward position while playing that stroke. Sohail Khan is one of those bowlers you can't slog against. You've got to play proper cricketing shots against him, especially when he is moving the ball and feeling good. He's riding high on his innings of 47. Well, he worked really hard for those runs, and he's going to make them hard to get those runs. Good ball. This time coming into the left-hander. The throw is at the wicket keeper's end, and could have been tight. We need to check the stump cam here. It might have died. That was a really hard throw. But how about Hannan's confidence? He charged Sohail Khan and then made sure he was balanced when he was striking the ball. Just missed the stumps there. Well, it was Mohammad Nafi there. He's a gun fielder. As soon as he sends an opportunity for a run out, he was quick to pounce on it. Couldn't hit the stumps though. Once again, hitting the back leg. It looked close. Zakir Malik should consider himself extremely lucky here. Probably the height saved him there. A touch high, maybe. But it was definitely in line of the stumps. Absolutely right, Danish. The ball just hitting above the knee roll there. But he's living really dangerously here so far, Zakir Malik. On the other hand, Sohail Khan has been so unlucky not to have gotten a wicket already. He's bowled some mind-blowing deliveries till now. Yeah, his spell doesn't suggest so far, but he has bowled exceptionally well. Any other day, he could have picked up 2 or 3 wickets by now. Surely. Change in fielding. Cover heading to fine leg. Nafi taking charge at cover position. Can be a bluff as well. This time he was looking to give himself room there, Zakir Malik. Hitting it straight towards Nafi at extra cover. Sohail Khan would be very unlucky if he does not take a wicket in this spell. Everything working for him here. Zakir Malik playing unconventional shots. The ball moving around all over the place. Well, he was not happy with that bowling effort where he gave away 2 boundaries in that first over. Coming back really well now, Sohail Khan. Can he get one through the defense of Zakir Malik? Outside edge. It has gone fine, and that's going to go past the boundary ropes. You got to feel for Sohail Khan here. That is so unfortunate for Sohail Khan. Zakir Malik playing at it really hard, getting the outside edge. Yeah, he's proving his point. It usually, hits different when you are facing an international cricketer and you are trying to get on top of them. Well, he's trying his level best. But so far, I think it's Sohail Khan who is winning the battle. We haven't seen a proper cricketing stroke so far from Zakir Malik. You'd hardly see that from Zakir Malik because this is how he plays. Slower one on the offside, and that has not been taken.
It was in the gap. He was diving away towards his left, and it stayed in the air for quite a bit of time, and it was Khurram Manzoor there. I'd rather have Nafi there. Usually your best fielder is at point or gully. Well, I'm happy with Anwar Ali being at gully. It's 20 for 1 after 3. Well, it was a good option from Sohail Khan because he was looking at Zakir Malik, always giving himself room, so he tried a slower one outside the off stump, and Zakir Malik was clearly beaten by the lack of pace. So, the mic being checked by our own technical doctor. Took a beating courtesy of that throw from Khwaja Nafi. You might have to buy them a new one. Well, we can make our own stump cams. So, yeah, I think we're covered. Meanwhile, it's Arshad Wazir continuing with his second over. Well, this is what happens in the game of cricket when someone is bowling really well from one end, like Sohail Khan is. That's how Zakir Malik got a lifeline. It was too far away from Khurram Manzoor. Yeah, he tried his level best. He was almost diving in the air, looking to take that catch, but still the ball just going out of his reach. Can we see a firing Yorker from Arshad Wazir to the left-hander? Outside edge again, that has gone fine, and that's going to go for yet another boundary. Well, they are hitting straight, but behind the wicket keeper. No slip for Arshad Wazir, probably because he's not getting too much swing here, but slip would have had a chance there. I think it was a deliberate shot in the end from Anand Ajagzai. He just played it with soft hands, played it down. And the pace at which Arshad Wazir is operating so far, there was no chance for the fielder at third man to cut that one off. And now they have listened to you. Khurram Manzoor has now been brought in the first slip. You've got to do that. You've got to apply pressure and not let Hanan score runs freely. Again charging down the track, this time beaten all ends up. Arshad Wazir didn't enjoy that is for sure. I'm sure they're speaking in Pashto at the moment. Yeah, a few words were clearly exchanged between Hanan and Arshad Wazir. That's good. I like it. That is what cricket is all about, as long as it stays within limits. That's just going to pump Arshad Wazir even more. All in good spirit, for sure. Well, he asked Hanan whether he saw the ball or not. A pickup shot. It's up in the air. Asa Shafiq, or the bowler himself. Arshad Wazir has taken it. He's pumped up. Battle won there by Arshad Wazir. Good piece of bowling. Kept it within the stumps. Invited Hanan to play that big stroke because of that heated discussion on the previous delivery. Hanan was always going to go for it. Yeah, he was just stuck inside his crease. He was just looking to use his hands, his wrist power to play that stroke. There might have been a slight confusion there between the bowler and the captain himself, but Arshad Wazir called for it, took it over his shoulders, and finally won the battle. Hanan Ajagzai walking back after scoring 7. It's 25 for 2. The fact that Arshad Wazir took that catch himself made it even more special that he caught his man. It was a good one running back, Zishan. It went quite high. Yeah, he was getting pumped up. He wanted that wicket and now he has got it. Well, he deserved that wicket as well, Arshad Wazir.
Another left-handed batter, Arif Khan, coming into bat at number 4. So no signs of Akhtar or the captain Khalid Latif yet. It's surprising to see Khalid Latif holding himself back, just like it was surprising to see Sohail Khan being sent up the order ahead of Azam Khan and Anwar Ali as well. Although Arif Khan has played a few decent knocks for his team. In fact, he played some match-winning knocks for his team as well. Just look at that aggression in his eyes, Arshad Wazir. He's surely a one to look out for. Nicely bowled. Although he's not getting that movement in the air, but he's still bowling in those tight lines, Arshad Wazir. And as a result, he has gotten 2 wickets. He is bowling at a good pace though. As if a pacer keeps getting wickets, he keeps getting more and more pumped up. These pacers are very, very greedy. Yeah, it's an achievement itself, because usually we have seen the pitches favouring the spinners, but it's the pacer who's making the ball talk. Another fuller length delivery. He was interested in that single, but Zakir Malik sending his partner back. Asif Shafiq testing Azam Khan there. After 4, it's 25 for 2. $25 for 2 after 4. 115 more runs required by AO Hospitals. They've got 96 balls remaining, 8 wickets in hand. Sohail Khan has been given 1 more over. I think that's the right thing to do, because 1 or 2 wickets here for Sohail Khan will push AO Hospitals further on the back foot. Slower one. Playing it on the onside. The throw is at the bowler's end, but Zakir Malik will get there. That was good backing by Mohammad Nafi. Overran the ball there. Took a diving effort in reverse to stop that one. Yeah, he's a very good fielder now, as we have mentioned it time and time again. Usman Tariq throwing the ball. Urra Manzoor was clearly not able to stop it, and look at that slide from Nafi. That's what we are mentioning, that as a batter, if you have not scored runs in the first innings, you can still make your presence felt during the fielding. Good ball. Just shaving away from the left-hander. And he's making the ball talk at will. And if Sohail Khan starts bowling like that, it's going to be a nightmare for any batter in the world. And Khalid Latif is now padded up. He might be coming in next. On his right, it's Sohail Khan, who was the first batter to be dismissed. Akhtar is padded up as well behind him. Sohail Khan making some adjustments to the field. The square leg fielder has been asked to move much more finer now. Sohail Khan cheated Arif there. He indicated that he's going to be bowling a short ball by managing that fielder at square leg, and then pitched it in line within the stumps. Yeah, he's playing with the minds of the batters here, Sohail Khan. And he can do that. He's got all the experience. How unlucky he has been. How many times we have seen the batters edging the ball, going down to the boundary. But as a captain, I take the spell any day defending 140 if you're in the 3rd over and giving away just 13 runs. Outside edge, and that has been taken. Come on! It was always on the card. He deserved that wicket, Sohail Khan. And Arif Khan has been asked to walk back to the pavilion without troubling the scorers. That was a beauty of a ball. This is exceptional bowling from the very experienced test fast bowler Sohail Khan. Oh, getting movement in his 3rd over. Pitching on the leg stump, leaving Arif Khan slightly. Did not get too much swing there. And Arif Khan walking back without troubling the scorers. He faced 5 deliveries without scoring a run. It's 26 for 3.
Once again, we are witnessing the side batting second, losing the plot here. 3 wickets have gone down very early for AO Hospitals in this chase of 140 runs. Still no sign of Khalid Latif. This is interesting. It's surprising to see that he is holding himself back, Khalid Latif. He has sent Akhtar in to bat at number 5 now. Considering the amount of swing Sohail Khan is getting, I don't blame him. Well, he's the captain. He has all the experience in the world. The team needs him out there at this moment. Mohammad Akhtar is he coming into bat at number 5. That's how Arif Khan lost his wicket. The ball pitched on leg stump, completely squared him up, and a very good take by Khurram Manzoor at first slip. Coming down the track on the very first ball. How is that for experience? Just picking up a single there. Akhtar just trying to negate the swing that Sohail Khan is getting. I wouldn't mind if he leaves his crease and stands a foot ahead of the crease as well. Yeah, that's what the batters do usually, because the wicketkeeper obviously standing way behind the stump, so there is no point of getting stumped. That's what you do. You stand outside your crease, you take the leg before out of the equation that way. Sohail Khan, meanwhile, what a spell this has been from an experienced fast bowler. Well, he still has a ball remaining. Well, the way he's holding the ball, it might be a cross-seam delivery, might be a bouncer as well. He went for a slower one, which is too wide outside the off stump. He'll have to re-bowl that. Well, Sohail Khan would hate that. He spent a lot of time on the crease. We did see him getting out of breath and asking for the miracle H2O. It will all worth if they can manage to win this semi-final here, Omar Associates. And they take a lot of confidence from this match as well, considering the top 3 didn't do well. Once again a slower one, guiding it towards third man. This time Zakir Malik gets a single. He'll keep the strike at the start of next over. After 5, it's 29 for 3. Well, it has been a sorry story for AO Hospital till now. None of the batters getting into double figures. Zakir is close, but he's lived very, very dangerously. Lady Luck is definitely standing with him. Yeah, the captain, Khalid Latif, still waiting in the dugout. It's surprising to see still no spinner being introduced by Asad Shafiq there. I guess the Pacers are getting so much movement here that they are continuing with Arshad Wazir. Third on the trot for him. He's already gotten 2 wickets. The captain would love if he can pick up another. A pull shot just over the bowler's head. As if Zakir Malik is trying himself to get out here. Let's face it, this is how Zakir Malik plays. He's just struggling to manage the pace Arshad Wazir is offering right now. Well, I think he's moving too much inside his crease there, Zakir Malik. Just need to stand still and play the ball on its merit. Maybe that's how he plays, but so far has not gone in his favor. Once again, slightly wider outside the off stump. He pulled out in the end, Zakir Malik. Still early days, but this is turning out to be a nothing innings from Zakir Malik. He needs to change his strategy, do something different. Shuffling too much, as you pointed out earlier. You've got to stay still. Play the ball on its merit. And you just heard from the captain, they need 1 more wicket. Good ball. Is it an outside edge? No, it isn't. What a peach of a ball that was from Arshad Wazir.
Let's not forget, we've seen some really good bowling performances tonight, but this one was one of the best we've seen yet. Very, very well bowled by this youngster. So pumped up. Maybe he's trying to tell that he got it under control. Three dot balls. Make it 4. This is unreal stuff from Arshad Wazir. How many times that has he beaten the right-hander outside the off stump? Are we playing in Perth? So much movement with the Pacers here. Wow. The pitch has changed all of a sudden. We've seen all the Pacers swing it tonight, Zishan. In both the semi-finals. It's been a nightmare for batters. Especially the top order batters. We saw Arshad Iqbal getting 3 wickets. Amir Barohi picking up 3 in the first innings, and now Arshad Wazir. And once again flirting with that ball outside the off stump there. Zakir Malik so far has no clue whatsoever against Arshad Wazir. He hasn't had any clue tonight. Zakir Malik saying, "Aap hi log khel rahe hain, main kahan khel raha hu." Yeah, he's just saying that he's a spectator. Watching the ball go straight into the hands of the wicketkeeper Azam Khan. Right then, this might be the last ball of his spell with the new ball. Arshad Wazir, can he pick up a wicket? Defended by Zakir Malik. Arshad Wazir bowling a maiden. This is turning out to be such a brilliant spell from the youngster. After 6 is 29 for 3. Not much of a difference if you compare the score of both these sides at this stage after the batting power play. Omar Associates also lost 3 wickets. They scored 27 and AO Hospitals are 29 for 3. Let's not forget, this is the stage when Asad Shafiq came on to bat and he took charge, literally. He made sure he stayed there, played proper cricketing shots, did not take any undue risks and scored a 50. Made it look easy in difficult conditions. That's why he is Asad Shafiq. Yeah, someone from AO Hospitals will have to play a similar knock here. It would have been much better if Khalid Latif would have been out here, but we can expect that from Akhtar. Anwar Lili, meanwhile, has now been given the ball. No signs of spinner yet. Too much down the track. Chance of a run out and he misses. Now they will collect a run on the overthrow. No communication whatsoever between Akhtar and Zakir. That was so close. That would have been wicket number 4. What a night for fast bowlers to be bowling. Asad Shafiq, barely missing the stumps. We've seen spinners dominate throughout the tournament. Teams have used spinners to start the innings with, and here we are, 7th over, and he's still seeing Pacers bowl. Well, Zakir on the other hand will be breathing a sigh of relief because he won't have to face the pace and swing of Sohail Khan. Anwar Ali doesn't have that much pace, but he has all the experience as well. Once again beaten outside the off stump. As if he's playing with a baseball bat here, Zakir Malik. Not being able to connect anything. It's not even coming onto his bat. No matter what the pace is, this one didn't even move. There was no swing whatsoever for Anwar Ali. He still couldn't get the connection. Required rate creeping up now, up to 8.05.
Once again opening the face of the bat, guiding it past that fielder at back of the point. I don't think they will come back for the second one. And now they are, because the throw was not a good one. And Azam Khan should have collected that throw, I think. That's exactly what Anwar Ali is trying to tell him. But that was a poor throw from Usman Tariq there. Well, no one was happy on that ball. Zakir Malik having issues with his partner and Anwar Ali having issues with that throw. Everyone complaining from each other. I beg your pardon, that was Arshad Wazir, not Usman Tariq. His friends and family wouldn't like that. Moving deep mid-wicket, a little squarer now, Anwar Ali. Once again playing it straight to Danish Aziz, standing there at backward of point. I think Zakir Malik needs to realize that one good delivery can get him out, and if he can get out at this stage, it will look like a funny innings from him, because he's playing those dot balls. His innings is going nowhere. We are not looking at him playing those aggressive shots. He's not being able to find the gaps. It's already been hilarious. This team needs 8 runs per over, more or less. He's batting at 11 of 20. It's been a constant struggle for Zakir. Can it change? Hitting it straight to the bowler, and Anwar Ali throwing back at the stumps. Once again another dot ball. One of those occasions the bowler was right in doing that, because Zakir Malik was strolling on the crease. He had come out of it. Well, the innings started when they needed to chase down at 7 per over. Now the required run rate going over 8.2. It's getting a little difficult now for AO Hospitals. Zakir Malik, on the other hand, must have been having some strategy. Extra cover being brought in at point. Last delivery of Anwar Ali's first. A full shot. Playing it into the gap. The shot is for 2, running the first one hard. And the fumble will allow them to come back for the second one very easily. And Anwar Ali is definitely not happy with that effort. 7 done. It's 34 for 3. Anwar Ali very angry there. Not at all happy about conceding an extra run, although he gave away just 5 in his first over. But all of these players set really high standards for themselves, especially someone like Anwar Ali, who gives his 100% no matter what he's doing, either with the bat or the ball, or when he's fielding as well. The beauty about this part of the world, it's always shining bright, the city of lights. Can you guess what time is it right now, Danish? 2:35. And see, the lights are still on. Ah, it's 2:38. I was so close. Sadly, you won't be winning anything for guessing the time right. That's okay. I'll just take my happiness. Usman Tariq has been so impressive, Zishan. Well, indeed, he has been. It's because of his height and because of the unusual bowling action, and he has got so many varieties up his sleeves. He's got a very good carom ball. It's not easy to take Usman Tariq for runs. He is a tricky candidate. I mean, you would hardly see batsmen using their feet against him because of that pause before he delivers the ball, gives him that extra time. Yeah, as if he does all the istikharas before delivering that ball. Usman Tariq. Big shot attempted. It has gone high up in the air. Anwar Ali's under it. And he won't drop those.
And what an sad end to this struggle of Zakir Malik. Anwar Ali showing how it's done. Ran hard at it, placed himself under the ball, and managed to take it easily. Usman Tariq getting his first. And he just played it into the hands of the opposition there, Zakir Malik. It was a nothing shot in the end, especially when you've got two fielders of such high caliber. It was Nafi at square leg and Anwar Ali at deep mid wicket. End of Zakir Malik's misery. Goes back to the pavilion of 13 of 23 balls. Well, Khalid Latif, finally the captain, is out there in the middle. And they need him right now. That's how Zakir Malik lost his wicket. He was looking to play against the turn. It went miles up in the air, and Anwar Ali, well, he won't drop those. One of those innings Zakir Malik would like to forget as soon as he possibly can, no matter what the result of this match is. It was torturous for him. I would like to erase those innings out of his memories. But still not over. Khalid Latif can't do it for his side. Wow, what a good ball that is. Big appeal. Is it too high? It might have been. The umpire referring that there was a bat first. Azam Khan just inquiring. The ball definitely hit the pad first. Khalid Latif had absolutely no clue where the ball was turning. Usman Tariq was literally begging the umpire there, please. On the pads, getting it fine. Khurram Manzoor is after it. A slide and a couple for the captain. That was a wrong one from Usman Tariq. Bowls a very decent wrong one. Probably drifted it too much on the leg side. He needs to start from the middle to just confuse the batsman further. Makes it easier if he drifts down leg. Well, he's got big hands there, Usman Tariq. He can turn the ball in any direction. As if he's holding an orange. Slightly shorter in length, pulled away by Khalid Latif. Anwar Ali again complaining from the fielder, you need to be there for backing up. Anwar Ali is totally after the fielders tonight. Particularly that man is the same dude, I'm sure. Who is that? I think it's Arish Ali. It was Asad Shafiq messing with the captain. Azam Khan also asking that fielder to stay alert. Once again, nicely working away on his legs there, Akhtar. Once again, a very good over from Usman. A wicket and just 5 runs off it. After 8, it's 39 for 4. Four bowlers used so far. Arshad Wazir taking 2 of his 3. Sohail Khan was brilliant. It's unfortunate that he could take just 1. Usman Tariq managing to take 1 in his first, giving away just 5 runs. They've been on point tonight, Omar Associate bowlers. Yeah, and once again, no partnerships for AO Hospitals, losing wickets at regular intervals. Anwar Ali, meanwhile, will continue with his second over. He was not at all happy with the fielding effort when he was bowling his first. But that catch which he took
to dismiss Zakir Malik might have, calmed down his anger. I think it just managed to pump him up more. You'd see that in his over. I just hope the ball doesn't get hit to the same fielder. Right, so Akhtar on strike. Playing it fine. Playing it all the way for a boundary. This time it's Anwar Ali who himself has committed an error. Balling onto the pads, easy picking, especially when the fine leg fielder is inside the inner ring. Well, both Akhtar and Khalid Latif are on the back foot at the moment. You would not want to let them go easy. You would want to keep applying the pressure. Yeah, they will have to make sure that at least they get a boundary every over, because the required run rate always creeping up. It's 8.2 now. The difference between the runs required and balls remaining is growing. Opening the face of the bat, couldn't find the fielder, couldn't find the gap. In fact, on the offside, the ball goes straight to Khurram Manzoor. And the more they play the ball all along the carpet, the more it's going to get wet, and it's going to become difficult for the bowlers to grip it. That's why most of them are carrying those little towels. You can see Asad Shafiq using one on the ball right now. A relatively drier ball back in Anwar Ali's hands. .97 still required by AO Hospitals. It's been tough going so far for the batting side. Slightly wider outside the off stump. There was an opportunity to get few runs there, but just couldn't get any part of bat behind it. Don't know how many of you are aware of the fact that when the ball gets this wet, it becomes like a soap. And it's like Anwar Ali is bowling with a wet soap right now. Getting really slippery, the ball now. Meanwhile, 2 dot balls. Outside edge has gone fine. Third man, no chance. We have seen so many boundaries coming behind the wicket for AO Hospital batters. The first one in this over went down fine leg. This time, finer of that fielder at third man. But they will take it as long as they come, no matter how they come. Third man is a bit too wide for my liking. Still staying where he was in the previous delivery, considering how many edges we've seen. They might change that strategy. Just playing it with soft hands on the onside. Khaja Mohammad Nafis slides. Keeps it down to just a single. They've got the runs they were looking for. 9 runs of the over already. But they still need to push on from here on, AO Hospitals. They need runs however they come. Like we've been talking about them getting them through edges. They'll take them. One more to go in this over from Anwar Ali. He's already gone for 9. Captain Khalid Latif is on strike. He'll have to play a similar knock, just like the way Asad Shafiq did. He'll have to lead from the front to win this semi-final here for his side. A few years back, no one could hit it harder than Khalid Latif did. He was such a powerful hitter of the ball.
Playing it with much straighter bat, hitting it straight back to the bowler. A dot ball to end the over with. Still 9 of it in the end. After 9, it's 48 for 4. I really want to know what's present there inside those dishes. Sehri time is approaching as well, so I feel you, my friend. I'm sure they're having boiled eggs. Nah. Probably some curries and roti as well. It's a good source for protein there, boiled eggs. I think you should have them during Sehri. I do. I love boiled eggs. Are we seriously talking about what we like to eat? Well, the boundaries aren't coming by. Such has been the match. The boundaries aren't coming by, so at least we can talk about something else. Usman, meanwhile, continuing with his second over. Once again, hitting the pads. It's going to be runs. Khurram Manzoor himself is after it. It's been a nightmare for AO Hospital batters tonight. None of them seem like they're even close to the ball. That's the beautiful trophy the teams are fighting for. No one is a loser. Even the runners-up will get a beautiful trophy and the cash prize. It's just smaller, especially when you place both of them together. And of course, the plaque would say runner-up. Good ball, wrapped in the pads. It looked pretty close. Usman Tariq cannot believe it. Neither can I. That looked like it was plumb. Even if you look at the reaction there of Khalid Latif, he knew how close that was. It pitched, it came back in, and that hit him right on the knee roll. He's pleading for it. That would have been given out 10 out of 10 times. Not even 9 out of 10 times. Khalid Latif can't believe it. Maybe it's the bounce that has saved him. Azam Khan just telling maybe it's an Australian pitch that the ball bounced that much. Once again an appeal, but the ball was drifting down the leg side. What's important is Umar associates are thoroughly enjoying themselves no matter what's happening out there. They are in a pretty good position at the moment, having gotten 4 wickets already. Khalid Latif, meanwhile, playing more with his pads than with the bat. Coming down the track. Has he been stumped? Well, he's not moving. How well did Khalid Latif do there to bring his back foot back into the crease? Some agility there from the senior pro. Well, the decision has been referred to the third umpire. Khalid Latif, although, looked pretty confident. So did Azam Khan behind the stumps. Imagine if he's given not out again. Nothing wrong with the legitimacy of that delivery. It was a legal ball. Came down the track, Azam Khan. Well, we might have to check it from the other angle. Here you go. You asked for it. Well, by the time Azam Khan took the bails off, I think his foot was on the line. And as we all know, line belongs to the on-field umpire. You've got to appreciate Khalid Latif's flexibility there. It's never easy to drag your back foot when you're already stretching on the front foot. Well, the stump cam, in fact, giving the best view. Kudos to Geo Super. You can clearly see his toes were already they were grounded, but they were outside the line. So he's going to have to walk back, Khalid Latif. Even his struggle comes to an end.
Mr. James signaling out there. So 5 gone. That means Khalid Latif will have to go back, scoring just 3 runs of 7 deliveries. Omar Associates moving closer to that ticket in the final. Tareen Academy already await the winner of this match. How well have Tareen Academy played throughout the tournament, Zishan? They've been so good. Yes, indeed. They were the unbeaten side from Group B, and they continued their dominance tonight in the first semi-final as well. Wonderful batting performance, wonderful bowling effort. Winning down the semi-final quite easily by a big margin of 70 runs showed that Ishal Associate never stood a chance here. Lal Kumar coming in to bat. It's good to see Osman Tariq operating with a slip in the form of Khurram Manzoor. That's the best way to go about it. And he was clearly getting frustrated there. Khalid Latif decided to come down the track. The ball just going beneath his bat, and Azam Khan providing the finishing touches for that stumping. Once again, Usman has proven to be unplayable. Coming around the wicket now to the left-hander. Good ball! How did that miss the stumps? Even Osman Tariq cannot believe it. Yeah, he was asking that same question from Azam Khan. That ball just pitched and came in and just inches away from the off stump. And 2 spinners that have really impressed us throughout the tournament. It's Ali Majid from Tareen Academy and now Usman Tariq from Omar Associates. Hitting it on the back for Danish Aziz at backward of point with a fumble, and Lal Kumar will get off the mark. Another successful over comes to an end from Usman. After 10, it's 50 for 5. $50 for 5 after 10, and once again not much of a difference between the 2 teams after the halfway stage. Omar Associates were 53 for 4. AO Hospitals have lost an extra wicket, but the equation is now not that simple for AO Hospitals. They need 90 runs in the last 10 overs, and 2 overs of Usman Tariq are still remaining. He has done most of the damage, picked up 2 wickets so far. Time for a change in the commentary box. Danish Anis has now been replaced by Muzammil Asif. A dot ball here by Anwar Ali. Thank you so much, Zishan. So, AO Hospitals is actually in trouble right now. And as you just told, 90 runs of 59 balls. It is chaseable, but they don't have wickets in their hands. That's a big problem for them. Yeah, their innings are going absolutely nowhere. Sohail Khan came in, tried few shots, he got out. It was a definite struggle for Zakir Malik. And even the captain Khalid Latif just couldn't stay out there for long enough. Fast bowlers are constantly having some issues in their run-up. I think it's a little slippery down where the left foot lands. Puff of dust being applied there just to keep it dry. Meanwhile, once again we are seeing dominance here from Omar Associates. They got some crucial runs towards the end of the innings because Sohail Khan played a wonderful knock and he was promoted up the order, and he put up a decent show with the ball as well. Although his numbers might not suggest how well he bowled, he picked up a wicket, constantly added that pressure on these batters.
Arshad Wazir also picking up 2, and now we have seen Usman Tariq getting 2 wickets in his 2 overs. और यहाँ पर जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे जीशान के मुश्किलात हो रही हैं यहाँ इस एंड से पेसर्स को, और मट्टी डाली गई है अब उस एरिया में जहाँ पर पेसर्स के जो फ्रंट फुट है वो लैंड करता है, क्योंकि वो एरिया आप देखें तो डंप कर गया है वहाँ पर, जिसे हम कहते हैं बैठ गया है वहाँ पर। जो फ्रंट फुट है उसको वो जो पावर जनरेट करने का एरिया है वहाँ पर वो पावर जनरेट नहीं कर पा रहे। Once again getting an outside edge, it's running fine. Third man stops it with his right foot. And 2 runs taken by Lal Kumar. And he's still asking that fielder at third man to stay much square. We have seen so many edges running down towards third man and fine leg in this innings from AO Hospitals. That was another example of it. And we're already in search of his first wicket. Lal Kumar yet again guiding it towards third man. Sohail Khan is out there and they cannot risk a run on his arm. The required run rate now going past 9 runs and over. They don't have many batters left either, AO Hospital, so one of them will have to take charge. That's the main problem here. They don't have wickets. Otherwise, in today's T20 cricket, this target is achievable in fact. But they needed wickets here. They don't have right now. But if somebody out of these 2 batters can step up and try to hit those big shots, then maybe they can go closer. Once again hitting it towards Khurram Manzoor at backward of point, and since there was no one backing up, so Khurram Manzoor decided not to throw. Once again a single taken by Akhtar. Well, that's what they need to do. They're not getting boundaries, at least keep the scoreboard moving. Does not let the required run rate go past 9.5 or even 10 runs and over, because then it will get really difficult to chase the target down. Good ball. Still having that bounce, still trying to bounce the batter out, and we're ready. He's not happy, I think, with the decision from the umpire. Yes, he's just communicating something to the leg umpire. Maybe he's definitely telling him that it was not that much up, that he has been warned to not bowl it again. Yeah, it reached till the shoulder height there of Lal Kumar. Lal Kumar is not a tall batter. Once again opening the face of the bat, hitting it towards Sohail Khan at third man. No chance of that second run. 11 done. It's 55 for 5. And as we were expecting during this tournament earlier, that the 2 teams which we were looking in the finals, here is match summary. Omar Associates 139 for 8, and AO Hospitals have so far scored 55 for 5, and they need 85 of 54 deliveries. So I was saying that we were expecting these 2 teams, the Reen Academy and Omar Associates, that they were most likely to get that in the final.
And I think after this match, or in fact at this moment, we are seeing Omar Associates setting their final clash with Tareen Academy, who beat Ishal Associates in previous match, which was the first semi-final of this tournament. So far at this moment, Omar Associates are leading from the front, and it looks like that AO Hospitals will not be able to chase this 85 runs target from 54 balls. Once again, the umpires are a little busy in changing the ball. We have seen the ball being changed so many times in this game. Conditions are not in the favor of the bowling side, since the ball is getting much more slippery. It gets bigger in size and it becomes harder for the bowler to grip the ball. And Lal Kumar has now taken his helmet off. We might see some aggression here from the left-hander. It's a very rare bowling action of Usman. I mean, he takes so much time before releasing ball. Maybe he gets much time to just read the batsman. Yeah, well spotted, Muzammal. The action with the pause, and you can anticipate where the batter is moving so that you can deliver accordingly. Swept on the leg side. Chance for mid-wicket, or is it going to go over his head? It does go over his head. Fetching it too wide outside the off stump. Arish Ali had to cover so much ground. And luckily for Lal Kumar, the ball just landing outside the boundary ropes. And it was a loophole delivery. It was pitched outside off, and Lal Kumar got that much needed time to time that ball so sweetly. Look at this. The way he waited for the ball, just bent down on his knees and smashed it over the boundary. Well, they need a lot few of those now, AO Hospitals. Shorter in length, pulled away. Arish Ali this time will cut that one off. A single to Lal Kumar. And obviously Usman most often reminds us of Ravichandra Ashwin. If you just look at Ravichandra Ashwin's bowling, he also, on some of his deliveries, he takes that time, he just stops before delivering the ball just to read the batsman. So it's a good tactic. Well, the reaction there from Azam Khan clearly suggests that pretty slow going so far for AO Hospitals. A big shot from Akhtar. It's up in the air. Long gone. Drops it. And that might have gone past the boundary ropes as well. It was Nadir, a substitute fielder for Omar Associates. Umpires will definitely ask the TV umpire to confirm whether he was making contact with the boundary ropes while pulling the ball back or not. It is a clear blunder. If you see the fielder, he was confident, he made a call, he came under the ball comfortably, but in the end, he dropped it. And look at this catch once again. He took his time, the fielder there, the ball remained in there for a while, and it seems like the fielder sat himself under the ball. He was running towards the ball. In the end, he was sad, but here he couldn't even save the boundary as well. The ball was in contact of his hand, and if you look at his other hand, it was touching the boundary rope. We might have to confirm that from any other angle, if possible. Once again, now they're committing an error. Initially, he dropped the catch, couldn't stop the ball at first attempt, and then, although he managed to pull the back inside the field, but what was his left hand touching the boundary cushions there? Well, this suggests that this had been signaled as a boundary. All right. So a 6 and a boundary in the over from Usman. But that catch should definitely have been taken. Talking about Nadir, well, he was part of
the finalist side in recently concluded Ramadan tournament at another venue. He dropped a catch in the final, and that costed their team. And he cuts at backward point. It just fell short of the fielder. Nafe was there protecting that region. And he's not happy, Akhtar, here. One ball still remaining in this over from Usman. And I was talking about that drop catch from Nadir. Well, AZ Real Estate and Builders were playing against a side in the final at the other venue, and Awazia was batting. He dropped the catch of Awazia when he was batting on 25, and Awazia ended up scoring 82. And they won that game. They won the final. And from a hero, Nadir became a zero. Tonight he has dropped yet another catch. And the match is still not over yet. And if you talk about Awazia, he scored in the previous tournament, but he didn't look in color during this tournament. And AZ Real won the last Ramzan tournament that took place in Karachi. So, and I think Akhtar was expecting that the previous was the last one, and there is some adjustment to the side screen. Playing it with a straighter bat towards mid-wicket. A much better over this for AO Hospital. They got 12 of it. After 12, it's 67 for 5, needing 73 more runs to win in the last 8 overs. Unexpectedly, the two semi-finals, Zishan, turned out to be one-sided. We saw Tareen Academy winning it by 70 runs, the first semi-final we just saw before this match. And now this match is also turning out to be one-sided in favor of Omar Associates. Well, yeah, so far it is going in the favor of Omar Associates, but still anything can be expected. All three results are still possible as long as this partnership continues to trouble the bowling side. Anwar Ali, meanwhile, bowling his final over of the night. Shorter delivery. He was looking to carve it away on the offside. It's Danish Aziz diving towards his left, saving few runs here for his team. Well, they are trying to dry the ball after every delivery here. Omar Associates fielders. That just talks about how much dew that has fallen already in the outfield. .68 for 5, and the required run rate is popping up. It is currently 9.19, and someone here from Lal or Akhtar needs to step up, needs to go for those big shots, needs to accelerate that score, because this is what AO Hospitals in fact needed at this moment. Good ball. Once again, Lal Kumar was looking to guide it towards third man and got beaten by the bounce and pace on that ball. How many times Anwar Ali has beaten the left-hander outside the off stump? He's still searching for his first wicket. It has been a good spell so far from a champion all-rounder. We still have 4 balls remaining. Can he create an impact here, Anwar Ali? Pulled. It's flat. It's long. It's maximum. What a strike here from Lal Kumar. He was looking for that shot for so long. And this is what AO Hospitals need at this moment. Look at the shot. It was short. He picked up the line so early. He pulled it. And it went for a 6.
on the second floor of Muin Khan Cricket Academy's main building. Well, he hit that in one of the dressing rooms. Lal Kumar, that was some hit. Look at the grip of his bat. He's clearly there to hit those big shots. Slower one. Straight to Danish Aziz, and tell you what, he missed. Anwar Ali might be getting a little frustrated here. We'll have a look to this chance. I think it missed by barest of chance. I don't know. It missed barest of margins. Yes. Had it hit, it could have gone. Yeah, Akhtar was not even in the frame. He had already given up. Danish Aziz, quick on that ball. Although he had 1.5 stump to aim at, still he was pretty close. He could have hit it. Would have been another wicket. Not to be. Akhtar, on the other hand, providing an excellent support to Lal Kumar. Well, the required run rate now goes under 9 runs in over. It's 8.93 at the moment. As long as these two are out here, the hopes are still alive for AO Hospitals to book a ticket in the final of this Maple Leaf HD Putty 8th Corporate T20 Cup, powered by Parkview City. Anwar Ali is constantly in search of wickets here. He's left with his last delivery of this match spell, and he has conceded 28 runs without any wicket. So he must be looking to take that much needed wicket for his team. Once again a slower bouncer attempted. He was once again opening the face of the bat. Lal Kumar just got beaten up. Yeah, it was a slower off cutter. Azam Khan getting a bad bounce. Luckily for him, the ball didn't go past him. A dot ball to end the over with. Anwar Ali is done for tonight. Couldn't pick up a wicket. Went for 28 runs in a spell of 4 overs. After 13, it's 76 for 5. AO Hospitals needing 64 more runs to win in the last 7 overs. And there are some adjustment to the field. Khurram Manzoor is making some field changes. If I can spot Asad Shafiq there. I think, yes, he is there on extra cover. And Khurram Manzoor is here in short fine leg region. And being a senior pro, he's just guiding. Arish Ali Khan has joined the attack. Yeah, finally we are seeing a left arm spinner for Umar Associates. They've got Danish Aziz as well. I think Arish Ali can create an impact here. Now look at that turn. That turn and bounce. I'm really surprised that the left arm spinner has now been introduced in the 14th over of the innings. Could have been introduced much earlier. A reverse sweep attempted. Reverse sweep on this pitch is looking a pickup shot in this match, as we saw Asad Shafiq trying it a couple of times successfully and getting boundaries of those reverse shots both times. So it's a good option moving forward while scoring runs here. Much better shot selection this time from Akhtar, playing it with much straighter bat, finding the gap and getting a single. And they cannot afford to let the pressure build on themselves by playing few dot balls here. AO Hospitals. Lal Kumar, who has already struck 2 maximums in his innings so far.
Might be easier for him against the left arm spinner. But he'll have to judge the pace. He'll have to judge the turn here from Arish. One thing is for sure, this match is going to go down to the wire. Good ball. Big appeal this from the wicket keeper. There were definitely two sounds, but I think the bat made contact with the pad. But look at the umpire here. He just moved his hands. Azam at one stage thought that umpire is going to give a signal of out, but umpire just folded his hands and said no, not out. Yeah, there you see the bat making contact with the pad. That's where the double sound came from. Lal Kumar straight away nodding his head. This time getting an inside edge. He's not happy with that effort. Lal Kumar, a very good over from Arish. Meanwhile, just a run off it. After 14, it's 77 for 5. And the discussion is going on between Akhtar and Lal. And here's the owner of AO Hospitals, Junaid Ali Shah. And Sohail Khan is warming up here. But Danish Aziz has been given the ball by the captain, Asad Shafiq. Yeah, after looking at the amount of turn Arish Ali was getting in the previous over, I think it's a good call from the captain, Asad Shafiq, to give the ball to Danish Aziz. Couldn't score many runs tonight, Danish, in the first innings. He has a chance of picking a few wickets. Azam Khan taking some time to adjust the fielders. Meanwhile, Danish will come around over the wicket, around the wicket. It has gone straight down the ground. Chance for long gone. Arish Ali takes it. So the gamble paid off for Umar Associates. Danish Aziz picking up a wicket in his very first ball of his spell. And Akhtar's journey comes to an end. Yes, as you were talking about, Zishan, that they need to take wickets here, and Asad Shafiq, after watching some turn for the left arm spinner, continued with Danish. Akhtar goes after scoring 22. AO Hospital are 77 for 6. So very good decision by Asad Shafiq by bringing in Danish Aziz to create that angle. And in the end, Danish got the wicket of his first delivery. So a much needed breakthrough, a much needed wicket for Omar Associates here, who are most likely marching towards the final, where Tareen Academy have already made their plays after beating Ishal Associates in the first semi-final of this tournament. The partnership has been broken now by Danish Aziz. And the new man walks in, Afnan Khan, tall right-handed batter. And he has played some competitive cricket as well. Afnan Khan, that's how Akhtar lost his wicket. Too much away from the off-stump, and he was looking to go downtown. Arish Ali this time completes the catch. Getting up the mark straight away with a single of Afnan Khan. Still not over for AO Hospitals. Yeah, the required run rate is now almost touching 11 runs in over, but they still can get it. Lal Kumar is still out there. Afnan Khan also pretty dangerous with the bat. Well, getting a little late for our young fans. Guiding it towards third man, Sohail Khan as sharp as ever. Well, the pressure will be on Lal Kumar now. They have just lost a wicket. Will he go big again?
Flat batted it. Long on. Drops it. It's Mohammad Nafi, who even tried to complete that catch in the second attempt but just couldn't hold on to it. A fumble there. His eyes were on the ball, but he couldn't reach the ball in second attempt. Look at him. Eyes on the ball. It could have just stick to his hand, but it didn't. A wonderful effort there from Mohammad Nafi. It was a flat hit. He was jumping in the air initially to take that catch. And he tried in the second attempt with that dive. The ball just couldn't stick in his hands. He almost picked up another wicket here, Danish Aziz. Kumar just hitting it straight back to the bowler. A dot ball. A smile being shared by the batter and the bowler. 15 done. It's 80 for 6. Not much contribution from any of the batters. Sakir going back after scoring 13s. Akhtar staying out there for his 22. He was the last batter to go out. Lal Kumar is still out there. He has now been joined by Afnan Khan. Alright, so we are heading into the final 5 overs of this second semi-final. Arish will continue with his second over. Just playing it on the offside, finds a gap there. Afnan Khan. This will definitely go past the boundary ropes. What timing, what placement. Wonderful placement by Afnan here. Taking this ball to the cleaners. Arish Ali Khan have conceded a boundary here. A beautiful cut shot here between short third man and backward point. And a boundary here to take AO Hospital's score to 84 for 6. Well, they've got a boundary of the very first ball. Now all they need to do is to keep on getting runs. The throw is at the bowler's end, but it's a wild one. And it's a misfield there from Arshad Wazir. And they will come back for another run. What should have been just a single has now turned into a couple. So even the fielders are feeling some pressure now. He just defended it. Danish Aziz collected the ball. It was not a good throw in the end. And Arshad Wazir, the ball just going between his legs. He was lucky enough that the ball didn't go and touch the boundary ropes. Would have been 5 runs. Wide down the leg side, another extra run. Azam is continuously asking Arish to keep the ball within the line of the stumps. And she's the mother of Azam Khan. And the family obviously watching him. And the match. Wide ball here. Back-to-back wide balls for Arish. He's feeling pressure here, but he needs to calm down, just bowl in the right areas and try to build pressure on the opposition. Yeah, 2 wide balls on the trot. Maybe he's finding it difficult to grip the ball here, Arish Ali. Playing it on his legs, running the first one hard. The shout is for 2. I don't think they will come back. Good work done by Arish Ali on his follow through, going after the ball himself. Well, they've got the runs they were looking for in this over. 9 runs have come off it. 3 balls still remaining. Lal Kumar is still out there. He's playing a pivotal role here for AO Hospitals.
going to be another wide, this time outside the off stump. I think Captain Asad Shafiq should come to him if he's near, or just try to guide him and tell him that don't ball in that area. Just try to stick to the... Once again, outside off stump. But this time just for a single. As I was talking, Asad just need to calm Arish down. You just need to tell him that don't worry, don't panic, just ball in the right areas. And Asad is also changing his field position here. He has come on mid-off or maybe extra cover region. Well, someone needs to remind them that the time for Seri is about to start. It's 3:30. Good effort, really good effort from Arish Ali, and a good throw. And Afnan Khan might have been walking back. A very, very good response by Arish Ali Khan. A very long over, in fact. And as you said, Zishan, that Seri time is nearing. So they need to just wind it off so that we can all go back to our homes and have Seri with our families. And meanwhile, some families are here too, enjoying this match. Yeah, very lengthy over this one, Arish Ali. Sweeping it. It's too wide from the long gone fielder. Ahmad Alam is going to throw it back. Another couple added to the total. 14 runs coming in that over from Arish Ali. An expensive one comes to an end. After 16, it's 94 for 6. And our sponsors, Dafa News, Omar Associates, Indus Hospital. And at this stage, after 16 overs, Omar Associates were 104 for 5 and AO Hospitals are 94 for 6. So there is a difference of wickets, and each wicket have equal importance in T20I cricket. 46 runs needed from 24 balls, and the required run rate is 11.5. And Danish Aziz, we can see him coming back to bowl. In his previous over, he got the wicket, the much needed wicket for Omar Associates. And now he is once again back to bowl. Yeah, he got that wicket of Akhtar, broke that partnership, but Afnan Khan has looked pretty settled out there. Giving himself room over extra cover. He has drilled that, Afnan Khan. Mohammad Nafi, what an effort. What a fielder he is, Khwaja Mohammad Nafi. That shot had boundary written all over it, but look at the way he dived and saved that run for his side. 2 runs, in fact. Every run counts here. Inside out shot by Afnan, and he was expecting the ball will sail away to the boundary, but here the credit goes to Nafi, the way he showed true commitment to his team and saved that boundary. And down the track he comes, but just for a single on, long on. Yeah, the runs have started to come since the time of Afnan Khan has come out. People do not want to leave. They want to witness what's going to be the end result of this second semi-final. It's pretty tense. 43 required, 22 balls remaining, 4 wickets still in hand. Lal Kumar going good, Afnan providing a very good support. Well, Sohail Khan has an over remaining. He'll be definitely bowling one. Flat backs it. Pass extra cover. Arish Ali down there at long off. He does well, but another couple to Lal Kumar. I think Omar Associates have taken 2 of their very best fielders on long off and long on position, Nafi and Arish. The physique tells that they are too quick
when it comes to chasing the ball, and they are showing it here. And Nafe, on previous delivery, he showed he chased the ball, saved the boundary, and here Arish Ali Khan came into action. Yeah, good young lads, sharp legs, very good fielders. Drilling it towards long off. Another single for Lal Kumar. Lal Kumar is playing a key role here, and he would be key if he continues to score runs like this, because the margin, the difference of runs is coming down and down, but they need to stick there. Afnan especially needs to give support to Lal, and obviously if they both continue to score runs here. Meanwhile, 100 has come up of AO Hospitals in 16.4 overs. They need 40 of 20 balls. Once again, short, wide outside the off stump, slapped towards Anwar Ali at deep cover. Another single to Afnan Khan. Well, he has looked pretty settled, Afnan Khan, since the time he has come in. I haven't seen him edging a ball or missing one. Once again, a very good over this is. 7 runs off it already, 1 ball still remaining. Lal Kumar might go hard at this ball. And he does, coming down the track, hitting it slightly wider of long on, but Khwaja Mohammad Nafe once again throwing it back to the wicket keeper. 8 runs off it, 17 done. It's 102 for 6, needing 38 more runs to win the last 3 overs. AO Hospitals. It looks like that these two batters are just trying to get as closer as they can to the target, because 38 runs they need of 18 balls. An umpire here are telling the reserve player who has brought something inside, maybe a message. And when Omar Associates sent something inside the ground, then AO Hospitals have also sent their man inside the ground with a helmet for Lal Kumar. Sorry. And 102 for 6. The required run rate is 12.67. And the two batters, Lal Kumar and Afnan, are having a chat. And umpires are just asking both the teams to try to complete these 3 overs within the given time. And Lal Kumar is ready to face Arshad. The left arm pacer is here to bowl, and Lal Kumar will face him. और यहाँ पर चाहते हैं 2 रन लेना, और यकीनी तौर पे लेंगे. बहुत दूर से फील्डर भागते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, और 2 रन बआसानी मुकम्मल किए. लाल कुमार ने पंच किया था लेग साइड पर, और बज़ाहिर ऐसा लगा कि शायद बैट उनकी विकेट से टकरा है, क्योंकि हमने देखा कि जी हाँ बिल्कुल इनका पैर जो है वो विकेट से लगा है, जिसके बाद बेल्स की लाइट यहां पर जली है, बट लकीली बेल्स ऑफ नहीं हुए, जिसकी वजह से यहां पर जो है वो आउट भी हो सकते थे अगर ये बेल्स गिर जाती. जी हाँ, हिट विकेट कहलाते अगर यहाँ पे बेल्स गिर जाती, लेकिन काफी खुशकिस्मत यहाँ साबित हुए लाल कुमार, और विकेट भी बची और 2 रन भी यहाँ हासिल हुए. 36 रन मजीद दरकार है यहाँ पे AO हॉस्पिटल्स को. अरशद वजीर जो कि अपनी स्पेल का आखिरी ओवर करने आए हैं, एक और बड़ी हिट लगाना चाहते थे, लेकिन डीप मिड विकेट पे फील्डर है मौजूद आरिश अली. सिर्फ 1 ही रन का यहाँ पे इजाफा होगा. अरशद वजीर अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं, और सुहेल खान के पास भी 1 ओवर बाकी है. तो वो 1 एक्स्ट्रा ओवर किसको देंगे यहाँ पे असद शफीक? दानिश अजीज और आरिश अली ने सिर्फ 2 ही ओवर्स कराए हैं अब तक. अनवर अली का स्पेल खत्म हो चुका है. एक बार फिर अंपायर बॉल की कंडीशन को चेक करते हुए और
शायद फिर से बॉल तब्दील की जाएगी। जी हाँ, एक बार फिर नई बॉल दी गई है बॉलर्स को। काफी सुकून की सांस लेंगे क्योंकि काफी बेहतर ग्रिप कर सकेंगे यहाँ पे अब बॉलर्स इस नई बॉल को। काफी दिलचस्प मैच होता हुआ ये सेकंड सेमीफाइनल एओ हॉस्पिटल्स और उमर एसोसिएट्स के दरमियान। और हमने अब से कुछ देर कबल बात की थी कि यहाँ पर वन साइडेड मैच हो रहा है, लेकिन अब लगता है ऐसा है कि ये मैच जो है वो वन साइडेड नहीं होगा, क्लोज जाएगा अगर ये विकेट लूज ना करें। यहाँ सिर्फ बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन बिल्कुल ही मिस कर बैठे यहाँ पे अफनान खान। हालांकि दराज कद के हैं तो अगर उछाल भी यहाँ मिले अरशद वजीर को तो उनको कोई मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए, लेकिन एंगल ऐसा था कि लेफ्ट आर्म बॉल बाहर की तरफ लेके गए थे और यहाँ पे लेग साइड पे गालिबन यहाँ शॉट लगाना चाह रहे थे अफनान। लेकिन यहाँ पे हर डॉट बॉल मजीद प्रेशर बढ़ाएगी एओ हॉस्पिटल्स के लिए क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट 14 तक पहुंच गई है। कदमों का इस्तेमाल किया एक बार फिर, बीट हो यहाँ अफनान। इतना आसान नहीं है अरशद वजीर के खिलाफ इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना। शुरू में भी काफी मुश्किलात पैदा की थी टॉप ऑर्डर के लिए अरशद वजीर ने, 2 विकेट्स भी चटखाई थी और यहाँ एक अहम ओवर करने आए हैं, इनिंग्स का 18वां ओवर और सिर्फ 3 ही रन दिए हैं अब तक 4 गेंदों पे। रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर बढ़ता ही चला जा रहा है और यकीनी तौर पे ये बड़ा कंसर्निंग है एओ हॉस्पिटल्स के लिए क्योंकि इतना करीब आए हैं लाल कुमार और अब यहाँ से वो जीतने की कोशिश जरूर करेंगे। बड़ी हिट लगाने गए लेकिन बॉल गिरेगी डीप कवर के फील्डर के सामने। एक ही रन मिल पाएगा यहाँ पे अफनान को। दे देना यार। आई थिंक यहाँ पर लाल कुमार चूंकि सेट है तो कोशिश यही होनी चाहिए अफनान की कि जितना ज्यादा उनको यहाँ पर स्ट्राइक पर रखें उतना ज्यादा इनकी टीम के लिए अच्छा होगा। जी हाँ, क्योंकि 34 रन मजीद दरकार है और सिर्फ 13 गेंदों का खेल बाकी रह गया है और हर डॉट बॉल के साथ साथ रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ता रहेगा, तकरीबन 16 पे जाके पहुंचने वाला है अब। लेकिन क्या शानदार बॉलिंग की है अरशद वजीर ने, अपने 4था ओवर करा रहे हैं और सिर्फ 12 ही रन दिए हैं, तो अहम विकेट भी लेने में कामयाब हुए थे। इस दफा ड्रिल किया है इसको एक्स्ट्रा कवर के पास से, लॉन्ग ऑफ के फील्डर मौजूद हैं अनवर अली और सिर्फ 2 ही रन यहां मिलेंगे लाल कुमार को। एक शानदार ओवर इख्तिताम पजीर हुआ, सिर्फ 5 ही रन यहां पे दिए अरशद वजीर ने। अपने स्पेल में सिर्फ 14 रन देके 2 विकेट हासिल की आज। 18 ओवर्स के इख्तिताम पे 108 पे 6, मजीद 32 रन दरकार है यहाँ एओ हॉस्पिटल्स को। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस बॉल को खेलने के बाद बॉडी लैंग्वेज जो है लाल कुमार की हमें थोड़ी सी डाउन नजर आई, लेकिन मशवरा उनको यही होगा, अफनान उनको यही मशवरा दे रहे होंगे कि यहाँ से भी मैच को जीता जा सकता है, अगर 1-2 बड़े हिट्स लगे तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यकीनी तौर पे मोराल को डाउन नहीं करना चाहिए बल्कि स्कोर बोर्ड पे नजरें होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जहां बुरा बॉल मिले वहां पर उसको हिट करें और रन्स लें अपनी टीम के लिए। और थके हुए भी नजर आ रहे हैं लाल कुमार थोड़े से यहाँ पर ऑब्वियसली, क्योंकि कब से वो सिंगल हैंडेडली स्कोर को यहाँ पर रन कर रहे हैं वो हॉस्पिटल्स के लिए। जी हाँ, T20 फॉर्मेट ऑफ द गेम है, 27 गेंदों का ही सामना किया है, लेकिन जिस तरह की स्ट्रगल रही है लगता है 127 गेंदें खेल चुके हैं अब तक लाल कुमार और सुहेल खान को एक बार फिर लेके आया गया है बॉलिंग अटैक में। बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया था सुहेल खान ने नई बॉल के साथ। थोड़े से अनलकी रहे, सिर्फ एक ही विकेट हासिल की, लेकिन आज मौका है। 47 रन पहले ही बना चुके हैं पहली इनिंग्स में, 6 बॉलें मजीद बाकी हैं इनके स्पेल में। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 1-2 विकेट्स और चटकाएं। इस दफा स्ट्रेट खेले हैं अफनान खान, अनवर अली जो कि फील्ड में मौजूद थे लॉन्ग ऑफ पे और इसी के साथ 2 रन मजीद हासिल करेंगे, बल्कि तीसरे रन के लिए भी भागे हैं यहाँ पे लाल कुमार और अफनान खान। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स।
और यही वजह है जो अभी मैं बात कर रहा था कि थोड़ा सा थकन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुसलसल सिंगल हैंडेडली खेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा शॉट मारने की ट्राई जरूर की थी, लेकिन चूंकि कनेक्ट सही नहीं हुआ, नीचे बल्ले का निचला हिस्सा बॉल को लगा और अनवर अली चूकते नहीं है। उन्होंने अच्छा थ्रो तो किया लेकिन विकेट से बहुत दूर था और बॉलर वहां तक नहीं पहुंच पाया। 3 रन यहाँ पर हासिल किए लाल कुमार ने, बल्कि अफनान ने वो शॉट खेला था। एक जो थ्रो का रन था वो मिला यहाँ पर एओ हॉस्पिटल्स को। Yeah, since Sohail Khan has got a long runner that allowed Lal Kumar to catch his breath. But a big hit is required by the left-hander. It's a good Yorker. A very good Yorker indeed from Sohail Khan. Right into that block hole, just a little wide outside the off stump. And that's how you utilize your experience. You are an experienced bowler, your team depends on you. And the way you bowl in death overs especially, it tells that you are experienced and you are here to win the match for your team. Now 10 balls are remaining and 28 runs are required to win this tournament and make their place into the final contest of this tournament. Well, since Lal Kumar is too exhausted, I think Afnan Khan in fact, need to take some risk here. Can he get a boundary here? A Yorker drilled on the offside again, but again it's Anwar Ali down there at long off. They've got some really good fielders in the outfield as well, likes of Waja Nafi, Danish Aziz, Arish Ali also a very good fielder. And there is a lot of dew, I think. That's why the fielders are struggling here. In fact, the bowlers are too, but fielders are clearly struggling here. Look at Sohail Khan. He's just trying that ball so that he can grab the ball well and bowl in that right area where he is currently bowling. It is good strategy to bowl in that block hole, Yorker length, because that is the only way to get rid of the batter in that overs especially. He's taken the third man inside and fine leg inside the inner ring. A slower one, a pickup shot on the legs. Nafi this time standing there at deep square leg. Well, you cannot hit it past him. He's that good of a fielder, Nafi. Once again Sohail Khan trying all his variations. We have seen a Yorker. We have seen a back of a hand slower ball. He almost overran that Nafi, but he judged it well in the end. 26 required of 8. Pressure building on AO Hospitals. Afnan Khan, what can he do? Can he get 2 boundaries in the last 2 balls? Another slower one. There is nothing much you can do with that. It was slower through the pace, but the length was so perfect there from Sohail. For me, Sohail Khan should be the man of the match today, because the way he batted with in the first innings, where Omar Associates were clearly struggling after losing 3 quick wickets, he scored 47 runs there, and now bowling this over, the second last over, too brilliantly. He just conceded 7 runs so far with the last delivery to go. Well, if Omar Associates can win it, which it's looking like at the moment, he will definitely be. Another slower one, making it into a full toss, heaving it away on the next side. Nafi once again throwing it back to Azam Khan, just a single. A very good over if you look at the context of the game. 19 done, it's 116 for 6, 24 now needed in the last over for AO Hospitals to book their place in the final. Mathematically, they are just 4 hits away. Here are the trophies of this tournament, the winning trophy and the runners-up trophy. So it's Maple Leaf, HD Putty, 8 Corporate T20 Cup, which is just an over away from the final match. And here you can see former Test cricketer Muin Khan, the tournament director, is having a chat with Umar Akmal, whose team Ishal Associates lost the semi-final, the first semi-final against Tareen Academy, which is
considered as one of the strongest teams who have participated in this tournament after Omar Associates. Well, Usman Tariq has been given the ball. He has been given the responsibility to defend those 24 runs. We have seen funny things happening, especially when a spinner is given the ball to bowl the final over of the game. But Usman has been bowling really well throughout. He picked up 2 wickets tonight. He has been hard to pick. He has been almost unplayable. Can he defend these 24 runs? If you remember, this is the same situation which happened in 2016, the final between West Indies and England. The big man Carlos Brathwaite struck 4 maximums in a row to give no chance to England, and they won their second World Cup, T20 World Cup. Well, they needed 19 of the final over, and Carlos Brathwaite hit an extra 6. But yeah, what a match that was. What an innings that was from the big West Indian. Once again coming down the track. Good ball from Usman. Lal Kumar clearly disappointed there. Had he been staying on the crease, could have converted it into a half volley. Some kids enjoying the match with their mother, and they are having fun time here on a weekend night. Yeah, they're looking so fresh because they don't have to go to the schools tomorrow. Afnan Khan, can he get a boundary or a maximum? It's an outside edge, and the finger goes up. Pretty tame dismissal this, but they'll take it. Usman Tariq is going to take it. A very good catch by Azam Khan behind the stumps. The ball was there. The shot selection was there as well. Just didn't get the sweetest part of the bat. Afnan Khan walking back. 20 of 16 tonight for him. It's 117 for 7. Just 4 deliveries left in the second semi-final. And clearly, Omar Associates are heading towards, in fact, in the final, Hosema, the all-round cricketer, has joined the crease. Look at this dismissal once again. He was trying to hit it big in second attempt. Azam. He went on his back foot, just created room and cut it on the offside. And here is a happy owner, the team manager, Nadeem Umar, the team owner, and Azam Khan, the man behind grooming these youngsters, highlighting them, unearthing them, and then setting them at high-class cricket. Well, as long as it's not a no ball or a wide, the match is well and truly over for AO Hospitals, because even 3 maximums won't be able to do it. What a over this is from Usman. What a spell this is from the big right arm off spinner. Lal Kumar is clearly exhausted here. There's 2 balls remaining, 22 more runs required. It's almost over for AO Hospitals. Looks like they're going to go down in the second semi-final. Down the wicket, he's going to be stumped. And he was finding it difficult. He was getting exhausted. And now he has been dismissed. Kudos to Usman Tariq. Kudos to Asad Shafiq, the captain, for bringing him on in this final over. Now he has picked up 2 wickets in this over and has raised his tally to 4 wickets in tonight's game. Once again, you just cannot pick which side the ball is going to turn after pitching. A valiant effort comes to an end from Lal Kumar. 36 for him tonight. It's 118 for 8. And the last ball to go. And just a ball away from the final. Omar Associates
are just a ball away from the final of this Maple Leaf HD Putty 8th corporate T20 tournament, and Waleed is going to face this last ball. And it goes big. It's going to be taken, and it's going to be a 5-wicket haul tonight for Usman Tariq. He deserves it. How well he has bowled tonight, thanking his Lord. This has been a wonderful effort from spin bowler. 5 for 20 in T20 format of the game. The captain is going to take it any day. Absolutely brilliant bowling spell by Usman, and I really like his action, which is very unique. He takes time. He takes time to just think about bowling in the right area and then just try to bowl in those areas so that he gets wickets there. So Umar Associates have won this contest by 21 runs, and not only this contest, they have now qualified for the final of this tournament, and the owner Nadeem Umar alongside the team management and bench players are here to greet with the players after their victory, and a handshake between the players here. The team manager Azam Khan, the main man behind grooming these players, and these are the highlights of the second inning. Yeah, it was an edgy start for AO Hospitals. That's how Sohail Khan lost his wicket. They collected few runs behind the wicket keeper. Another wicket. Arshad Wazir was so aggressive with the new ball. That's how Arif Khan lost his wicket. A peach of a ball from Sohail Khan. Zakir Malik played a nothing shot. It was a funny innings from the big right-hander. 13 of 23 runs in a run chase. Akhtar stayed out there for quite a bit of time. Khalid Latif lost his wicket, stumped. Lal Kumar and Akhtar set up a good partnership, but that was a big six. That was a flat hit from Lal Kumar. Afnan Khan stayed there for quite a bit of time as well, but he lost his wicket in the final over. Lal Kumar also getting stumped in that final over, and Tariq picking up a fifer in tonight's semi-final. So he'll remember this game for a long time. Time to go towards Hina on the sidelines. Let's see who she has with her. जी बिल्कुल, उमर एसोसिएट्स के बॉलर उस्मान मेरे साथ मौजूद है। उस्मान, पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी टीम जो है वो सेकंड फाइनलिस्ट हो गई है। क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि यार उन्होंने मुझे इतने बड़े मैच में इतनी इज्जत दी, और मैं पहले से माइंड बना के आया था इस चीज़ को कि यार ये बड़ा मैच है, इसमें मौका है कि यार मैं बड़ा से बड़ा नाम कमा सकूं, जिसकी वजह से मतलब मेरी परफॉर्मेंस और फोकस इस तरह थी कि यार मैंने सोचा कि यार मुझे करना है। और जब मैच शुरू हो रहा था तो उससे पहले मतलब सेकंड इनिंग में मैं जाके बोला नदीम भाई को कि मैं जितवा के आऊंगा, तो जितवा के आया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वैसे क्या प्लान लेके आप आज ग्राउंड में उतरे थे? काफी वक्त तो ऐसा लगा कि आप लोग डोमिनेंट है अगेंस्ट जो टीम है, तो प्लान के अकॉर्डिंगली आज आप नजर आए ग्राउंड में? प्लान तो देखें, असद भाई ने बहुत थ्रू आउट जो है ना हर एक चीज, बॉलिंग चेंजिंग, फील्डिंग वगैरह एवरीथिंग, उन्होंने बहुत ही हर एक चीज प्लान के मुताबिक की, सबने एग्जीक्यूट किया वो प्लान को। तो द थिंग वाज कि मतलब वो प्लान्स वर्कआउट कर गए और हमारे सामने सब कुछ रिजल्ट। उस्मान, अभी आपको फाइनल्स में तरीन एकेडमी को आपकी टीम फेस करेगी। वेल, क्या लगता है तरीन एकेडमी, आज आपने इन एक्शन देखा, जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी तरफ से मिली, तो किस तरह प्रिपेयर होके उतरेंगे मैदान में? हमने थ्रू आउट इनकी मैचेस देखे हैं, तो ये है कि नो डाउट उन्होंने बड़ा अच्छी क्रिकेट खेली है। यंग लड़के हैं, सारे एक्सपीरियंस उनके पास मतलब थोड़ा सा ले कर रहे हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, ये मतलब बेनिफिट है। और दूसरी बात है कि मतलब मैं रियली लाइक आई वुड लाइक टू थैंक टू नदीम भाई एंड आजम भाई, जो जिस तरीके से वो बैक कर रहे हैं लड़कों को, जिस तरीके से वो मतलब गाइडेंस दे रहे हैं लड़कों को, तो वो मतलब काबिल तारीफ है। थैंक यू उस्मान, वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय यू। वेल, उस्मान हमारे साथ मौजूद थे उमर एसोसिएट्स के, और अब जो दो फाइनलिस्ट है तरीन एकेडमी और उमर एसोसिएट्स के दरमियान फाइनल मैच खेला जाएगा कल मोइन खान एकेडमी में। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच हिना। एंड उमर एसोसिएट्स, ये बैटिंग कार्ड आप देख सकते हैं। जाकिर ने 13 रन बनाए, ऊपर से अख्तर ने 22 रन बनाए, और लाल कुमार ने 36 रन बनाकर बहुत कोशिश की कि एओ हॉस्पिटल्स की टीम को ये हदफ जो उसको हदफ हासिल किया जाए।
तो यहाँ पर बॉलिंग कार्ड आप देख सकते हैं, अरशद ने 2 विकेट्स हासिल की, उस्मान पिक ऑफ द बॉलर है, 5 विकेट्स हासिल की इस मैच में, और सोहेल खान ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की डेथ ओवर्स में, और यहाँ पर 1 विकेट हासिल की 24 रन देकर अपने 4 ओवर्स में। मैच समरी, असद शफीक ने क्रूशियल रोल प्ले किया, सोहेल खान ने अच्छे स्कोर किया, आमिर ने एओ हॉस्पिटल्स के लिए 3 विकेट्स ली, लाल कुमार टॉप स्कोरर रहे एओ हॉस्पिटल्स के लिए, और उस्मान मैन ऑफ द सेकंड इनिंग्स रहे। उमर एसोसिएट्स ने ये मैच 21 रन से जीत लिया है। सो इट्स टाइम फॉर ब्रेक, एंड ऑन द अदर साइड विल बी हैविंग अ प्रेजेंटेशन विद दानिश अनीस। Outside edge it is. What a start this on Amir Barohi. A wonderful delivery. Knocked him over. Come on, another boundary for Asad Shafiq. रत्नों का संभाल किया और स्टंप हो जाएंगे यहाँ पे दानिश अजीज. It has gone fine and that's going to go for 4. And taken by Asad Shafiq, the skipper. Arshad Wazir has taken it, he's pumped up. बिल्कुल आ रही है. Check mic 1 2 3 4 mic check. Mic check. Check mic 1 2 3 4. नवाज भाई सही हूं मैं? मुश्ताक अहमद ने 144 वनडे मैचेस की 142 इनिंग्स में 33.29 की औसत से 161 विकेटें हासिल की, जिसमें 3 बार इनिंग्स में 4 विकेट और 1 बार मैच में 5 विकेटें हासिल करने का एजाज शामिल है. जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, Welcome back once again to DHS Sports Club Moin Khan Academy, where Omar Associates have won the second semi-final of the day and managed to qualify for the final, where they meet Taneer Academy. They won this match by 21 runs. Let's get on with the presentation ceremony. Presentation party में हमारे साथ मौजूद Mr. Anis Wali Mohammed, Director of Finance, Jerry's Group. We are also joined here by Mr. Adil Faridi, Head of Sales, Karachi, HD Purdy, sir. Thank you so much for joining us, gentlemen. We also have with us Mr. Azhar Hamid, Director Tournament. Let's move on with the presentation ceremony. सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा लूजिंग टीम के कैप्टन खालिद लतीफ को कि आए और हमसे कुछ बातें करें. आज इनकी टीम लड़ी बहुत, लेकिन इवेंचुअली मैच हार गई. खालिद, कुछ और अगर रन्स आप डिफेंड कर लेते, आखिर में कुछ और तेज खेल लेते, शायद हो जाता, बट अगर मगर से क्रिकेट चलती नहीं है. डेफिनेटली, असल में हमने पहले जिस तरह ग्रिप किया था, इनको कंट्रोल कर लिया था, विकेट्स गिर गई थी, लेकिन सोहेल खान और असद शफीक जिस तरह बैटिंग की, बहुत जबरदस्त बैटिंग की. एंड में सोहेल खान ने आके रन बना दिए, जिसकी वजह से जो है ना वो फर्क डल गया. चलें खालिद लतीफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, इसी तरह मेहनत करते रहे. थैंक यू सो मच. Right, I'd like to request Sohail Khan to come forward and receive his Man of the Match award for his all-round performance. Sohail, सबसे पहले अपना अवार्ड लें, फिर हम आपसे एज ए कैप्टन भी बात करेंगे, एज द मैन ऑफ द मैच भी बात करेंगे. मिस्टर Anis Wali Mohammed, Director of Finance, Jerry's Group, is presenting the match memento, and I'd request Mr. Adil Faridi, Head of Sales, HD Purdy, to present the Man of the Match cash award worth 20,000 rupees. Cash award तो ले लें सोहेल खान. जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई आज आपने. First with the bat and then with the ball, he scored 47 runs for his team. Those were valuable 47 runs, क्योंकि उस वक्त इनकी टीम मुश्किलात में घिरी हुई थी, और फिर इन्होंने असद शफीक के साथ शानदार पार्टनरशिप लगाई. एज अ बॉलर तो हम आपकी परफॉर्मेंसेस देखते आए हैं सोहेल, बट जब बैटिंग में एक बॉलर परफॉर्म करता है तो अलग लेवल की खुशी होती है.
बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नदीम भाई ने मुझे बैटिंग कराई थी क्योंकि उसने आजम खान को बोला कि आज सोहेल खान मुझे ऊपर चाहिए बैटिंग में, क्योंकि जिस कंडीशन में सोहेल खान हिट मार सकता है इस कंडीशन में, तो नदीम भाई का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया और मैंने प्रूव करके दिखाया। फाइनली सोहेल पंप्ड अप है फाइनल के लिए, तगड़ी साइड तरीन एकेडमी की और अच्छा मैच होने वाला है। जी बिल्कुल, हम तैयार हैं मेंटली तौर, ऐसे बहुत कंडीशनों में हम खेले हुए हैं और साथ में ये कि आजम भाई बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें, काफी बताते हैं हमें और टीम को बड़ा जेल किया हुआ है उसने, तो उसकी वजह से काफी फायदे हुए हमें। बहुत शुक्रिया सोहेल खान, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल मैच एज वेल। Lastly, I would like to request Mr. Azami, Director Tournament, to present club souvenirs to Mr. Anis Wali Muhammad and Mr. Adil Faridi for being absolutely superb supporters of this tournament. याद रहे आप मुलाहिजा कर रहे हैं DHS स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी में मेपल लीफ HD Patti 8th Corporate T20 Cup powered by Parkview City. Right, ladies and gentlemen, this is it from the presentation ceremony tonight. We'll say farewell to you all and join you all tomorrow for the final to be played between Tareen Academy and Omar Associates. See you tomorrow. Outside edge it is. What a start this on Ahmed Barohi. A wonderful delivery. Knocked him over. Kawa, another boundary for Asad Shafiq. को इस्तेमाल किया और स्टंप हो जाएंगे यहाँ पे दानिश अजीज. It has gone fine and that's going to go for 4. And taken by Asad Shafiq, the skipper. Ashad Wazir has taken it, he's pumped up. Come on! तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंटरनेशनल असाइनमेंट की सरगर्मियों का आगाज आज से होने जा रहा है। लाहौर के कदाफी स्टेडियम के पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज रात 9 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर ग्रीन शर्ट से मुकाबला करेगी क्योंकि उनके सीनियर क्रिकेटर्स IPL खेलने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चंद रोज से कदाफी स्टेडियम लाहौर में भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है और गुज़िश्ता रात न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान में पहली मर्तबा प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। T20 सीरीज के आगाज से कबल जुमेरात की रात ट्रॉफी की रोनुमाई भी की गई जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लेथम शरीक हुए। T20 सीरीज की चमचमाती हुई ट्रॉफी की रोनुमाई के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आए तो उनसे पहला सवाल ही उनकी कप्तानी को लेकर हुआ और उनसे पूछा गया क्या वो इस मामले पर दबाव का शिकार हैं कि उन्हें सीरीज टू सीरीज कप्तान बनाया जा रहा है, जिस पर कप्तान बाबर आजम ने कहा कि उनका काम क्रिकेट खेलना है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने उन पर बतौर कप्तान एतमाद का इजहार किया है, उन्हें कप्तानी की कोई टेंशन नहीं। अफवाहें तो बहुत सारी हैं, वो सब पर वजाहत तो नहीं दे सकते। देखिए मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। मेरा काम है क्रिकेट खेलना और मेरी जितनी भी चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है उसमें मुझे उन्होंने पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस दिया और वो मेरे लिए काफ़ी है। और बाकी रूमर्स देखें वो तो मुझे नहीं पता क्या क्या चल रहा है, तो इतनी चीज़ें आती हैं मैं किस किस पे एक्सप्लेन करूं, लेकिन मेरा काम है कोशिश करता हूं ना देखा जाए और इग्नोर किया जाए। जो मेरा काम है, जो मेरी
मेरा एज अ कप्तान मैंने जो टीम से काम लेना है वो उस पर मैं फोकस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपना 100% दूँ और क्रिकेट एंजॉय करूँ और परफॉर्मेंसेस दूँ, टीम से लूँ और मैचेस जीतें। मैंने पहले ही बोला कि मुझे उन्होंने क्लियरेंस दी हुई है। अभी देखें, सीरीज टू सीरीज कोशिश ये होती है कि हम अपना 100% दें। आगे का देखें, कोई ये नहीं है कि आप लिख के लाएं कि मैं ही कप्तान रहूँगा या कुछ भी होगा XYZ, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि जितना मेरे पास अथॉरिटी है मैं उसको अवेल करूँ और उस पर मैं अपना 100% दूँ। जो मैं चाह रहा हूँ या जो टीम डिमांड कर रही है तो वो हम अपना अप्लाई करते हैं और जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसी को हम कंटिन्यू करें और मेन चीज़ है मैच जीतना और परफॉर्मेंस करना, और उस पर ही फोकस रहता है और चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन उस पर जितना हम नज़रअंदाज और जितना देखेंगे उतना प्रेशर आएगा। तो मेरा मानना है कि मैं इन चीज़ों को देखता नहीं हूँ, अपनी चीज़ों पे फोकस करता हूँ और अपना ही जो है मेरा एक माइंडसेट उस पर रहता हूँ। उधर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान से T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। शायद यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान बाबर आजम ने पुरएतमाद अंदाज में कहा कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने की पूरी आहलियत रखते हैं। हारिस रऊफ शाहीन शाह अफरीदी के साथ नौजवान फास्ट बॉलर कॉम्बिनेशन से टीम मजबूत हुई है। बाबर आजम ने मजीद कहा कि ऐसा भी नहीं है कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम नातजुर्बेकार है। उनके 6 से 7 क्रिकेटर ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, जिस तरह देख लें हमारी जो बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप है और जिस तरह हमारे यंगस्टर्स आए हैं वो भी डोमिनेट किया। उन्होंने PSL में भी किया, अफगानिस्तान सीरीज में भी किया, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। और जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं जिसमें शाहीन है, हारिस है, नसीम है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ और कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें ऑन द डे और जो हमारी हाथ में चीज़ें हैं वो हम अप्लाई करें और उसके लिए हमने प्रिपरेशन की है और उसके लिए रेडी हुए। बिल्कुल जहाँ तक रही बात आपने कॉम्बिनेशन, बिल्कुल उनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ये नहीं है कि क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि वो उनकी B टीम है या उनके यंगस्टर आए हैं, तो जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनके ऑलमोस्ट 9 से 10 प्लेयर जो सीजन्स प्लेयर हैं जो खेलते आ रहे हैं और जो इंटरनेशनल उनके टीम के साथ रहे हैं और जो नए भी आए हैं वो भी सीजन प्लेयर और परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो किसी भी टाइम किसी भी स्टेज पे आप किसी भी टीम को इजी नहीं लेते। इंटरनेशनल क्रिकेट है और इसमें आप किसी ओपोनेंट को इजी नहीं ले सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में कप्तान बाबर आजम और ओपनर मोहम्मद रिजवान समेत 5 क्रिकेटर्स को आराम कराया था, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मुकाबलों में ओपनिंग का शोबा सायम अयूब और मोहम्मद हारिस ने संभाला। लेकिन कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में ओपनिंग के शोबे में तब्दीली को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि आगाज इनिंग का वो और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ही करेंगे। अलबत्ता मिडिल ऑर्डर में सायम अयूब, शान मसूद और मोहम्मद हारिस को मौका दिया जा सकता है। नहीं, ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है कि एक्सपीरियंस करें। जो मेरी और रिजवान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप वो है उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके बाद जो हमें लगेगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे सूटेबल होगा उस हिसाब से हम मेरे ख्याल से इस प्रैक्टिस के बाद अनाउंस कर देंगे कौन 11 साइड क्या खेलेगी। हाँ बिल्कुल, देखें ये जो 15 एंड में से देख लें, जो हारिस भी जो है वो नंबर 3 पे खेला, नंबर 4 पे भी खेला हुआ है, शान भी नंबर 4 पे खेला हुआ है। क्योंकि हमने इस प्लानिंग से किया था कि यार आप ये नहीं है कि आप सिर्फ ओपनर्स में ही खेलेंगे, हमने उनको वहाँ पे खिला के देखा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे डिलीवर भी किया है। हारिस ने भी किया, सैम भी देख लें, सैम का और इन यंगस्टर का एक अच्छी बात यह है कि ये वो एक नंबर पे नहीं सोचते, वो कहते हैं कि यार हमें जहाँ मर्जी खिलाएं, हम हमें प्लान बताएं आप क्या चाह रहे हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए और वो एग्जीक्यूट करते हैं और वो जाके अपनी गेम खेलते हैं, जो हमारे लिए काफी पॉजिटिव साइन है। कप्तान बाबर आजम ओपनिंग के शोबे में कोई तजुर्बा करने को तो तैयार नहीं, अलबत्ता बॉलिंग में वो तजुर्बा करने को तैयार नजर आ रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बाबर आजम ने कहा कि PSL से एहसानुल्लाह और मोहम्मद जमान खान की सूरत में बेहतरीन फास्ट बॉलर्स मिले, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी मुतासिर किया। इसी वजह से वो कौमी टीम का हिस्सा बने हैं। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है। देखें, जिस तरह ये दोनों यंगस्टर ने PSL में
और उसके बाद अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस दी है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग रही है। उसी बिना पे ये टीम में आए हैं और इससे और हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ और तगड़ी हो गई है और अच्छी हो गई है, क्योंकि जो हमारे मेन फास्ट बॉलर हैं वो भी आप देख लें डोमिनेट करते हैं और हमेशा हमें मैच जिता के देते हैं। और अब और दो आ गए तो और स्ट्रांग हो गई हमारी बॉलिंग लाइनअप। बिल्कुल हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम उनको भी यूटिलाइज करें, उनको साथ साथ स्टैब्लिश करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी ट्राई करनी है और उनको हमने चांसेस देने हैं कि हम कहाँ और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। उधर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लेथम ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में उम्दा कारकर्दगी दिखाने का अज़्म जाहिर किया है। टॉम लेथम का कहना था कि पाकिस्तान एक मयारी टीम है। इन सब खिलाड़ियों ने अभी PSL खेली है, अगरचे IPL की वजह से उन्हें आम खिलाड़ियों का साथ हासिल नहीं, लेकिन टीम में शामिल खिलाड़ियों के पास एक अच्छा मौका है कि वो परफॉर्म करके खुद को साबित करें। Pakistan are obviously a quality side. They've come off the back of their PSL tournament just recently, and they've obviously picked guys that are in form. So even though we're missing a few players due to the IPL commitments, it presents opportunities for other players. And even though we have some guys that haven't played a huge amount of cricket, we've also got some guys that have played, a lot of T20 cricket for New Zealand. So it's an exciting opportunity for this group to come over here into conditions we haven't played a lot in before, and hopefully we can put a good performance on the board. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पहली मरतबा पाकिस्तानी सरजमीन पर ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ T20 मैच खेलेगी। इससे कबल पाकिस्तान ने बाहमी सीरीज के मुकाबलों में UAE या फिर कीवी सरजमीन पर मुकाबलों में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मजमूई तौर पर 29 T20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखाई देता है। पाकिस्तान ने 18 मुकाबलों में कामयाबी हासिल की और 11 में न्यूजीलैंड की टीम फातेह रही। दोनों टीमों के दरमियान 7 T20 सीरीज हुई, जिसमें दोनों टीमें 3-3 मरतबा सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रही और एक सीरीज बराबरी पर अपने अख्ताम को पहुंची। T20 इंटरनेशनल मैच में आखिरी मरतबा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में हुआ, जहां पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से बासानी शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी। And there they are, and here it is. Down the ground, and that is it. Shan Masood hits the winning runs, and Pakistan are absolutely ecstatic in the dugout. And why not? The first time in 13 years they have reached a world. तो तैयार हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मुकाबलों के बाद 5 एक रोजा मैचों की सीरीज के लिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये 10 बैनुल-अक़वामी मुकाबले लाहौर, पिंडी और कराची में मुनक़्क़िद होंगे। आखिरी 3 एक रोजा मैचों की मेजबानी नेशनल स्टेडियम कराची करेगा ईद उल फितर के बाद। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अमेरिका से वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन। उनसे पूछेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस T20 सीरीज पर उनकी राय और किस तरह देख रहे हैं वो बाबर आजम की कप्तानी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को। ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अय्यूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे जीत के जियो। मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा कि इस प्राइड को जो डैमेज करे उसको दोबारा ये प्राइड नहीं मिलनी चाहिए। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। प्रेशर कितना था आपके ऊपर जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई और आपने रिपोर्ट देखी होगी, तो आप पे फोन तो आए होंगे आपके पास कि ना करें जनरल साहब? कभी नहीं। जनरल साहब कभी नहीं। आपको कोई पसंदीदा प्लेयर था? कभी नहीं। यार बड़ा अफसोस हुआ। आप कभी नहीं। हमने पास्ट में कोई एग्जाम्पल सेट की ही नहीं है। जो मैं बात हमेशा से करता रहा हूँ कि हमने पास्ट में पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, हमने कोई एग्जाम्पल ही सेट नहीं की, तो ये चीजें होती रहेंगी। दिल कितनी बार टूटा अब तो मैंने शायद वो काउंट करना मुश्किल होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब अनाउंस हुआ और नाम नहीं था तो फिर तो जाहिर बात है हर बंदा डिसअपॉइंट होता है, चाहे मैं हो कोई भी हो। जब वो उम्मीद रखता है और वो पूरा नहीं होता, तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी।
जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे, जीत के जियो। इमरान खान ने 175 वनडे मैचेस की 142 इनिंग्स में 26.61 की औसत से 182 विकेटें हासिल की, जिसमें 3 बार इनिंग्स में 4 विकेट और 1 बार मैच में 5 विकेटें हासिल करने का एजाज शामिल है। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे, जीत के जियो। 1974 का दौरा इंग्लैंड ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम का मैदान, पहला एक रोजा मैच। इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। मुकर्रर करदा 50 ओवर्स में इंग्लैंड के 4 विकेटों के नुकसान पर 244 रन, डेविड लॉयड की 116 रन की शानदार इनिंग। पाकिस्तान की जानिब से सरफराज नवाज, आसिफ इकबाल और इंतखाब आलम की एक विकेट। 244 रन का हदफ पाकिस्तान ने 42.5 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर माजिद खान की शानदार सेंचुरी। इंग्लैंड की जानिब से बॉब विलिस और पीटर लीवर की एक विकेट। पाकिस्तान की मैच में 7 विकेटों से फतह। वनडे क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान की ये पहली फतह थी। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 मुकाबलों की सीरीज के पहले मुकाबले की आज मेजबानी करने जा रहा है। पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक रात 8:30 पर बाबर आजम और न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम टॉस करेंगे और ठीक पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक 9 बजे इस मैच का आगाज होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे और T20 सीरीज और हालिया जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से फैसले हुए हैं, गुफ्तगू करने के लिए अमरीका से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। जलालुद्दीन साहब, किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस सीरीज को, जहां न्यूजीलैंड के सरकर्दा खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में मसरूफ हैं और टॉम लेथम एक ऐसी टीम को लेकर आए हैं जो कि होम ग्राउंड पर श्रीलंका को T20 सीरीज 1 के मुकाबले में 2 मैचों से शिकस्त देकर जो है वो पाकिस्तान पहुंची है और इस टीम में तजुर्बे की कमी है। थैंक यू याया, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान जो हमने देखा लास्ट जो सीरीज हुई उसमें हमने ये कहा जो नए प्लेयर खेले हैं तो हम इस वजह से हार गए और
हमें जो है वो सीनियर प्लेयर खेलने चाहते। अब फुल अपॉर्चुनिटी मिली है और पाकिस्तान के पास पूरी टीम मौजूद है, और जबकि न्यूजीलैंड अपनी वो प्लेयर लेके आए जो इस वक्त वो उन प्लेयरों के साथ नहीं आए जो बड़े प्लेयर आईपीएल में खेल रहे हैं। तो अगर ये साबित करना चाहते हैं कि हम वाकई एक छोटी टीम से खेल रहे हैं, तो हमें चाहिए कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ये करके दें ताकि ये बात साबित हो। दूसरे जो नए अब मैनेजमेंट आई है, हमें देखना है कि व्हाट्स न्यू, क्या वो ऐसा नया करने जा रहे हैं जो पहले नहीं होता था, कि जिस सिर्फ नाम के फॉरेन कोचेज होंगे वो। तो हमें ये भी देखना हुआ इस सीरीज में, और जो हाइब्रिड टाइप ये सिस्टम डेवलप हुआ है किस हद तक कामयाब होता है। तो ये सारी चीजें इस सीरीज में देखने को मिलेंगी। और जो बाबर आजम ने, अभी मैं सुन रहा था बीच में कि वो ये कह रहे थे कि जी हमने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम खेलते हैं। एक तो हमें पता नहीं उन्होंने क्या स्टैंडर्ड सेट की, क्योंकि जो उनके रिजल्ट से या जो उनके आउटकम से हमें जो नजर आता है वो स्टैंडर्ड आजकल के मॉडर्न डेज क्रिकेट से काफी नीचे नजर आते हैं। या तो वो अचीव नहीं कर पाते वो स्टैंडर्ड, और अगर नहीं कर पाते तो उसकी वजह पता होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी भी उसी के थ्रू होती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साबित भी उन्होंने करना है कि हम एक कंपैरेटिवली कम ऐसी टीम से खेल रहे हैं जो फुल टीम नहीं है, तो हम उनसे बहुत अच्छे हैं। ये अब इस वक्त इनका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए। लेकिन जलालुद्दीन साहब, आपने बाबर आजम की बात की, चलें मैं बाबर आजम से ही शुरुआत कर लेता हूं। बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज, हमने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की हैं, और वो कह रहे हैं कि जी मैं हमेशा कप्तान नहीं रहूंगा, मुझे एतमाद दिया है चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने। लेकिन अंदर खाने कुछ चल रहा है, और वाज़ेह तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि बाबर आजम भी दबाव महसूस कर रहे हैं। आप क्वालिफाइड कोच हैं, आप ड्रेसिंग रूम में रहे हैं, आप सिलेक्शन कमेटी का मेंबर रहे हैं, आपने खुद क्रिकेट खेली है, इत्तेफाक करेंगे इन बातों से? देखिए, एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इस वक्त ये जो कैप्टनसी की कंट्रोवर्सी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी बाबर सीरीज टू सीरीज कैप्टन होंगे, यही वो चीजें हैं जिससे टीम में अनसर्टेनिटी होती है। अगर उन्हें आपने किसी एक फॉर्मेट से हटाना है तो बैठ के क्लियर कट बात करें और हटा दें। ये जो जिसे कहते हैं ना अनसर्टेनिटी, वो नहीं रहनी चाहिए कैप्टनसी में। और इस वक्त जब बाबर आजम इतने मैचेस में, लेकिन जलालुद्दीन साहब, मुझे तो आपकी गुफ्तगू में भी तसलसल दिखाई नहीं दे रहा, आपकी गुफ्तगू में भी मुझे अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और उनके स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के मामलात को मीट नहीं करते। दूसरी तरफ अगर क्रिकेट बोर्ड उनके बारे में ये सोच रहा है कि उनकी कप्तानी को देखा जाए और सीरीज टू सीरीज उनको वॉच किया जाए, तो फिर आपकी बात मानूं या मैं क्रिकेट बोर्ड की बात मानूं? नहीं, आप गलत डायरेक्शन में चले गए। मैं जो वो स्टैंडर्ड की बात कहता हूं वो परफॉर्मेंस रिलेटेड बात होती है कि उन्होंने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया। सपोज स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं कि ये स्ट्राइक रेट होना चाहिए हमारे ओपनर्स का या हमारे मिडिल ऑर्डर का या लास्ट में जो खेलते हैं, या बॉलिंग के जो स्ट्राइक रेट्स हो सकते हैं वो होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो मोहतरम यही चीज तो यही क्योंकि वो एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, वो एज ए बैट्समैन नहीं खेल रहे ना, वो टीम के कप्तान है। और जब स्ट्राइक रेट डिस्टर्ब होता है, जब कारकर्दगी जो है वो उस तरह नहीं रहती उस लेवल की, तो असरात टीम की कामयाबी और नाकामी पर मुरतब होते हैं। और यही चीज क्रिकेट बोर्ड देखना चाहता है। मैं वही कह रहा हूं, क्रिकेट बोर्ड अगर वो जो भी देखना चाह रहा है ना, उसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। मैं ये बात कह रहा हूं। मैं आप कह रहे हैं अगर हटाना है तो हटा दें। हाँ, मतलब देखें टीम किस तरह सक्सेसफुल होती है जब एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, अनसर्टेनिटी नहीं हो, हद क्लैरिटी हो चीजों में, उससे टीम परफॉर्मेंस करती है। वो एक बड़ा रोल प्ले करती है परफॉर्मेंस में टीम के। तो अगर आप बाबर आजम को समझते हैं कि किसी एक फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट जो भी बोर्ड समझ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें हर हाल में 3 फॉर्मेट में ही रखना है, मगर ये जरूर कह रहा हूं कि अगर उनको किसी फॉर्मेट से हटाना है तो उनके साथ बैठ के क्लियर करके उस बात को क्लियर करें। सीरीज टू सीरीज वाला जो है ना, वो एलिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, टीम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर उन्हें किसी बात से हटाना है, किसी फॉर्मेट से हटाना है, तो उनको बता के और उनको हटा दिया जाए। प्लस ये कि जो उनसे अगर डिस्कशन करना है तो जरूर डिस्कशन कर लें, क्योंकि अब ऑलरेडी वो एक जिस वक्त उनको लाया गया था, मैं उस वक्त से ये कह रहा था कि उनको गलत लाया गया कि उस वक्त उस काम के लिए अहल नहीं थे। मगर अब जब इतना एक्सपीरियंस कर लिया, एकदम हटा देना सारे फॉर्मेट से वो गलत होगा। और नया अभी हमारे पास कोई ऐसा डेवलप हुआ हमें तो नजर नहीं आ रहा
कि कौन सा ऐसा कप्तान होगा जो बहुत अच्छी कप्तानी कर लेगा, लीडरशिप क्वालिटी होंगी। तो हमें अपना टीम का सोचना है कि टीम कैसे बेहतर परफॉर्म। जलालुद्दीन साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट को ज्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं और यहाँ जो फैसले होते हैं वो मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर तो नहीं होते। यहाँ पर जो फैसले होते हैं, हाँ, तो वो उससे देखें, वो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, और अब भी ऐसे ही होगा। बात यह कि उससे होता है कि अल्टीमेटली क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। आप पूरे मुल्क में भी यही हो रहा है, हो क्या रहा है, नुकसान आवाम को पहुंच रहा है, आपस की लड़ाइयां हो रही हैं और वो सारा कुछ नुकसान इसी तरह है। यहाँ पे अगर कुछ होगा तो बाबर आजम की सेहत पे कुछ शायद फर्क न पड़े, कप्तान हट भी जाए तो, मगर नुकसान क्रिकेट को होगा। या बोर्ड के डिसीजन अगर अच्छे होंगे तो होगा। अच्छे उसी वक्त होते हैं जब आप क्लैरिटी रखें और कॉन्फिडेंस में ले प्लेयरों को। अच्छा, मैं जरा क्रिकेट से हट के बात कर लूं। आपने बोला कि फैसले जो होते हैं उससे नुकसान होता है, अवाम भी जो है वो उसमें पिस रहे हैं। तो ये जो आपने अमेरिका जाने का फैसला किया है, बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपने फैसला किया है या आप जो है वो अमेरिकन शहरी बनना चाहते थे? देखिए, मेरे पास तो दोनों अपॉर्चुनिटी थी, उसको अवेल किया है, क्योंकि मुझे यूएस गवर्नमेंट ने ग्रीन कार्ड दिया था ऑन द बेसिस ऑफ माय कोचिंग एबिलिटी। तो वो एक मौका था, क्योंकि बीच में मैं जब 2015 में मिला था तो मैं पाकिस्तान में काफी बिजी था और फिर बच्चे यहाँ आ गए थे, बच्चों ने यहाँ पढ़ा है। तो अब सारे मेरे 3 बच्चे तीनों यही हैं और बीवी और मैं साथ रहते हैं। बच्चे अपनी पढ़ने के बाद जॉब्स कर रहे हैं, तो दोनों मेरे पास तो ऑप्शन है। अब बेहतर मुस्तकबिल इससे ज्यादा क्या होगा, मैं तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मुस्तकबिल, या जो प्रेजेंट था वो अच्छा था, उसमें तो अब आने का यहाँ कोई फायदा नहीं इतना लेट। मगर हाँ, यहाँ मैं आके अपनी जो क्रिकेट एबिलिटी है उसको यूटिलाइज करना चाहता था न्यू उस पे, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं। आप मेरे साथ रहेंगे, आपसे मैं मजीद गुफ्तगू करूंगा, लेकिन यहाँ पर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट और रोजनामा जंग कराची के सहाफी अब्दुल माजिद भट्टी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। माजिद भट्टी साहब, क्या इत्तलात हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में? बाबर आजम कह रहे हैं मैं रिजवान के साथ इनिंग का आगाज करूंगा, नंबर 3 पर फखर खेलेंगे, तो साइम अयूब हैं कहीं या नहीं है? या मुझे तो साइम अयूब नजर नहीं आ रहे, क्योंकि साइम अयूब अगर खेल रहे हैं तो फिर उनको इनिंग भी ओपन करना थी। लेकिन जिस तरह बाबर आजम कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट वही कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का खेलेगा जो हमने T20 वर्ल्ड कप में अक्टूबर में जब आखिरी बार बाबर आजम ने पाकिस्तान को T20 में रिप्रेजेंट किया था। लेकिन अब एक स्लॉट ऐसी है बीच में जिसमें मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। वो स्लॉट होगी मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम के दरमियान। इमाद वसीम अभी रिसेंटली बैटिंग में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है जो अफगानिस्तान की सीरीज थी। मोहम्मद नवाज स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि फास्ट बॉलिंग में तो नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ये हमें नजर आ रहे हैं। तो साइम अयूब मुझे तो कल के 11 में नजर नहीं आ रहे। चलो, मैं यही सवाल जलालुद्दीन साहब के सामने रख देता हूं। जलालुद्दीन साहब, माजिद भट्टी साहब ने कहा कि क्योंकि सीनियर खिलाड़ी खेलेंगे टॉप 3 में, बाबर, रिजवान एंड फखर, तो फिर साइम अयूब की जगह कहां बनेगी। लेकिन जो सवाल इन्होंने इस वक्त उठाया है वो ये कि जो इस वक्त अहम कंपटीशन है और बाबर आजम ने जिसका फैसला करना है कि वो इमाद के साथ जाते हैं या नवाज के साथ जाते हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा पिछले 15 महीने में कि नवाजी थे टीम में, इमाद तो थे ही नहीं टीम में, और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में शदाब कप्तान थे। आपको क्या लगता है, बाबर आजम इमाद के साथ जाएंगे या नवाज के? अच्छा, पहले तो एक बात और कहता चलूं कि जो भी हमने पहले शुरू में ये कहा था कि अब हमें देखना नया क्या है। मैं ये कहता, काफी चीजें चेंज हुई है, कोचिंग सेटअप भी चेंज हुआ है, ये वो, तो उसमें नया क्या होगा ये हमें देखना है अभी। बहरहाल मैं अपने एक एक्सपीरियंस को देखते हुए और जो न्यू सेटअप है मैनेजमेंट साइड से, नॉट क्रिकेट मैनेजमेंट, आउटसाइड पीसीबी की बात कर रहा हूँ, उसमें देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमाद वसीम जो है वो टीम का हिस्सा प्लेइंग 11 का रहेंगे। अच्छा, ठीक है, तो आपने भी अपना वोट जो है वो इमाद वसीम के पल्लड़ में डाल दिया। माजिद भट्टी साहब, और क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो गुफ्तगू हो रही थी, बाबर आजम से ज्यादा सवालात का महवर भी उनकी कप्तानी, उनके मुस्तकबिल के हवाले से रहा। तो ये सीरीज आपको लग रहा है कि जिस तरह नजम अजीज सेठी साहब ने जो है वो ज्यादातर बाबर आजम की कप्तानी को डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ सेक्टर से, मुख्तलिफ जो है वो हलकों से बाबर आजम की कप्तानी, उनके खेलने के अंदाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, तो हम भी यही चीज देख रहे हैं, इसलिए हम सीरीज टू सीरीज जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहे हैं बाबर आजम के साथ। देखिए, यही लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास
मुस्तकिल हेड कोच नहीं था। अब मिकी आर्थर जो हैं वो कंसल्टेंट के रूप में आ रहे हैं। उन्होंने पीछे बैठकर जो अपना फ्रंट मैन रखा हुआ है, जो इंग्लैंड जी ग्रैंड ब्रैडबर्न, वो मेरे ख्याल में सामने बैठकर शॉट्स खेलेंगे। लेकिन जितनी मैंने बाबर आजम की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और नजमुद्दीन सेठी साहब की जो पूरे एतमाद लगे बाबर आजम आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल पूरा एतमाद नहीं लगे, क्योंकि जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि मुझे कप्तानी की फिक्र नहीं है, तो ये बंदा उसी वक्त कहता है कि जब उसको कप्तानी की फिक्र होती है। तो मुझे लग रहा है कि मिकी आर्थर की इस नए सेटअप में एटलीस्ट व्हाइट बॉल फॉर्मेट में मुझे बाबर आजम जो है वो कप्तानी करते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन मैं जलाल भाई जो बात कर रहे हैं, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं कि अगर हमने अपने इस सेट टीम को छेड़ दिया, एक कप्तान को हमने छेड़ दिया, फिर बाबर आजम कप्तान तो हैं लेकिन दुनिया के टॉप के बैट्समैन है। अगर हमने अपने नंबर 1 बैट्समैन को गिराने की कोशिश की, फिर ऐसा ना हो कि टीम का शिराजा बिखर जाए और टीम जो है वो लड़के कप्तानी के चक्कर में ग्रुपिंग का शिकार ना हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री ये भी पास में बताती है कि जब भी कप्तानी की कोई छेड़छाड़ की गई, लड़के आप देखें 2-2, 4-4 के ग्रुप में अंदर से टूट का शिकार हो गए। अब मिकी आर्थर का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जब वो साउथ अफ्रीका के कोच बने, उन्होंने ग्रैम स्मिथ पे बहुत ज्यादा रिलाई किया। ऑस्ट्रेलिया में गए, वहां भी मसाइल बहुत ज्यादा थे। जब पाकिस्तान के हेड कोच पिछले दौर में बने, उन्होंने एकदम से सरफराज अहमद को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया। तो मिकी आर्थर अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अब बाबर आजम मुस्तकबिल में मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सेठी साहब ने भी 2 दिन पहले जो एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था, उनके ट्वीट से यही लग रहा है कि बाबर आजम की कप्तानी उनकी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस से मशरूत है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा साइन नहीं है कि हम अपने कप्तान को भी छेड़ रहे हैं और अपने नंबर 1 बैट्समैन को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो जलालुद्दीन साहब, इस सारे सिनेरियो में जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में कहा कि गो एंड किल वाली पॉलिसी होनी चाहिए और हमारे पास एक बेहतरीन टीम है, न्यूजीलैंड कुछ नए खिलाड़ियों के साथ आ रही है, तो लगना चाहिए यहां पर कि हम अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस में फर्क नजर आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो सब चीजें कैसे होंगी? देखिए, जो कामयाबी है वो एक तो गारंटीड नहीं होती, दूसरे ये कि कैसे होती है कामयाबी, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने होते हैं और आपको उसके साथ साथ बिलीफ भी होना चाहिए अपने पे। और ये सारी चीजें उस तरह से डेवलप होती है टीम में जब आपकी हमआहंगी पाई जाती हो टीम मैनेजमेंट, प्लेयर में और कप्तान में। तो ये अगर चीजें डिस्टर्ब होंगी, चाहे वो कप्तानी के हवाले से हो या टीम मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है वो अलग हो और कप्तान उससे मैच ना कर रहा हो, तो फिर आपको चाहे वो छोटी टीम भी हो तो उसको हराना मुश्किल हो जाता है। तो बज़ाहिर चीजें सही है। अच्छा, एक तो बात है मैं जरूर यहाँ बाबर आजम या जो भी ओपनिंग सेटअप है उसके हिसाब से कहूंगा, उन पे चार्ज यही लगा हुआ है ज्यादा। उनकी कोई बैटिंग पे तो किसी को कोई इतराज ही नहीं है, वो तो बहुत क्वालिटी बैट्समैन समझे जाते हैं या रिजवान उनके साथ खेलते हैं। देखिए, स्ट्राइक रेट की शायद बात अक्सर बाबर आजम और ओपनिंग प्लेयर के साथ होती है। या बाबर आजम को भी ये चाहिए कि देखें, ये कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है ना। अगर आप कह रहे हैं जी मैं तो 120 से खेलूंगा और लोग चाहते हैं कि आप 130 से खेलें, तो उनमें थोड़ा सा ये वाला एलिमेंट को डेवलप करना है, यानी थोड़ा रिस्क फैक्टर को बढ़ाना। और ये कोई इतने बड़ा काम नहीं है, वो एक क्वालिटी प्लेयर है। ऐसा लग रहा है कोई ईगो का इशू बना हुआ है ओपनर्स में कि नहीं हम तो ऐसे ही खेलेंगे जैसे खेलते हैं, तो ये अप्रोच भी गलत है। दूसरे, वो इस काबिल है, इतना उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि वो अपने स्ट्राइक रेट को आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये इशू नहीं है, इस इशू को बहुत आसानी से सेटल किया जैसे है। दूसरे, शायद एक और जो मैं मीडिया और इसके थ्रू और बॉडी लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग के थ्रू देखा समझा है, उसमें यही है कि कुछ जगह शायद बाबर आजम बहुत ज्यादा स्टैंड ले लेते हैं कुछ प्लेयरों के लिए। तो ये इस चीज को भी बैठ के अच्छी तरह से डिस्कस करके और बाय लॉजिकल कन्विंस करके किया जा सकता है। ये टीम मैनेजमेंट का काम है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अनहोनी है कि हो नहीं सकती। अगर बाबर आजम किसी में स्टैंड बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसके पीछे उन्हें कोई ग्राउंड, उसके पीछे कोई लॉजिक देनी होगी। उसको अगर काउंटर कर सकता है टीम मैनेजमेंट तो करे, क्योंकि मिल के चलना है। अब अगर खाली बाबर आजम अपनी करते रहेंगे तो वो भी गलत है
और फिर यही वाले इश्यू पैदा होते हैं जब ज्यादा आप डिक्टेटरशिप पे आ जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से ये बातें शुरू हो जाती हैं कि इन्हें हटाया जाए। मेरे ख्याल से कि इस वक्त बैठ के बात करने की ज्यादा जरूरत है और कन्वेंस करने की जरूरत है एक दूसरे को। खाली एक दूसरे पे अपनी जिसे कहते हैं राय को उस पर अप्लाई नहीं करने की जरूरत है, बल्कि डिस्कस करके चीजों को करना चाहिए। और यही एक अच्छी टीम, अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी पीसीबी की मैनेजमेंट का तरीकेकार होना चाहिए, जिससे कि टीम स्मूथली चले। और ये सब चीजें अगर होंगी तो मैं समझता हूं कि टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। और अगर नहीं ये चीजें हैं और डिस्प्यूट है और एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, तो आप देखिएगा इस टीम को भी हराना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे विकेटों का यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो हमने पिछले सीरीज में देखा विकेटों का हमेशा से वो रहा। अब ये तो खैर शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट है, इसमें तो विकेट अच्छी बननी चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटी मिले बैट्समैन बॉलर को, दोनों को अपना जो भी उनकी एबिलिटी है उसको शो करने की। तो ये अननेसेसरी कंफ्यूजन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर इनमें ये एबिलिटी है। कप्तान में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट को कन्विंस करना आना चाहिए, तो मैं समझता हूँ मसले हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जलालुद्दीन साहब, अमेरिका से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मार्का आज कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे 8:30 पर इस टेस्ट मैच, इस T20 मैच का टॉस। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात हम कराएंगे पाकिस्तान के होनहार, बासलाहियत, उभरते हुए क्रिकेटर से। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप, पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी, 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब, मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे, जीत के जियो। मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस है, आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा, कि इस प्राइड को जो डैमेज करे उसको दोबारा ये प्राइड नहीं मिलनी चाहिए। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। प्रेशर कितना था आपके ऊपर जब ये रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आई और आपने रिपोर्ट देखी होगी, तो आप पे फोन तो आए होंगे आपके पास कि ना करें जनरल साहब? कभी नहीं जनरल साहब, कभी नहीं। आपको कोई पसंदीदा प्लेयर था? कभी नहीं। यार बड़ा अफसोस हुआ। आप कभी नहीं। हमने पास्ट में कोई एग्जाम्पल सेट की ही नहीं है। जो मैं बात हमेशा से करता रहा हूँ कि हमने पास्ट में पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, हमने कोई एग्जाम्पल ही सेट नहीं की, तो ये चीजें होती रहेंगी। दिल कितनी बार टूटा अब तो मैंने शायद वो काउंट करना मुश्किल होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब अनाउंस हुआ और नाम नहीं है था, तो फिर तो जाहिर बात है हर बंदा डिसअपॉइंट होता है, चाहे मैं हो कोई भी हो। जब वो उम्मीद रखता है और वो पूरा नहीं होता, तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप, पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी, 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब, मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे, जीत के जियो।
इमरान खान ने 175 वनडे मैचेस की 142 इनिंग्स में 26.61 की औसत से 182 विकेटें हासिल की, जिसमें 3 बार इनिंग्स में 4 विकेट और 1 बार मैच में 5 विकेटें हासिल करने का एजाज शामिल है। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे जीत के जियो। 1982 में श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान, नेशनल स्टेडियम कराची, पहला एक रोजा मैच। पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। श्रीलंकन टीम के मुकर्रर करदा 40 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 171 रन। कप्तान बंदूला वारनापुरा 77 रन के साथ नुमाया स्कोरर। पाकिस्तान की जानिब से ताहिर नक्काश, इकबाल कासिम और जलालुद्दीन की एक विकेट। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 29.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। मोहसिन हसन खान की 85 रन की शानदार इनिंग्स। श्रीलंका के रवि रत्नायके की 1 विकेट। पाकिस्तान ने ये मैच 8 विकेटों से जीत लिया। ये नेशनल स्टेडियम कराची में एक रोजा मैचों की तारीख में पाकिस्तान की पहली फतह थी। आठवां कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट मोइन खान अकेडमी DH कराची में मुनक्किद हो रहा है और ये मुकाबले आप पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त देख रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में उमर एसोसिएट की इनिंग का आगाज 2 नौजवान क्रिकेटर ख्वाजा मोहम्मद नाफे और अम्माद आलम कर रहे हैं। और जिस अंदाज में ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनके ताबनाक मुस्तकबिल के बारे में हम किसी जो है वो तमीद के बगैर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में सलाहियत की कमी नहीं है। और यही वजह है कि आज हमने इन दोनों बासलाहियत क्रिकेटर्स को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। ख्वाजा मोहम्मद नाफे और उनके साथ अम्माद आलम, आप दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। और सबसे पहले मैं आ जाऊँगा आपकी तरफ। ख्वाजा मोहम्मद नाफे साहब, माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा खेले हैं और जिस अंदाज में आप बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी आपकी माशाल्लाह तारीफ हो रही है और आपने अपनी बैटिंग से ये साबित भी किया है। जी नाफे जी बस यही है कि मेहनत करते और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा खेला। अच्छा जी, तो कितने अरसे से आप खेल रहे हैं? 8 साल हो गए मेरे। 8 साल, और यहाँ तक आपका सफर 8 साल में कंप्लीट हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अमाद, आप अंडर 19 लेवल पर भी खेले हैं और आप इनके साथ इनिंग का आगाज करते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका उमर एसोसिएट से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और जिस तरह से सब सपोर्ट करते हैं सारे सीनियर प्लेयर्स और आजम भाई और उमर भाई, नदीम उमर सर, और अच्छा लगता है और काफ़ी सीखने को मिलता है इन लोगों से। अच्छा ख्वाजा, आपकी टीम में खुर्रम भी खेल रहे हैं, असद शफीक भी खेल रहे हैं, सुहेल खान हैं, अनवर अली, और लास्ट मैच में तो दानिश अजीज भी आपकी टीम के लिए खेले। आजम खान पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट खेले हैं। बैनुल अक़वामी सतह के टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ खेलने का तजुर्बा कैसा रहा? जी माशाल्लाह अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं तो उनसे काफ़ी सीखने को मिलता है। जैसे खुर्रम भाई है, वो बैटिंग में होते काफ़ी समझाते मुझे बैटिंग में,
और आजम खान, अनवर अली, सोहेल खान, काफ़ी उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने को मिलता, मज़ा आता। तो अमाद ये बताइए कि आप भी बड़े जानियाना अंदाज में बैटिंग करते हैं और ख्वाजा भी बड़े जानियाना अंदाज में बैटिंग करते हैं, तो रेस तो नहीं लगी रहती कि मैं ज्यादा जल्दी रन कर लूं या जो है वो इनसे ज्यादा तेज खेलूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि हम दोनों बात करते रहते हैं पिच पे भी कि एक दूसरे को सपोर्ट करके और कंडीशन के हिसाब से खेलें। तो स्टूडियो में तो हमारे साथ ये दो बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं और आप इनकी गुफ्तगू पर ना जाइए क्योंकि ये दोनों का पहला इंटरव्यू है, लेकिन बैटिंग की अगर आप इनकी बात करें तो आप अभी इनके क्लिप्स भी देखेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये नन्हे पौधे हैं जो कल तनावर दरख्त बनेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन इनकी आबियारी कौन कर रहा है? कराची में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के होनहार बासलाहियत खिलाड़ियों के कंधों पर हाथ रखना, उनको आगे बढ़ाना, ये काम बहुत अच्छे अंदाज में नदीम उमर साहब कर रहे हैं जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के चेयरमैन हैं, उमर एसोसिएट के रूहें रवा हैं और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब को भी चलाते हैं। खुशामदीद कहेंगे नदीम उमर साहब आपको। और सबसे पहले तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे ढूंढ के लेकर आ जाते हैं आप ये सितारे जो फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं? पहले तो यही है भाई, थैंक यू आपका बुलाने का और ये लाइन पे लेने का, और आपको सलाम, अम्माद, आलम, इनको, ख्वाजा नाफे, सबको बहुत सलाम। और आई थिंक ये टीम वर्क है। आपको पता है जैसे आजम खान हमारे साथ हैं बहुत अरसे से, और हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब है ये आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब, इसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ पिछले 17, 18, 20 साल से। तो ये एक आई थिंक टीम वर्क है, जिस तरह ये पूरी एक स्काउटिंग होती है, नबीन लगे रहते हैं, अच्छे प्लेयर्स हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान से, बट मेनली कराची के प्लेयर्स हमारे साथ ज्यादा खेलते हैं। तो ये अम्माद, ख्वाजा, नाफे दोनों आई थिंक यही 2-3 साल से आए, बड़े हुए, और फिर जैसा भी इन्होंने जिक्र भी किया, आपने भी कहा, तो जब ये बड़े स्टेज पे जाके खेलते हैं ना, टेलीविजन पे खेलते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस एक और लेवल पे होता है। और जैसे आपने कहा छोटे में पहचान हो जाती है कि इनमें पोटेंशियल तो बहुत है। ये सिर्फ